Hello and welcome, hello and welcome, hello and welcome. We are back. And we are back with the second day of the test match between Australia and South Africa. This is a humdinger of a match, but David Warner is quite sure of making this a memorable one because it is his 100th test match. And I'm not sure what is in his mind, but the pitch looks deadly flat. When I call it deadly flat, you must understand there's a lot of runs in it. And when there are a lot of runs in the pitch, it's very difficult to get the batsman out. And as we could see from the partnership of Marco Jansen and who was the other player, Kyle Viren, that this pitch does not have a lot for the bowlers except for the bounce that it offers. Other than that, I think it's completely in favor of the batsman. And today is a very good day to bat. It's a very good day to bat. When you come out today, there's sun shining and there's of course audience all around you. It's the Boxing Day Test match, and yesterday was the Boxing Day. Cameron Green would never forget it because he has taken 5 wickets on the Boxing Day Test match. It's first day, and Kagiso Rabada runs in, bowls it towards the legs of David Warner, a single taken quite easily. No, they're taking doubles. My God, Manas Labuschagne and Warner. Do you call him Manas Labuschagne or Manas Labuschagne? It's something that is on your own discretion, but I have tried calling him several names. Maybe the run machine would be the perfect one because he scored 200-300 in as many test matches as this season. I hope Manas Labuschagne has some bit of respite left for this South African attack, although Kagiso Rabada, Henrik Nokia and the others would try definitely to push him down. Warner is playing on 41 and on 9 is Manas Labuschagne, and 41 aggressive runs, He hasn't really stopped because it is his 100th test. He wants to show the entire crowd at the MCG and everybody else watching around the world, including us. We are awake here at 5 a.m. in the morning, and of course there's some bit of sleep in my eyes, but that's only possible because I've not had a long night last night. So yeah, okay. This is the first delivery of Henrik Nokia to Manas Labuschagne, and that's outside the off stump. There's nothing really that he can do to this delivery, and it's left alone. And everybody, hello, and welcome. We are here for the second day's play, and we'll soon bring you the scorecard. And on the scorecard, you would have everything visible that we can possibly show. Of course, there are other things that we need to hide, but scorecard is something that we would definitely try and show again and again. And that's another good delivery by Henrik Nokia. He has left it again. So basically the plan is to tire down the bowling, and in tiring the bowling you must understand that the bowlers and the batsmen have a cat and mouse game where both of them are trying to just push in as much effort as possible, but that does not necessarily mean that the other team would not really pull in with other plans. So this is the second day of the test match, and just 100 runs, 189 runs were scored on the first day by South Africa, which was a dismal performance after being bowled out cheaply in the first match. In both innings, they had a horrible time batting here. First innings as well, although the pitch had nothing really on offer except bounce. Bounce that can be very well extracted by bowlers of South African team as well. They have 4 top line bowlers, including Rabada, Jansen, and there is the case of having somebody like Ngidi and Nokia at your disposal who bowl at brisk pace. Henrik Nokia coming in with the 4th delivery of this over. This is his second over. He has already clocked 150 kilometers per hour, and what a ball once again. It's at 151 kilometers per hour. He is joining on the pace, and there is something that is very possible here, and that is a collapse. A collapse is never far away in Test cricket, And what I generally feel is that we must try and see how the new team is playing. And we have the scorecard right in front of you. The scorecard reads 59 for 1 in 14.4 overs, and it is completely visible to you as I can see. So a very happy Tuesday to all of you. If there is anything happy about it, oh, wonderfully bowled right at the stumps, and Manas Labuschagne can do nothing about it. And we are so hopeful of having you around for the longest of time. If you can stick around with us. Pyolata is here. Bhai, neend nahi aa raha hai kya?
नहीं यार, I just started doing English commentary because there were not a lot of takers for English commentary initially, so I started doing English commentary. If you are here and watching us, I'm glad. And if you want to hear some of the English commentary that I am here to do, you're most welcome, Priyalata. I hope you have a good day. And yes यार, नींद नहीं आ रहा है because जब आपके सपने बड़े हों तो सोना थोड़ा मुमकिन कम लगता है. So if your dreams are big, you don't want to sleep, and that's been flicked away towards mid wicket for a couple of runs. No, there would be 3 because the boundaries here at MCG, Melbourne Cricket Ground, are so huge. On the either side of the wicket, leg side and offside, there are 70-75 meters of boundaries. And there is Nixus and Priyalata in the chat. I'm so happy we have 3 people here and the chat. And if you are watching us too, a very happy Tuesday to all of you. So yesterday was a very good day of Test cricket. We had Australia and South Africa from early morning. We were here from 5 a.m. and we saw some good innings there from Kyle Varane and Marco Jansen, who came in at number 7 and stroked a 50. It was a very fluent 50. He was actually intimidated initially. He was bowled bouncers and he was bowled yorkers. And then, you know, the pacers realized that, okay, this man is something else. We did not really feel that he would know so much about batting, but Marco Jansen does know a lot about batting. And Priyalata says, good morning, bhai. Sapne mein sapna hi dekh raha tha. Nice. This was a good line. And Priyalata comes from West Bengal, and we are both quite good friends. And Nixus is right here. And this is the 3rd over of the day, and Rabada would bowl to Manas Labuschagne. It's very rare that on days Test cricket is not played on weekends, but on weekdays there is a crowd of to the capacity of 35,000, and at MCG right now there are 35,000 people watching, and we only have 3 people watching us, but that is not a disappointment because it's too early to say. So guard is being taken by Manus Labuschagne, and first of all, clear me, what do I say? Is it Labuschagne? It is Labuschagne? It is Labuschagne? What is it? Labuschagne? And that's been flicked away towards mid wicket. 1 run taken quite easily. So everybody joining us, I am really happy that you are here. And for the people who are not here, please be here because it is a long day of Test cricket. We'll be covering this match, and we'll also be covering the match between Pakistan and New Zealand. So I think we have no rest for the next 10 hours because, no, rather 11 hours. For the next 11 hours, we have no rest. So we'll try and bring to you as much of the game as possible. But your company is more solicited if you can come here and if you can possibly speak with us and talk with us. We will also be launching a poll. The poll will be, will Warner get 100 in his 100th Test match? This is Warner's 100th Test match. It is a huge, big achievement. And now we are looking at, oh, what a shot. It was a shot of Woodland delivery and he pulled it towards the square leg region. 1 run taken by David Warner. He is reaching 42. Do you think he will get to a position where he can score 100 in his 100th Test match? Only a few people have done this before, and if David Warner can do it, I think there is nothing like it. I think then we'll have to sit and applaud this man who has played all sorts of cricket, because he began with T20 without even representing his state in Australia, and he made his T20 debut against South Africa at this very ground, and he smacked Dale Steyn, and he smacked Morne Morkel, and he smacked Vernon Philander. So there's so much that this man has done over the course of last 12-13 years, and that's well bowled outside the off stump. There's nothing that Manas Labuschagne would like to do with it. He could have done a lot with it, but he does not want to do a lot with it. 64 for 1 is the score, and Priyalata is saying I am supposed to comment in English live chat section as this is an English commentary. No, nothing necessary, because I can read both English and Hindi, so you can comment in any language of your comfort, Priyalata. And if you can do that in English while you are in some sort of sleep, I think it says a lot about your English ability. I think you are very well spoken in that language also. Hello and welcome, good morning to everybody. We are here telling you the score and the commentary of this match. Here Australia is feeling quite comfortable because it's a good day of batting. The pitch has eased up, it does not have as much pace as it did yesterday, and the sun is shining bright and happy on the Australian cricket team. David Warner is playing his 100th Test match, and I'm not sure if he's looking for 100 or 150 or a 200, but he's definitely not going to settle down for less. And that's a good delivery, and that's been pushed on the leg side. Something that you would regularly see the Australians do is take quick singles.
they would never ever miss a quick single like this one. This was tucked on the left side, and the batsman ran for his life, and the batsman ran and ran but did not really stop. This is something quite commendable. This is something that all of us know, that Australians do not leave singles. And Manas Labuschagne, David Warner are two very, very fit gentlemen. They would never ever leave a single. So singles are the atoms of cricket. You keep building on strike rates, you can keep building on the score, but singles are very, very important. And again, that's been tucked towards the leg side. David Warner is running quickly, but the fielder there is Marco Jansen, who pulls in and throws right at the stumps. Only one taken here. So all of you, a very good morning to all of you. I hope you are enjoying the English commentary stream that we are trying to do. I hope we are the first people who are doing this in India because most of the people are commentating in Hindi and of course asleep at this point of time, but we are awake and we want to run past them in terms of our commentary gigs, and we want to run past them in terms of the quality that we are supposed to serve you. So if that is possible, well and good, and if you are with us, I'm very, very happy if that is possible. So I think South Africa have lagged behind around 100 runs. They should have got to 280, 90, but if they did not, then it's a problem, and I think they should have looked forward to more runs, because this is a pitch where there are ample of runs available, and if they could have really stroked around 260, 70, things that have been better. They were kind of in a position where Marco Jansen was batting alongside Kyle Varane, that they could have really pushed to 250, 60, but somehow they could not, and that's a problem that has stayed with them for a long time. So I think they should have been far more aggressive, they should have been far more upfront if they wanted to really make a change, but they did not. So basically I am looking at a score of slightly better than what South Africa scored here. South Africa did not really push in a lot of scores, so we are quite disappointed with what they are doing for now. But there is something that I would want to tell you, and that is that we are here for the entirety of this innings and the test match, and apart from that we'll be here for the Pakistan test match as well. The Pakistan New Zealand test match that has begun yesterday, we'll be here for that one as well, and I'd be happy to be around you. And this is a wonderful ball once again. It just left David Warner, who was again quick to take a single. Hello and welcome everybody. We are back with the second day of test cricket between South Africa and Australia, and that's beautifully driven towards the cover boundary, and David Warner is running for his life as it seems, and this has been beautifully timed, yet it does not reach the boundary. That's the beauty of Australian cricket. They were almost taking four, but South Africans just, spare themselves the embarrassment and save one eventually. The score reads here 69. 69 means they are only 120 runs away from what South Africa scored, and 120 runs away, it's not really far. And I hope all of you are getting up quickly. I hope all of you are enjoying your winter vacations, if there is some winter holidays available for you, and I hope everybody gets those winter holidays, because we love winters, don't we? Because of the laziness, because of the slowness it brings, because of the love in the air, and because of the affection and care people generally show during winters. I don't know why, but this is how it is, and this is something that I thoroughly enjoy, because the people are far more warm, the people are far more understanding and quiet. Nicely bowled once again, back of length delivery straight to the body of Manas Labuschagne, and Henrik Nokia is trying to push in the pace. He has already clocked 151 kilometers per hour in the only 8 balls that he has bowled till now, and David Warner is stroking the balls pretty nicely, and he has just resumed from where he left last night. So I just believe David Warner is looking for a big one in his 100th test. 100 test matches is no mean streak. There is something extraordinary about an individual who goes on to play 100 test matches, because they are basically trying to show the kind of consistency, the fitness that they have. And this is another delivery which has been left alone by Manas Labuschagne, and Prilata is asking, bro, what happened with Ramiz Raja? I heard he had been kicked out by PCB. Yes, he has been kicked out by PCB. And I think Pakistan generally has those kind of decisions, anybody is brought in, anybody is brought out, and public really, demands
certain things, and politics is involved massively in their board. So much so that even Indian board has a lot of politics. Saurav Ganguly did not want to leave the presidency, and Jay Shah out of nowhere is the secretary of BCCI. We all know where has he come from, but we cannot really comment on that. So, oh, what a ball! What a ball! What a ball. Can you do a 100 in a 100th test match, Nexus? It will be far more attractive. And hello and welcome to everybody who's watching us. And we would want to promote more English commentary when India, Pakistan or Bangladesh are not playing. So that is why we have woken up quite early in the morning. It's 5 a.m. in India right now, 5:25, although we had begun at 5 a.m. And would like to have more company because this match is a long test match. Test matches are generally long, 5 days, 15 sessions and almost 32, 33 hours of play. And even then there is sometimes no winner. Wonderfully bowled once again, back of a good length, and Manos Labuschagne is quick to pounce on it and does nothing to it, just defends it. Manos Labuschagne is a slow starter. Sometimes you would see him play around 50-55 balls for 10, 15, 20 runs, and then he will suddenly pick up. Because he's very good against the spinners, he can play the sweep, he can play the cut, and he can also dance down the track. He's somebody who would really want in your team because he's very, very consistent. Recently he scored 300s against the West Indies, which is no mean streak, because West Indies also has a good bowling attack. There is somebody called Kemar Roach and then Jason Holder and Azari Joseph. All of them are able to crank good pace and hold good areas, but they were blanked by the Aussies last month, and England blanked Pakistan last month as well, and India and Bangladesh had a good test series. The last day was a humdinger. No, it was not the last day, but the fourth day. But watch Shreyas Iyer and Ashwin bat, and you know how good test cricket is because it can bring so much emotions into play. And now we have Rabada bringing in his third over, and Rabada has had a good 2 overs but no success yet because the batsmen have played him well, and I believe that is because there is no real movement on the track. The only movement that was there available on this track, I think everything was extracted by Australians yesterday. Even then, I don't think they bowled really well. They were good, but not excellent. I mean, you could have had better bowling. Boland bowled well. Cameron Green bowled well because they bowled in the right areas. I think Mitchell Starc was okay, and Pat Cummins was difficult to get away. You could not really hit him quite easily, and that is why I believe sometimes you really need someone to just push the bowlers out of the mindset of bouncing the batsman. When there is bounce available on the pitch, all the bowlers go for the bounce. But there is something else called movement. When the new ball is available, try and move it, right? Why not swing it? Why not move it? If you can move it off the pitch, move it off the seam, it is excellent. And another single taken here. Slowly and steadily, Australia are moving forward. Rather, they are moving forward quite briskly. This is the 5th over of the day, and in the 5 overs that we have seen till now, batting has been superbly easy. And that is not because they are batting well, it is also because the pitch has eased out. Easing out of the pitch means that, the fielders will have a long day on the field, and all the coaching staff of the bowling team will now be considerably thinking about how to give their players rest, because eventually they would need some. Because this pitch is unrelenting, it is very easy, but this one swung, this ball swung, it just pitched and left Manos Labuschagne and then swung late and went into the hands of the keeper. Kyle Verreynne is manning the stumps for South Africa, and I hope all of you are watching us as much as we are trying to see you. And okay, nobody told me about the media source here, so media source can be really pushed back. And 69 for 1 is the score for Australia right now, and all of you who are watching us, we are really happy that you are around, and that's a good ball once again, a very, very good ball. And after this, we cannot really say that there will be some more bounce or pace on this pitch, because bounce is necessary. Pace, I am not sure. What were you saying? I was spanning our stream. Okay, I was saying that you could write that will Warner score 100 in his 100th test, because that is the more important question. And that's the 4th delivery of the over. Rabada bowls a good one once again, and there is nothing that you can do about it, so he just works it towards the left leg side, and there is a short leg fielder who cannot do much about it. And I mean, if in the morning we are sitting here, we would of course not have a lot of audience, but we have a lot of energy because we have saved a lot of energy, and that is what we are here for.
in the morning. Nicely bowled once again, but this ball has been left for the keeper to take it with both his hands. And I think it's very easy to leave these deliveries. Eventually, South African bowlers will be frustrated. This is the plan by the Australians. Take quick singles and just leave the balls outside the off stump. If they bowl right at the stumps, flick it towards the leg side. That's how you play Test cricket. That's how you become more patient. That's how you enjoy the process. But suddenly, there's one team that is changing all of this, and that is England. They have another style of play. They're very different when it comes to playing, and they have a sense of urgency about their game. They want to move the game forward, they want to push the game forward, and I think that's the new way how you would play Test cricket around the world. But I'm not sure how many teams would be able to do that, because it involves a lot of mental, setup, a lot of mental clarity, a lot of, backing by the team management, that even if you get out, that's nothing so, difficult or impossible. But Warner Will Warner hit a century in his 100th test? Very, very important question. You can always hit the poll button and you can always convince us what you're voting here. And that was a good bouncer. That was a very, very good bouncer. And David Warner wanted to pull it but cannot really control it. And oh, that's hit the helmet and went away for a boundary. So David Warner was really pushed back here. And we have the poll running in front of you. The poll says, will Warner hit a century in his 100th test match? And that was a brutal, good bouncer. Brutally good. You could see that they were searing pace. You could see that Warner was in trouble. And this is what Henrik Nokia can do. He has these two modes of dismissal. Either he would bowl you or he would bowl you a bouncer. Either he hits the stumps or bowl you the bouncer, and where you will get uncomfortable and it will be difficult for you to really move forward. And that is what generally he tries to do. And then I think there is some bit of sledging going on between David Warner and the South African players, and they have a history around them. And I am so unhappy that Faf du Plessis is not playing. Had Faf du Plessis been playing, had Steyn been playing, the tempers would have soared. Things would have been very, very difficult, because both of them are such strict, tough competitors. And if that is something that is to go by, I believe they are massively good. So Warner is getting a checkup by the physios, because it's a rule by the ICC that if anybody gets hits on the head, the next moment the physios will arrive on the ground and he will, actually check if the player is alright. If they feel that the player is okay to continue, he's given the green flag. Otherwise, he's taken back to the dressing room, made to rest. And this is something that is very, very beneficial for cricketers, and I believe for cricket as well, because after the Phil Hughes incident, we really do not want injuries such as these. And there have been additional protective equipment around the helmet so as to make it a far more safe game than it already is, because that ball, if that ball hits you and at that pace, the pace at which Henrik Nokia is low bowling, it will become very difficult to continue. So David Warner is taking his time. Of course, it was a very, very fast delivery, and it was a bouncer aimed at his head. It hit his head. He tried to just knock it on the leg side, but he could not. And that is why physios are out in the middle and they are having a chat with David Warner, who's playing his 100th test. We have asked you a very simple question: will Warner hit a century in his 100th test match? If you think so, if you really believe that that will happen, well and good. If you do not really believe that, I think there is something that you can really do about it, because Warner is not letting go of this opportunity cheaply. He would definitely push for 100, and if that happens, all of us would have lauded this man who has been playing international cricket for the past 13 years without complaints and has had so many outings where he has changed the complexion of the match single-handedly. And he has also played for several leagues around the world. He has played in the CPL, he has played in the PBL, he has played in the PPL, and he has also played in the Canada League. He has also played in the IPL. He has captained Sunrisers Hyderabad, and he has captained them to glory and sometimes taken them to the knockout stages. The Telugu people, the Hyderabadi people absolutely love and adore him, and he has been made some sort of a local star in Hyderabad because of the videos that he keeps posting, which really pester a lot of his fans. But some fans are extremely pampered by the lightheartedness that he shows.
So basically, Warner has a lot of fans in India, and we are just hoping that he's fine now. It's been a long time that the physios have done this with him, and I hope the helmet gets changed, because at 150 kilometers per hour you would need a new helmet if that gets hit on your helmet, because must have had some impact on it and it would have weakened a little. Hello and welcome all of you, and I would want that all of you stay with us for this live stream of the match between Australia and South Africa. Is the first test match, and it's the Boxing Day test match. Today is day 2, and we are here so that you enjoy this journey, because test match is not a single moment of the day, it's a journey. There are 5 days and there are so many moments, and sometimes you just want that things get better over time, but they do not, and sometimes things drastically change, because test match, it gives you a lot of time, and in that amount of time you can definitely move forward. However, I think David Warner has had a good beginning, and there were some edges that could be taken, but those edges fell in gaps, and there has been some loose bowling also, which has enabled David Warner and Manas Labuschagne to play better, and they are definitely scoring more. 74 on the board for the loss of 1 wicket, and David Warner is taking his guard again, he's taking his mark again, and we also have a poll that will Warner hit a century in his 100th test match. I think there is no stopping this man, because I cannot see extreme penetration in this attack on this pitch, because this pitch is very easy for batting. Somehow South Africa could not really continue with the start that they had got. Initially the openers went till 30 without really being in any trouble, and then suddenly there was Cyril Irvie who went after 1, and then suddenly everybody started getting out, except there was one very good partnership between Kyle Verreynne and Marco Jansen, and both of them shared, I think, a 5th or a 6th wicket partnership, wherein they scored around 85-90 runs, which was extremely useful for South Africa. And there's another bouncer. That's what Henrik Nokia will do. Henrik Nokia and David Warner play for the same IPL team. Both of them play for Delhi Capitals, and both of them know their games inside out, at least the T20 games. But the test game is completely different. The patience level, the process, and everything else involved in test cricket is very different. And we must take care of the fact that not all players are from the same breed. Some players are built different, some players mean differently, and David Warner just laughs here, and Henrik Nokia is not going to smile at all, because he's going to pull in a lot of effort to bowl that bouncer. And the other ball comes from, oh, what a ball, again on the outside off stump, and that's a very quick single. The bowler is frustrated. The bowlers hate quick singles being taken by the batsman. Oh, have they taken another one, or is it a run out? My God, Manas Labuschagne wanted to sneak in another run, and that's what happens when you do not really need those extra runs, but you're just trying to make a fool out of the fielding team, and Manas Labuschagne trying to be too quick-minded here. But South Africans were quick in the field, and have they taken a scalp? Have they taken a wicket? I think they have, because Manas Labuschagne is distraught. He's looking at the sky, then he's chewing his gum, but he's not really happy with what has happened. And the ball was thrown to Henrik Nokia, who parried it to the stumps, and that's out. Despite a very big dive that has been put in by Manas Labuschagne, there is nothing much that Henrik Nokia could do with it, and that's out. Brilliant work by the South Africans, and they have actually really made things worse for Australia, because Australians were thinking that this is such an easy pitch to bat on, and I wasn't thinking how would they not get out. And this is one fine way of getting out, gentlemen, and that is to get run out. Nobody really caused it, and he is just very unhappy. Manas Labuschagne has had a fantastic summer, but somehow against South Africa he is run out in the first test match. It's a 3 test match series, and let's look what happened. So it was tapped on the offside, and that was a very quick single taken, and then David Warner ran briskly for the 2, because there was slightly overthrow, and then, my God, Manas Labuschagne did not reach well in time, and it was, I think, David Warner's fault completely. Manas Labuschagne cannot be blamed for this. He was playing well, he scored 14 of 35. I think once he gets to 50 balls, he then starts playing his strokes, so he was just some time away from actually hitting the balls down the ground and towards the other parts of the ground, but somehow this could not happen.
And my god, this was a waste of a wicket. There was some sort of an attempt to take an extra run, and the extra run was avoided and one wicket was taken here. Something that the South Africans were not really expecting, something that happened all of a sudden, and they have actually struck gold. Congratulations, South Africa. My god, this wicket would not have happened unless Australia being Australia trying to sneak one run, one extra run. Why? It has cost you a wicket. I mean, sometimes running between the wickets looks very good, but sometimes it looks absolutely poor and foolish. And this is what it looked like right now. And Steve Smith is out here in the middle. South Africa would have a spring in this step after taking another scalp, another wicket. And hello and welcome everybody who's watching us. I would love to have your company for the entirety of the match. And even if you can join us for some time, we'd be highly grateful. So it was a very quick single taken on the offside, but Manas Labuschagne really ran almost to the keeper while taking that quick single, and then he stopped and ran again because it was an overthrow, and do not run on overthrows. They warned like 100 years ago. So why to run on that? And David Warner is actually trying to console Manas Labuschagne after he got out, but nothing can really work in your favor once you've gotten out. And that's a very well placed shot right in the middle of the fielder at cover, and cover point, one run taken. And now on strike we'll have Steve Smith. Steve Smith also has had a good summer. He scored 100 and he's been playing well against the West Indies, but I'm not sure if he is in actually the kind of frame of mind that you would want from a number 4 batsman, because he did not expect any wicket falling for at least the next 1 hour, and suddenly he has a run out and suddenly he has to walk in. So is he really in the mindset of batting? Because he's someone who always talks about the mind. He's someone who always talks about how his hands are moving, how his mind is moving, how he's feeling. So I think he's feeling good or not. Let's see, and we'll see it in some moments, because this lineup will wake him up. Mako, Jansen, Lungi, Ngidi, Rabada and Nokia are no mean bowlers. They are the meanest bowlers. The first ball that Steve Smith faces would be of Henrik Nokia, fast and furious. Steve Smith also plays for Delhi Capitals, so they know each other, because Nokia also plays for Delhi, and that's well bowled outside the off stump, and he plays it very close to the body. That's the mantra in Test cricket. You know, you got to play it close to your body. Once you start playing those shots very close to your body, it becomes easier, right? It becomes easier to really judge the spin, swing, movement on the ball, off the pitch, in the air. And if that continuously keeps happening, things will be only better, and then we can possibly see the batsman bloom in his innings. And Steve Smith is somebody who takes his time. Once again, if you start bowling him right outside off stump, he can block you for half an hour and not score a run and still be very fine with it. But I am never sure of this concept of taking your time, because eventually a batsman enjoys not just batting but runs. You eventually have to hit runs. Till the time you do not score, you will always be insecure. Yeah, that was a good one. So you got to score to not be insecure. And insecurity runs in the batsman's minds more often than not when there are a lot of dot balls bowled to him. So a batsman would want to enjoy the run scoring, and that would not happen quite easily against attacks of the caliber of South Africa. And that's Rabada, who's bowled a very full delivery outside the off stump, and Rabada also plays for the Delhi Capitals. So it's the entire Delhi Capitals team playing here in the test match. Just imagine the 2 bowlers who are at the crease, Rabada, and with Rabada there is Henrik Nokia. Both of them played together for Delhi Capitals, and then there is David Warner, and then there is Steve Smith. Both of them also batted for Delhi Capitals. So there is Delhi Capitals all over. Although Rabada has changed his teams, he switched his team, he's now a Punjab player. But now, you know, there are 4 people who really know each other, and David Warner is looking to first score his 50, and will he score a 100th test match 100? I mean, 100th test match 100 means 100 in the test match. It's his 100th test match. Will he score a 100 in his 100th test match? It is a question for all of you. You can of course poll in your votes. We have opened the lines for you, and there is no age bar. Anybody can vote, even if you are 18 or not. So it will be wonderful if you could vote here. And good bowling here by South Africa. Although I'm not really keen on telling you if their bowling has been piercing or if their bowling has been pacey or troubling the batsman. No, because the pitch is very easy. You don't have a lot of bowlers troubling the batsman, even with a lot of pace. But what you generally see is
Good batting here. MCG is good for batting, and that's been pushed away on the offside. A single taken. Hello and welcome, everybody. If you're watching us for the first time, this is our first stint in English commentary. This test match we have tried to do in English commentary, otherwise, we generally do or stick to Hindi commentary because of the large mass consumer that we have in that arena. But since the Hindi speaking audiences must be sleeping while South Africa and Australia will play each other, we thought why not try and do the English commentary. You can speak with us in the live chat. We love discussions on cricket. We love talks on cricket. And if you can do that, we'll be very, very happy. And there is a poll that we have actually opened for you. And the poll's question is, will Warner hit a century in his 100th test match? You can definitely give your say. You can definitely have your say. And that's a good ball once again. And Rabada and Nokia are bowling back of good length deliveries. They are not giving a full ball to Steve Smith because if he gets a full ball, he'll either drive it or flick it towards mid-wicket. His driving is very good down the ground and towards the offside. He just lets the hands flow through the ball. His hands are very uniquely fragile when it comes to batting. They are very flexible, and when he actually hits them through mid-wicket, it's a sight to behold because he uses all his body when he flicks it. Like, oh my god, what a ball! Rabada squared him up, and it takes an outside edge going towards third man, but the fielder really runs and catches the ball for 2 runs. It was a wonderful, wonderful delivery. Bowled right outside the off stump, pitched and moved away from Steve Smith. Steve Smith had just his bat hanging in the middle and takes the outside edge towards the slip cordon where there was a gap around the gully, and 2 runs taken before anything else could have been done. Hello and welcome. Good morning, everybody. If you're watching us for the first time, I'm really glad and happy. And if you are watching us again, I am even more happier because you would return here more often. If you are our constant viewer, and that's a good delivery outside the off stump, there is nothing that David Warner can do about it. And all of you are here. I'm very, very happy. And if you enjoy Hindi commentary, let me know. Then I will begin in Hindi. But English is something that I have just attempted for this one test match. And if I can regularly do that, I'll be really happy to do it. So there are certain stories that I would want to tell you with regards to cricket. Once there is more viewership, I can begin with it because that is when more people will get to know it and more people will enjoy. And now Steve Smith and David Warner are at the crease. Both of them have had a history of trouble with South African players, and both of them were once the captain and vice captain of this very team. They are still in the leadership group, although not leading completely. Nicely bowled once again. It's been pushed towards point. No troubles for the batsman here because the bowling is quite outside the off stump, so he's just hanging his bat because the pace is not a problem. The bounce is, and if you just keep looking at the bounce, there will not be much movement of the track, and without movement, you cannot really get the batsman out very easily. You need movement for the batsman to get into trouble mentally, because then he would start thinking, oh, is there something that I'm missing? Is there something that other people can do and I cannot really tackle that? And that is something that all the cricketers are always worried and wary about. So Henrik Nokia comes in to bowl the next delivery of his over. It is a good ball, but has been cut fiercely towards point, but the point fielder really handles it well, does not let it pass through his hands. Welcome everybody. If you're watching us for the first time, I'd like you to just push the subscribe button if that is possible for you. And if it is not, then possibly I am not doing well enough in convincing you or just taking you out on a stroll with me on my channel. And this is something that is very close to us, very hearty to us, and if you can really appreciate us, we'd be glad. Oh, what a ball! That was a bouncer of some sorts. What a ball. I really enjoy watching Henrik Nokia because he's somebody who intimidates the batsman, and being a bowler myself, I love doing that to batsmen because batsmen have all the world and the time to hit us out of the attack, to leave us, and all the rules are in their favor. The ball is in their favor, but sometimes when you get conditions where bowling can be better, then the bowlers will relish it. And Henrik Nokia is one of those bowlers. He relishes a fight, he relishes a battle, and right now he'll be looking to get a wicket because the first wicket fell on the day due to a run out. It was not due to exceptional bowling, but what a shot!
That's a ball that was pitched up, and David Warner just hangs his bat outside the off stump and pushes it towards the boundary. Is it going towards the boundary? It is, but it's a long, long boundary. I think they would take 4. Yes, they take 4. So what was the use? What was the use here? They took 4, and the fielder ran and ran and ran and reached the ropes, but by the time he actually retrieves the ball and throws it back to the keeper, 4 runs have already been taken, and David Warner is looking in some fine form. He's looking in good touch. I think he would definitely be looking to get 100 in his 100th Test match. It is an achievement only a few have been able to make, and I think David Warner is definitely looking to do that. Hello and welcome everybody. We're watching the first Test match of this series, and South Africa and Australia are against each other at MCG in this Boxing Day Test match. Why is it called Boxing Day? Because on 25th December you get a lot of gifts in a lot of boxes, and when you unbox them on the 26th of December, that is yesterday, so that entire event is called unboxing, and generally you cannot say it's an unboxing test or an unboxing event, so it is generally said Boxing Day Test or a Boxing Day event. Oh, I'm getting some bit of yawning because it's too early in the morning and I did not have a full complete sleep. I was here before you were, so please spare me some yawning. I can definitely do that sometimes, but it will not bore you, not a lot. And we are watching Australia play South Africa here in this Test match. Second day, first Test match. South Africa were bowled out quite cheaply, and Australia are not in a mood to get out at all. Steve Smith, look at him, and he flicks the ball. As I told you that he drives elegantly, flicks it even beautifully. 1 run for this because this was not pitched up as much. If the ball is pitched up, if it is full in length, then it will be easier to flick for a batsman. But if the ball is actually short of good length, so it will only be nurdled or let's say worked towards the leg side for a 1 maximum. So you would need good length to score good shots. If you get a full length delivery, you are in a position to score at any place in the ground. But if you get a good length delivery in a particular area, not a lot of shots can be played off it, because neither you can drive nor you can cut. So it is something that is very different. You're not able to do that. And all the viewers who have joined us right now, we are really pleased to inform you that we'll be doing the 2 Test matches today. The first one here, this began at 5 AM in the morning, and it's been 50 minutes since we began the stream. Oh, it's been only 42 minutes then we began the stream. Oh, wonderful bowling once again. Who has come now? I think it is Henrik Nokia or Rabada. Rabada is bowling his thunderbolts too. Steve Smith, my god, good bowling here. That's excellent bowling, and Steve Smith would be looking to actually shout a lot of things that he generally does while he's playing. He generally does his own commentary about how he's playing, the positions that he's getting in, the balls that are bowled to him, and okay, this is a nice delivery. This was on the body, right at the rib cage, and Steve Smith was well behind the ball and easily defends it towards the leg side. So there is something that we're constantly watching in this Test match, and that's the cat and mouse between the batsmen and the bowlers. And the batsmen have actually not been able to dominate the bowlers despite the pitch being really accustomed to batting. It's a very good batting track, except for the bounce. I mean, if you get good bounce, some players really enjoy it, and I'm talking about batsmen because they say that now they can play their shots all around the ground. Very good ball once again, and that was bowled outside the off stump, and Steve Smith completely leaves it. Hello and welcome everybody. We are doing this commentary all for you. We are the scorecard, and we do commentaries on Test cricket, on T20s, on one internationals, and all the cricket leagues. Mostly it is done in Hindi, but sometimes we are doing it in English, and this is the first time that we are doing it in English. Thank you for your support and your love. If you're here early morning, if you're from India, good morning, because we are from India as well. And that is something very uncharacteristic of Steve Smith. It was really bowled outside the off stump and it swung away. It was a full length delivery, and Steve Smith went after it, but his bat faced closed at the last moment, could not really gain much out of it. And we are trying to bring you this coverage of the live Test match between Australia and South Africa live from MCG, Melbourne Cricket Ground. And we can see Keshav Maharaj warming up. Is it time for him to bowl as yet? Marco Jansen is not visible,
and Lungi and Ngidi is not being seen, and the shot that he missed the previous ball, he has connected it this time and it flew off the bat. It's been driven beautifully towards the cover region for a boundary. First boundary for Steve Smith. Steve Smith looks in the groove. I believe that he is quite happy batting the way he is, and what a ball, what a ball. That was bowled outside the off stump and it swung, but Steve Smith was ready to pounce on it and he really pounced on it, didn't he? This is something that I really enjoyed. Very good batting here, but Steve Smith is looking to face the bad balls first and just trying to push them away. And oh, what was that? That really seemed later. It pitched and then swung and then moved later when it got past the batsman. Nice. So I think 4, 7, 8 overs have been bowled by, I think more than that, have been bowled by this couple, and that is Rabada and Nokia. I think 10 overs have been bowled by them. So they must be given some time to relax, some time to rest, and the rest of the bowlers should come here to probably assist these two men who have had all the hard work to do early on in this day's play. So I think who would be into the attack? I would love to see Marco Jansen because he's a tall boy and he would give a lot of chances, a lot of options to the batsmen to score and then get them out. And Lungi Ngidi has been brought now. Lungi Ngidi had only bowled a few overs, and a few overs as in only 4 overs, and now he is brought back into the attack. His best part is the length that he can bowl, and that length is very good. If he can extract some bounce and some movement out of the track, it will be excellent, and we'd love to see that. And the first ball is bowled right outside the off stump. So what he's trying is, he's coming from round the wicket. He's a right-handed bowler, just understand the technicalities. He's a right-handed bowler, he's coming from round the wicket, and David Warner is playing, so a left-handed batsman is playing. He's trying to pitch the ball on the off stump or outside the off stump and trying to move it away. So if you're pitching the ball outside the off stump of the left-hander and trying to move it away, you're basically inviting the batsman to play at it, and when he plays at it, there might be the chance of an outside edge that can take place here. So that is something that Lungi Ngidi is looking to do. And how successful would he be in this plan? We have yet to see, and that was a good ball once again, but there is yet no movement for him. The ball is constantly being made by the players around the bowler, so all players chip in with their trousers and sweats and sometimes saliva, although now saliva is not allowed after COVID. So all the fielders chip in and they try to, really shine the ball, and once they do, they are really trying to get as much movement out of it as possible. So if you're watching us for the first time, I am really glad, I'm really happy, because this is a first stint of our English commentary, and we would love to bring such commentary more to you more often than not. And there's the scorecard which is running behind us, and that's a good delivery, but an outside edge, okay, an outside edge, and Lungi Ngidi has his heads full of the hands. So he has hands on his heads and has just evaded everything on the slip cordon and led to a boundary. That's a boundary to be taken by David Warner. My God, David Warner is actually having a good time under the sun today. It's a good day to bat, and he's really batting well. And it's his 100th test match. We have already opened a poll. Will he score 100 in his 100th test match? He's already moving towards 60. The score is headed towards 93. Steve Smith for company. Who else would you want there with you if not for Steve Smith? And that's played on the offside, a quick single taken. And David Warner's problem is that whenever he hits the ball in even the slightest bit of gaps, he is looking for a 1, even if it is not there. And the scoring opportunities that he generally looks for are weird, because at times you feel that this wasn't required. David, why did you do that? And that is something that I think he must consider if he regularly has to play for Australia for a long time, that you cannot get other batsmen out, and that too of the caliber of Manus Lavashane, just because of one solitary run that you could have got because of that misfield. So that was a poor decision taken by David Warner to run that extra run. And hello and welcome everybody. We are here sitting for the Australia versus South Africa test match, and it's a beautiful test match. It's a beautiful batting day, and David Warner is utilizing it perfectly well for his innings, and it's his 100th test match, and that's been played towards mid-wicket.
No loss at all because Temba Bavuma is here. So we need to talk about Temba Bavuma. Temba Bavuma also got out cheaply yesterday, scored 2 runs maximum. That's what I'm thinking. But the problem with him is his approach in the white ball cricket. His white ball cricket is considerably poor and he can really work on it. But he's the captain, he does not get time off. And I think he should step down from captaincy and then probably look at his career from a very neutral point of view and think if his white ball credentials are good enough to see him as a captain, because I do not really personally enjoy his captaincy or his batting. Actually, and that was a good ball bowled at the hips of the batsman. Steve Smith wanted to flick it, but it was difficult because the length was better. If you give them full deliveries, I mean, those are easy pickings. You can hit them anywhere on the ground. And Steve Smith, I mean, wow, what a beautiful player. He would be able to hit it anywhere else too. And that is something that I really know about him, that he's a generally good player. And I think that's the drinks break. And the drinks break, I think, who's ahead? It's a balanced outcome right now. The score is 96. So basically, Australia have added some bit to their total, around 35-40 runs they've added, and they've also lost 1 wicket. So we're not sure who to really convincingly say that okay, it was their day. I'm not sure. I think the next 1 hour will tell much more. Rather, this is the last over. Marco Jansen comes in. I was telling about Marco Jansen, how he should be introduced to the attack because his bowling is completely different to other bowling, and his bowling is focused on bowling outside the off stump, bringing some bit of movement, is very disciplined. So he would be bringing much more stability to the Australian lineup right now that they were lacking. And David Warner gets very restless once he does not get runs. So bowling dot balls to David Warner is an excellent idea because then it will play in his head that he has played so and so dot balls and he got to move forward with it. And if you can possibly do that, well and good. Marco Jansen coming in with the first ball of his first over of the day, and that is on the leg side, and David Warner picks it quite easily, flicks it towards fine leg, 1 run taken, and on the strike will be Steven Smith, and Steven Smith has been excellent till now. He has looked good except that one shot where the bat handle in his hand really moved. Could not do much about it. And we have to see how the Indians play here. Are the Indians playing? The Indians are not playing. The Indians are in the audiences. So play well. Subscribe to us. That is what I was trying to tell you. South Africa and Australia are having a humdinger of an encounter, and it is very difficult to make out if South Africa will actually have a comeback. No, they will not, because it looks quite far away. And that's a good ball right at the stumps. Steve Smith wanted to flick it but could not. And if you are watching us, a very welcome to all of you. And if you're not watching us, please do, because I would really be grateful if you could do that. And if that is a possibility, then yes, go ahead and do that. Other than that, this is possibly the last over before drinks, because drinks break takes place after 1 hour of play, after a break or the beginning. And that's a poor delivery, bowled very outside off stump. No need to bowl it there because the batsman will never ever think of playing it, and there is no need to get balls like those because then you will not get wickets. You need to have some different outlook to get a wicket. And if you're enjoying our commentary, please kindly like and subscribe us. We'd love to do a lot of more commentary like this for you, and if that is possible, yes, please do subscribe. We are at a very young stage in our YouTube careers, and I call it a career because we're investing a lot of time and hope into it, and we have educated ourselves our own way. And that's a beautiful ball, and that's an outside edge but dropped. No, is it dropped? Hi, how are you? Oh, that's an outside edge but did not carry. This did not carry, and Marco Jansen is producing some really good balls and a very bad balls. And BBC 2. I do not know what has been written in the chat. Please specify what are you trying to say, gentlemen, and we'll be ready to speak with you. But right now we saw a very good ball. That was by Marco Jansen. And that's a bad ball. After a good ball, you're bowling a bad ball. The previous one was perfectly pitched right outside the off stump, moved away from the batsman. Steve Smith was drawn into a defense that he would not have liked to really connect otherwise, and then he took an outside edge but fell right short of slip. The next ball was a poor one, bad one, down the leg side, short ball, should have been hit for a boundary, but
really didn't go anywhere. I love yawning in the morning, and that is what I'm doing. But with you, it's a different territory because yawning in front of some people is slightly lazy, and I'm doing it because it's very, very early. I'm allowed and afforded to do that because I woke up around 4:30 to bring this to you. And if you're watching us, please subscribe because that will actually motivate me to do this more often. And if I can do that, I'd be really happy because I love cricket commentary, I love cricket, and I would love to serve more people with what I know about this beautiful, wonderful game. Hello, 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 everybody. If you're watching us, kindly do subscribe, and if you are not watching us, kindly please watch us. But how would this get to you? I mean, how would you get to know that I'm asking you to watch me? Interesting question. Okay, let's look at what Australia are up to. They are about to cross 100, or they have crossed 100 right now. They have lost 2 wickets, and Steve Smith just looks good right now, but he almost got out last over. Marco Jansen bowled a really good ball. With Marco Jansen, you get 2 good deliveries, 3 very bad deliveries, and 1 okay delivery in just 1 over. In the 6 balls that he bowls, there are different things that you can watch. So he bowls some good spells, right? 3 overs of good deliveries, good balls, without giving a lot of runs. Then I think that he can be that bowler who does a very, very strange and difficult role in the team of South Africa, and that is of an all-rounder. And any team would require an all-rounder of a caliber of Marco Jansen, I believe. And David Warner is sipping water in this drinks break, and he's sitting down and sipping water. There are some instructions being passed on to him before he reaches lunch. Once you reach lunch or tea, there are some honest conversations with the team management, with the coach, and with other people around. And then you take a call, and then you see what happens in your future, because that team meeting can decide anybody's present, anybody's future. The discipline, the hard work, the inspiration, and everything that they bring forward to is in Test cricket. David Warner has taken a quick single several times, but the one time he wanted to take it against somebody called Keshav Maharaj, he risked the wicket of Manas Labuschagne, and Manas Labuschagne had to take a long walk back. After that, there have been some boundaries, but some really good bowling and running between the wickets as well. My God, why am I yawning? I cannot yawn. I gotta wash my face up once again. Just because I woke up at 4:30 in the morning cannot mean that I'm doing all this. Hello, my name is Tanay, and I'm here to bring you the match between Australia and South Africa. This is something that we had attempted yesterday. I mean, we just wanted to do some commentary in English. Generally, we do the commentary in Hindi. So we just wanted to do it in English and see what the response is. The response has been decent till now. It can, of course, be better 2 times, 3 times, but it can just grow once we are settled in this role and once everybody enjoys listening to us. We would love to bring this to you. And there is some bit of chatter going on, not only in this circle of South Africa, but this small circle of Australia as well. So there is a little bit of chatter going on. I do not know what they must have decided, but if you really like what we are doing, kindly please like and subscribe us, and we'd love to see more of you. We'd love to talk more about cricket, and if you can give us more subscriptions, things will get better from our end. We'll be far more motivated, and we'll be far more encouraged, incentivized to do what we are doing. And this is something that all artists or all servants require, public servants. So we are public servants, of course, because we are serving the public with whatever knowledge that we have, and we are sharing it with you. The only payment or the cost of it can be a subscription. So if you can subscribe, it does not take any money. It only shows your love, support, and friendship towards us. I am Tanay Yadav. I come from Gurgaon, Haryana, which is right next to Delhi, if you have heard of it. So yeah, this is about me. If you want to tell me about your time under the sun, how do you see cricket, what do you think about Indian cricket, do let me know in the live chat section. I'll be very much happy to engage with you people. And now there's another over. Who's bowling this over? I think Lungi Angidi will. Lungi Angidi will bowl another over.
Lungi Ngidi has only bowled one till now because initially 5 overs were bowled by Rabada and 5 by Andre Nokia without much success, as in there was no great chance that they created. In test matches, you got to create some chances, but they did not really create any chance because there was no movement they could extract from the pitch. And here is Lungi Ngidi, as I told you, he's coming from round the wicket, and from round the wicket, he'd want to take the ball away from the left hander, just pitch it and move the ball away. It's a very, very difficult task to do, very, very difficult skill you require for it. And if you are able to do that, that is wonderful. Wonderful, in fact. We only have a few subscribers today, so if you can possibly subscribe us, we'd be really happy if you could do that. And this is the second delivery of Lungi Ngidi's second over of the test match. Is day 2. This is day 2 of the MCG Boxing Day test match. Every year when Australia has its test season, they play 2 test matches which are a certainty. One is the New Year test match, either it starts on the 2nd of January or the 3rd of January. The other is the Boxing Day test match that always begins on 26th of December, the next day of Christmas. That is called the unboxing day, when you unbox the gifts. And because of that, this entire theory of Boxing Day test matches. And I'm feeling slightly cold right now. Should I bring in a jacket for myself? I think so. And that's beautifully played on the offside. Must get 3 or 4 for this, and he would get 4. What a very, very good shot. It was bowled full and right in the arc. He square drove it, and after driving it on the square boundary on the offside, there were only 3 runs that he was going to take, minimal. But then the ball soared to the boundary ropes, took 4. In one previous such incident, he almost took 4 runs, and he did with Steve Smith. I believe they took 4 runs, like in the last over, I believe. Hello and welcome everybody. We are watching this match between South Africa and Australia. 99 for 2 is Australia. Would Australia get 200 in this over? I think so, they can. We also have a question in the polls section that would David Warner score 100 in his 100th test. It is no mean feat. Only a few have been able to do that. And that's a good ball. It's been played away nicely towards the offside. 50 for David Warner. And David Warner raises his bat and says thank you. And that's been a hard earned one. He has played some good bowling, but it is a good batting track, so you cannot really complain. Give me some time. I'll just come with a jacket because I'm feeling slightly cold, and I'll just come in a moment. Thank you. Give me 1 minute. I'll just come in a moment.
Hello and welcome. It was, of course, very wintry in Delhi out here, and I had to bring in my jacket and a little bit of a muffler so as to soothe myself right now. And I am fine. I hope you are fine too. This is the second day of the first test match that we are bringing to you between South Africa and Australia. South Africa did not score as many runs as they would have liked to, and I think some bit of problem is going on here with Australia as well. They are not able to play that the way they want, and 100 comes up. Oh, that was a quick single, very quick single. And hello and welcome everybody. We are back, and we are back after a slight break. I had taken a minute's break to just bring myself a jacket and a muffler because it's extremely cold here. See, I have my, what do you call these, gloves, yes. What do you feel about the test match? Do you think Warner will get to 100 in his 100th test match? That will be what one says a memory of a lifetime. And if you can actually develop that, this is something that you really like, some memory that nobody else has, actually achieved, some milestone that not a lot of people will achieve, because not a lot of people play 100 test matches. And if you play 100 test match, please make sure that you score well in that, or take at least good wickets in it if you are a bowler. That's well bowled by Marco Jansen. He has suddenly come from round the wicket, and from round the wicket he's angling the ball into the stumps to Steve Smith, and he wants to get Steve Smith out that way, and he is making matters difficult for Steve Smith, who is not looking as fluent as his other innings this summer. And welcome to all of you. You are watching Scorecard. We are bringing you this live match commentary between the test match between Australia and South Africa. Good delivery once again, and that's been played towards point. No run taken here, and Steve Smith is marking his guard again. Steve Smith is looking to score some runs here, but he's not being allowed to do that because the field placement is good, the fielders are agile, and sometimes the bowling is even better. So that is what we are seeing right now, but the pitch is a beautiful one to bat on. I do not know why did not South Africa scored around 270, 280 on this track, because even if Marco Jansen could score a 50, then the top order certainly could afford to do that, because he played decent cricket, but he is not really suited for batting. But even if without being a batsman, if he could score 50, then I think other batsmen should have scored a little more than what they did. And that's the over. Marco Jansen completes an over. We were just talking about him as he came in at number 7. 5 wickets had already been blown away, and still he could manage a 50. That was because the pitch was doing good, and now the pitch is doing even better. So I think Australia will score easily 350 here. I mean, it's something that I just feel right now, because South Africa are, not really attacking Australia right now. Australia is playing really well. All of you, a very good morning to all of you, and it is absolutely funnily and scarily wintry in Delhi here in India, and I am wearing a muffler, a jacket, a sweater, and these gloves so that I do not feel as much chilly as I did like some moments ago, and I had to wear all of this. I just woke up and it was 4:30 a.m. and I sat on this live stream and tried to do this English commentary with you, and if you really enjoy it, I will be extremely grateful and happy. So this is the first test match, second day, and Steve Smith is playing with David Warner and is appreciating how Marco Jansen, the young Marco Jansen, whose brother Luan Jansen got another contract for IPL. He was playing for the Caribbean Premier League. Now he'll be playing in the IPL. And Roshan Mandal says total 4 अभी तक कितना हुआ है भाई? Total fours कितना लगा है? I think around 5 fours have been hit till now. 4-5 boundaries have been hit, yes. And that's a good delivery outside the off stump, just leaving David Warner. And I think Steve Smith would be really happy to partner David Warner here. David Warner is playing his 100th test. Will he get to 100 in his 100th test match? What an achievement that would be. If you think so, and if you do not think so, please vote in our poll. We have really began a poll in the chat section. You can come and speak with us, as Roshan Mandal did. He wanted to ask how many boundaries have been hit on this day, and I think 4 or 5 boundaries have been hit. One boundary actually was scored by just running. They hit the ball too far and then ran 4.
before the fielder could actually retrieve the ball. And that's a good ball once again, pushed towards the offside, 1 run taken, and David Warner moves ahead and moves forward alongside Steve Smith. Hello and welcome to everybody, all of you who are watching us. We are really happy to host you. This is our channel, We Are the Scorecard, and we're trying to bring in commentaries on Test cricket, on one-day cricket, T20 and league cricket, but generally it is in Hindi. But some time back we just thought, why not do it in English? So we were just searching a match to do that in, and the match came. This was that match, because the Hindi speaking audience will be asleep, they will be sleeping. So we said, okay, this can be done, and we were just worried about the viewership, but since all of you are here, there's nothing to worry. Okay then. Engedi to Smith, oh, good length ball, and it rose off a length. How does the ball rise off a length? I mean, short ball of course has to rise because it is a short ball, but if a good length ball, if it is pitched up, slightly up to the batsman, and it still rises a lot, what does it tell you? It tells you that the pitch has a lot of bounce, and it also tells you that the bowler is putting in a lot of his shoulder on his delivery. If he does that, then the ball gets bounced off a good length, as Andrew Flintoff would get the ball to bounce. Haris Rauf can do that, and Mark Wood is doing it of late. So yeah, these are those bowlers who can actually bounce the ball from a good length. And we can see Keshav Maharaj on the screen. Will he get to bowl today? And it's a good ball once again. Steve Smith says no, no run, no run. That's how Steve Smith addresses his fellow batsmen on the other crease. Steve Smith is very animated. He's somebody, you just feel, oh God, Steve, can you be slightly less loud? But Steve bats like that, and that is what everybody really enjoys once you start doing it. And Manas Labuschagne is nothing different. He is almost very similar, but he must be heartbroken today because he got run out. He got run out because David Warner was trying to get a silly run off an overthrow, trying to be too smart. That is where the Aussies, sometimes they just really feel for them. They can possibly keep things simple, but they just try to work too hard. And that's a good ball, but it has been played even more beautifully towards the leg side. Steve Smith came on the offside of the ball and just tried to tuck it on the leg side, and it took a good inside edge and flew towards fine leg, 1 run taken. And all of you are here. I'm really happy. If you really enjoy what I am doing, please subscribe to us. We'd really love your support, and we'd really love your love for us. And if that is possible, I would really be thankful to you, because I have been here since morning, and morning as in 5 a.m. and 5 a.m. according to Indian Standard Time in winter is extremely chilly. My God, it's suicidal, but we are ready to do this if we get audiences. And yes, we have the audience. If you can probably subscribe to us, we'd be highly, highly grateful. It costs nothing. It only costs a little bit of affection and a little bit of support. And if you can do that, thank you. So the other over comes from Marco Jansen. Marco Jansen has troubled both Steve Smith and David Warner till now. He has been bowling well, and he has his tricks up his sleeve. He's a good, fast, tall bowler. Tall bowler gets a good bounce, and then, of course, he can put the batsman in trouble. And he's bowling around the wicket, bowls well to Steve Smith. Right at his pads, Steve Smith is very good on his legs. He's very good off his legs. He wants to, get bowled on his pads so that he can easily play towards the leg side. He loves this line of attack. He loves the bowlers going at his pads, trying to get his wicket by bowling him out, but that does not really happen. Only a few have been able to do that, and Steve Smith has still been very clear about his technique, which we do not understand as bystanders. We think, oh, what's happening? That looks awful. And look at that, oh God, is that out? No, that isn't. That was a short ball, a very, very wayward delivery, very outside off stump, and Steve Smith had a slash at it, but could not really connect. And the keeper just, tried to make a fun catch out of it, but that was no catch at all, because there was no connection with the bat. Had there been a connection, it would have flew over the slips, because he slashed so hard. Very, very hard. How are you? Where are you from, guys? If you could just tell me, I would be very happy to know who is watching us. And if that can be told, I'd be very, very glad. And that's a good delivery once again outside the off stump. It just bounces off a good length, because Marco Jansen is 6 feet 7 inches, and if he bowls a good length ball, it is bound to bounce. So it's no, rocket science. I mean, he is somebody who is blessed with good height, good genes, and that's what's happening, because good physical ability is a prerequisite in most sports.
even so more so in cricket where you got to do the hard yards while you're bowling. And since you are all with us, I would love to see who you people are. If you can talk to me on the live chat, and that's nicely driven on the offside, but there is no connection there and just cannot time the ball as well as he would like. Marco Jansen is suddenly trying to, just make something out of nothing. He's just trying to work harder for the batsman to make a mistake, and he's bowling some good lengths, some good lines. The ball is moving away, the ball is coming in, and Steve Smith was extremely unhappy with this not so well timed shot. The shot was not timed really well. Steve Smith playing alongside David Warner. Oh, what a ball once again! And he's coming from round the wicket and he's angling the ball into the right-hander. There is nothing much that the right-hander can do about it. Zaid Khan used to do it against right-handers when he used to bowl from round the wicket. A left arm round the wicket is right arm over the wicket. So he bowls left arm round the wicket and try to pitch the ball outside the off stump and move it away from the right-hander. Similar thing Lungi Ngidi is trying to do with David Warner, coming from round the wicket, pitching it outside off and trying to move it away from the batsman. Very, very simple. That is what is happening, if I can clearly describe you. And once again, a good harmless ball left alone by Steve Smith. These are the balls that cause a lot of mental trouble to the bowlers, because if constantly a batsman is easily leaving you, you just feel, am I so easy to face? Is there no doubt in the batsman's mind when they are facing me? And if you just see a batsman easily leaving you, you're not really happy with that. You're not really entertained or encouraged with it, and you just want to make him play. At least play something. Even if you want to score me, score, but play something, play the ball. And if you want that the batsman should play the ball, put it closer to the stumps. Make him doubt that the ball will somehow hit his pad or his wicket. If that does not happen, things might get exceedingly difficult over the course of the test match, because it's a long test match, and test match of course is beautiful. I mean, the more I talk about test matches, the more I feel that people know little. So in test matches there are 5 days, 15 sessions, a lot of plans, a lot of breaks, and sometimes you just got to play the situation out. A very well good ball delivery by Lungi Ngidi. Good length outside the off stump, and he just tries to move the ball away, but there is no movement at all, and that is a curse for the bowling team when you know that there is nothing on the track. I mean, nobody can really move the ball here from South African team, and they are facing the problem here. They're facing the issue. There is no Dale Steyn, there is no Vernon Philander. You do not have those people around now. Had those people been around, things would have been slightly different, and that is why they were called the legends of the South Africa team. David Warner playing against Lungi Ngidi. Oh, very well bowled, very nicely bowled. The ball finished at the stumps, and David Warner just defended it tentatively off the back foot. All of you are welcome in this live stream, and we are happy to host you. We are happy that you are here, and there is something that is very important in friendship, and that is support. And if you can support us, I mean, I'm ready to support you too. I'm ready to possibly do something for you, whatever you want me to. This is the most that I can possibly offer. If you want me to make more videos, I will make more videos, but I would want you to subscribe, because that's how the relationship grows. And David Warner is playing really well against Steve Smith right now, or with Steve Smith right now. Lungi Ngidi bowling to David Warner, who slashes at this ball, and it's been flown away towards sweeper cover. The sweeper cover fielder picks up the ball and throws it right into the hands of the keeper. 1 run taken, and now Lungi Ngidi will bowl to Steve Smith after a long time. I think it's been around 25 balls, 27 balls that Kena has not faced. Rather, Steve Smith has not faced Lungi Ngidi. How are you guys? Can you please tell me where are you from, your locations? I mean, where you're coming from in this world. If you're from India, hi, it's very chilly here. Oh, my teeth are chattering because it's Delhi, and Delhi is freezing cold. We're not used to this generally, but this happens like 2 weeks every year. And what a shot, my god, but there's no gap. 1 run taken on a very quick run between the wicket. And we're shivering, but we just want to bring you this test match, and I hope all of you are doing well, all of you are doing fine,
And if you really like us, please subscribe to us. We'd love to bring this commentary to you from the first test match between Australia and South Africa from Melbourne Cricket Ground, the MCG, where the World T20 final took place, where the India-Pakistan match took place. And India-Pakistan match got over 90,000 people in that ground. And the World Cup final, the T20 World Cup final, only had 87, 88,000. So I think cricket trumped football that way, right? If we can say so. I mean, cricket was better than football this year. Although the final of the Football World Cup was, wow, my God, what a final. I mean, there was so much for a sports fan. There was so much for somebody who writes. There was so much somebody who thinks. Because the human potential and human luck is unbearably rich. And you would just feel that, oh, so much can happen in the span of 90, 100 minutes. What can happen in a life that goes on for 70 years? Why don't we live each moment like these footballers are trying to show us? And right now, I mean, we'll get back to that. But Rabada, or rather this is Lungi Ngidi. Lungi Ngidi looks slightly more slimmer than he is and bowls well to David Warner. He's trying to move the ball away, but there's no movement, and David Warner is well set. He has already scored some runs. He is in his late 60s, 69 for David Warner. We are already running a poll where the question is, listen carefully, the question is, will Warner hit a century in his 100th test? And the options are, of course, and the second option is, nah. What do you think? So 69 already on the board for David Warner. I think he is well set to score a century. I really think so, because there's nothing in the pitch. He does not seem disturbed. He does not seem out of form. He looks perfectly in control, and I think he would definitely score a century here. But the people who want that he does not score a century are also not so frugal or fragile. They also have their calculations in their head. They also have their reasons. And if you're watching us for the first time, please subscribe to us. I would love to see your company. And that's a brilliant ball, but an inside edge takes the ball to fine leg. One run taken by Steve Smith. Now again, who's on strike? Who is on strike? On strike is David Warner. David Warner will play Marco Jansen. Marco Jansen is this new gun that the South Africans have produced. He's a tall, lanky paced bowler. His brother Johan Jansen has been selected in the IPL recently. He played the Caribbean Premier League as well. So these are the updates that I have for you, and I think if you are happy with these, kindly subscribe to us. We'd love to see you more often than not on our channel, and we'd love to have your company. And this is the second day of the first test match, the first Boxing Day test match that began yesterday. Wonderfully bowled, but what a shot, straight down the ground. The fielder's running behind it, and even before he retrieves it, they would have taken 3 at least. And yes, they have taken 3. There is the case of Lungi Ngidi running behind the ball and taking the toll on his body. Just imagine, he is bowling 6 balls. Just last over, he bowled 6 balls. That means he put in the effort, he ran in, he sprinted, and now he has to sprint again to bring the ball back from the long off boundary. This is hard. Very hard. You would not want that your fellow bowlers are suffering because the other bowlers are not bowling well. Kindly make sure that this happens. Anyway, we are almost at 1 hour 30 minute juncture of this innings, and all of you are welcome to our stream. And that's beautifully pulled away. Is this a catch? No, it's been dropped. My God. That was a short delivery by Johan Jansen, and Steve Smith wanted to hit it on the square leg area, but only took his glove, went to the keeper. The keeper has tried to gobble it up, but he dropped it eventually. Would have been a fine catch, and what an achievement for Marco Jansen to get Steve Smith out in Melbourne Cricket Ground. It is one of his favourites to play, and this would have been quite an achievement. But he's bowling good, this young kid. And oh my God, another good delivery, and Steve Smith was squared up. He did not know where his bat was, where it was going, and suddenly took the outside edge straight into the hands of the slip fielder. How are you, all of you? If you're doing well, I'll be very happy to be around you. And if you're not doing well, then I will certainly be around you. I want you to succeed in life. I want you to help me succeed in mine.
So please kindly support and subscribe to us if that is possible. I'd be really glad. अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं जनरली हिंदी में कमेंट्री करता हूँ, लेकिन आज अंग्रेज़ी में करने का मन कर गया तो फिर मैं अंग्रेज़ी में कर रहा हूँ. तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एक और शानदार खूबसूरत बॉल यहाँ आउट स्टंप के बाहर. अगर इसके साथ भी छेड़खानी करना चाहते तो कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर हो जाती उनको, लेकिन उन्होंने ये नहीं करा तो बच गए. कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती थी. और अभी बज गए हैं 6:35 और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है. ऑल ऑफ यू are welcome on this live stream between Australia and South Africa. We are trying to bring this to you live from MCG. The score is right behind us, 109 for 2 for Australia. Very well bowled. Yuan Jansen is bowling really well too. Steve Smith is a player of fine caliber, and he is being made to put in some sort of difficulty by this young bowler. So you just got to laud him, you just got to appreciate him that he does really have a future. He does really have a future in batting. He bats really well in one internationals, T20s also. He can be used at number 8. He's a very good batsman, and he can bowl you those good overs that South Africans really do. And that is what we really like about Marco Jansen. And his brother Duan Jansen has been selected in the IPL to play this year. He was also previously selected by the Caribbean Premier League. So I think there's a lot to do here in this domain. Anyway, anybody who's watching us for the first time, please subscribe to us, please like us. We'd really appreciate that. Only a few people do it, and if you are one of those, then I will definitely make sure that I make you a good cricket observer, a good cricket watcher. That's a good delivery once again. See what is Lungi Ngidi trying to do. It's very simple. He's coming from round the wicket. He's bowling good length areas outside off stump, and he's trying to move the ball away from the left-handed batsman. And when the left-handed batsman tries to have a poke at it, tries to play it, it might take the outside edge and go straight into the hands of the keeper. So I'm doing everything on my own. I'm just telling you that Lungi Ngidi's plan is very easy to dissect and decipher. And if you are with us, we would be talking more about the technical aspects of cricket. We'll be talking about more stories that I know about cricket. So there is this one very famous story. If you want to know, I would definitely tell you. And if you can give me 2 more subscriptions, I will tell you that very famous story. And that's a very good ball from Lungi Ngidi. Oh, that has been well left. If you give me 2 more subscriptions and make the subscription to 375, 375 has, I think, 3 to 4 more subscriptions to go. 675, I'm sorry. Could you please make my subscriptions to 675? It's 671 right now. I'll tell you a very good story of Shane Warne. Shane Warne is somebody who's very, elite in his life. He has done everything possible. He's a colorful, oh God, he's not as he was color. Shane Warne died. My God, what a tragedy for the cricket world. What a tragedy. And what a ball, oh God. That was the best ball of the innings. He had moved 4 balls away from David Warner, and then he bowls one right at the stumps, and David Warner was not expecting it. It would have hit the timber definitely, and David Warner would have been out. What an in-swinger this. Going right at the stumps, but David Warner just nicks it, and the inside edge goes for a boundary. So I promised you that I would be telling you a story of Shane Warne. If you can give me 4 more subscriptions, please take my tally to 675 and be very happy. And then we'll talk about the story that I know. And that would be, stunning for you to hear, because even I heard it only a few days ago, and it is very nice. And there are some, really, difficult things to talk about in that. Although you'd love to hear that story. So if you can possibly give me 4 more subscriptions, we'll talk about that story. But before that, I can tell you that Australia is doing very well here to keep South Africa at bay. But suddenly the ball has started to move and talk for Lungi Ngidi, who looks to give it a rip when it comes to reverse swing. He's a good reverse swing bowler. If you can give me more subscriptions, just 4 more subscriptions, then we can talk about the story that I know. And that's a wonderful story involving Shane Warne. Shane Warne was the Sultan of spin, and he could do anything with the ball if the ball was in his hands, and if he would have had a cigar and a beer before holding on to that ball, because he was somebody who enjoyed his life. And Lungi Ngidi is bowling again to David Warner, and that's another good delivery in swinging Yorker.
David Warner plays it nicely. Now Lungi Ngidi is looking more dangerous than anybody else on the ground, on the pitch. He is just bringing the ball into the batsman at a pace that is not really comfortable. So excellent, excellent bowling. This is called reverse swing. Look at that ball move. My God. Beautiful, beautiful art. Reverse swing bowling. And let me check if there are any subscriptions till now. Okay, even if there will be 2 subscriptions, I'll tell you the story. There have been no subscriptions. Nobody wants to hear the story, but that's okay. But if you can still like and subscribe us, I'd be really happy. And that's been pushed away towards the leg side. 1 run taken quite easily. The score is 114 now, and 20 minutes to go before lunch. 20 minutes means around 5 overs. We'll have 5 more overs before we touch the lunch break. All of you are welcome, and I hope that you're having a good morning. And if you're in India, please wear, as much clothes as possible. I was only sitting here in a sweater. Then I had to take a break of a couple of minutes, bring my jacket, get my muffler and the gloves, and finally I'm ready to commentate. Oh, it's chilly in Delhi. My God, that rhymed. It's chilly in Delhi. Anyway, I am just looking forward to Keshav Maharaj bowl, and Keshav Maharaj has been given the ball. Very, very nice introduction of spin for the first time in this innings. Keshav Maharaj has had a decent record. If I can talk about the record, then he has played 47 matches with an average of 30, has got 154 wickets, and I think that's a good reflection of his ability, because most of his test matches have not really been in India, Bangladesh, Pakistan and elsewhere, where spin is quite entertained and spin is quite liked and spin is difficult to play. But in other parts of the world, the pitches are not really meant for spinners, and in subcontinent areas they are definitely meant for spinners. So Keshav Maharaj has found success there, but even in South Africa he has bowled really, really well, and he has developed some variations, and he has developed massive bit of consistency. David Warner would be licking his lips, because he knows that he can smack any left arm bowler out of his senses, and that is what is happening since 13 years, because David Warner made his debut at MCG 13 years ago against South Africa, against Dale Steyn, Morley Morgels, Sean Abbott, Kyle Abbott, and now look at him doing the same in his 100th test match, and David Warner is screaming for 3. He has taken 3 runs in. What are the chances that Australia will score 300? I think Australia will definitely score 350. There's a lot of time left in the game, and there is a lot of time that we actually want you to spend with us, because we'll also be doing commentary in the Pakistan and New Zealand match, and if you'll be around, things will be even better. We have not had more subscriptions from you. Where are your subscriptions? Please subscribe to us. We'd really, really love it. And I would like to bring this English commentary more often, because Hindi commentary is everywhere, and मैं भी हिंदी में commentary कर सकता हूँ, but I would love to do it in English, and English commentary is very tasteful. And another 2 runs taken here by David Warner. Keshav Maharaj has been brought on to bowl. The first introduction of spin this morning, and it has come at a cost. 3 runs have been taken, and all of you are welcome if you're from Delhi. So I think you must be in your quilt, in your kambal, in your blanket, in your rajai, because you cannot really come out of it. It is so cold, because we are not really expecting temperatures to be so less. It was very cold last night. Even now it is very cold outside. I just checked like a couple of hours ago when I woke up to do this live stream. How are you guys? How are you doing? If you're fine, I'm really happy. If you're not, I am slightly sad. You can share your problems with us. You can share your thoughts on cricket with us. You can actually speak with us on a live chat, and you can, of course, you will, of course, not can, have to vote on the poll. The poll says, will Warner hit a century in his 100th test? And what a good ball here by Keshav Maharaj, bowled right at the stumps, and he had Steve Smith in some bit of trouble. But this was good bowling eventually. Very, very good bowling. The scoreboard now reads 121 after 31.3 overs, and that's been flicked away towards the leg side. 1 run taken very, very quickly. David Warner on strike. David Warner has reached mid-80s. He's at 84. He needs just 16 more runs. Will he score a century or not is a poll that we had begun. We had started
हमने एक पोल शुरू कराया था जिसमें हमने पूछा था कि क्या डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट मैच में अपना शतक लगा देंगे, क्योंकि 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात है, उसमें शतक लगा देना, ओहो, ये तो फिर मतलब सोने पे सुहागा हो गया। इतना फोकस है उनमें, जरूर लगाना चाहेंगे। Nicely bowled by Keshav Maharaj once again. Keshav Maharaj is slowing the ball up slightly little, but he needs to understand that on this pitch you have to bowl slightly faster than usual. So we are watching this match here right now. The score is 122 for 2, and that's been played away on the leg side. No real run taken. And what we really realize is that spin is very important, but for spin to actually take place, pitches need to be suitable for spinners. And if you're watching us for the first time, you can subscribe to us, because we'll be bringing live commentaries from matches that do not involve India, Pakistan and Bangladesh. In all other matches, we'll try to do English commentary only, and that is something that I love to do. And this match has been completely in favor of Australia. South Africa felt like 9 pins in their batting innings, and somehow the collapses did not end. But a very good partnership, a very hope-giving partnership between Marco Jansen and Kyle Verreynne. Kyle Verreynne scored a 50, Jansen scored a 50, but both then got out because I think, of course, they are not good batsmen and they also got good balls. I yawned again, oh my god. Is it because I woke up so early? Is it because you people not subscribing? Yeah, come on, please subscribe. Show some love, because subscription does not cost any money. It only costs your love and affection. If you can do that, I'll be really happy. And we've got 1 subscription. Can we have 2-3 more subscriptions, please? If you can possibly do that, I would be very happy, guys. Please subscribe. And most runs for Australia. Ricky Ponting leads that tally, and David Warner is at number 8 in the most runs scored for Australia in Test cricket. Let's see that once again, if we are able to see at the table who scored the most runs for Australia. I think Michael Clarke would be one. There is of course the case of Steve Waugh. There is of course the case of Matthew Hayden, Adam Gilchrist, Ricky Ponting. Who else? We are being shown the Shane Warne stand. Shane Warne of course belongs to the state of Australia, Victoria, and he lived in Victoria, in Melbourne. And there is where the match is happening. Oh, that's a good ball. Very good ball outside the off stump. Steve Smith wanted to smack it on the offside, but could not really connect anything with it, and it went straight into the hands of the keeper. And this was a very good ball. You've got to appreciate Marco Jansen. He's trying to create chances. He's trying to create those chances that do not really exist otherwise on this pitch. But if you can bowl reverse swing, then there's a lot that you can do on this pitch, on this wicket. And we are watching this test match between Australia and South Africa with you doing English commentary, and that's been pulled away towards mid-wicket, and that must be a boundary. Steve Smith has taken some bit of revenge from the last 3 to 4 overs that he has been facing from Marco Jansen. Marco Jansen has bowled beautifully at him. He has just moved the ball well. He has brought the ball right to his pads. He has bowled him a couple of good outswingers from round the wicket, and then do you realize that he also bowls a very mean bouncer. He is a 6 feet 7 inch tall lad, so that is what you expect out of him. Hello and welcome everybody. You're watching the scorecard. What we really require rather is a subscription from your end. If you could really subscribe us, I'll be really happy. And if you could really do that, I mean, it would possibly make my day. So we are only at 672 subscribers. We would want more, because I think we deserve more. We are good commentators. And that's a good ball. Once again, bounced really well, and Steve Smith was right under it. He did not want to really touch it, and the score moves to 126, just 63 runs away from South Africa's total. South Africa, of course, left a lot of runs on the pitch. They should have batted till the end of the day, and not till the end of the day, but I mean some bit of the day had to be batted out for, but they should have got till at least to 70-80. That would have been slightly more intimidating to this Australian lineup, which is very good at batting, and that's been played away on the offside, carved away on the offside for another boundary. My god, this Steve Smith is not stopping at all, and he has to, show some mercy to the grounds, and if that is possible, Steve Smith scoring boundaries at will. What a cut shot. He just rode the bounce on his toes and he cut the ball right in the gap for a boundary.
He's playing some brilliant cricket, this boy Steve Smith. And Azim Kayani, hello everyone. Azim's here. Hi Azim, how are you? Where are you from, man? And I really appreciate that you have come here. And the fact that you will be with us is a matter of joy for us. And that's a good ball once again, leaving the right-handed Steve Smith, who leaves the ball on its way to the keeper. How are you doing, Azim? And are there more people around? If there are more people, please come here, talk to me, and we talk about cricket, cricket's discussion, cricket's talks, and cricket's disagreements are very important. I love to disagree. cricket की गुफ्तगू, cricket की बातचीत और क्रिकेट की रायशुमारी बहुत ज़रूरी है और हम ज़रूर साथ में बात करेंगे तो मज़ा आएगा. And Azim Kayani is here. Azim, where are you from? If anybody else wants to speak with us also, please join the live chat. We'd have a good word with each other. I love to speak with English में क्रिकेट की बात करने में मज़ा तो आता है, लेकिन I would love to speak with you people. Sleep बोल रहा हूँ. I don't want to sleep with you, no. आपसे क्रिकेट की बातचीत, क्रिकेट की गुफ्तगू और क्रिकेट की रायशुमारी करने में बड़ा मज़ा आता है. तो आप अगर यहाँ पर हैं तो ज़रूर हमसे बात करिए और बताइए आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है. और आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई तो. 131 पर 2 हो गया है, 131 for 2 on the board, and Dean Elgar is making some quick changes because time for lunch is arriving. The lunch will happen in the next 10 minutes. 10 minutes means 3 overs, I mean 2 more overs after this one, and that's nicely bowled. Steve Smith just pushes it towards long on. Steve Smith just pushes it towards long on, and one more run taken. I think they're batting beautifully well. What needs to be realized is, can the South Africans get reverse swing? If they can get reverse swing, there's nothing like it. If they cannot really get reverse swing, then of course they'll have to take different methods, different routes to take wickets. Because reverse swing is one of the best methods to take wickets. And we saw it in the previous innings, how Mitchell Starc and Scott Boland tried to utilize reverse swing, and they also did really well. Some decisions also didn't go in our favor, otherwise we would have really enjoyed it. Azim Kayani, hello everyone. Azim, you have not spoken anything after that. And if you're watching us for the first time, please subscribe to us. We'd love your company even more if that is possible. And that's a good ball once again, played on the offside. David Warner is very well settled, and the score that he is, and he would want to score more and score at least 150 here because he's batting on 85. 150 does not seem far away, and that's a decent delivery right at the stumps, not giving David Warner any room which he would have otherwise required. And this is a very good ball rather. What's happening on Boxing Day Test matches? Everybody's interest. All of us want to watch what's happening on the Boxing Day Test. And oh God, another defense. David Warner, we have come here to just see you bat and play and score runs, not defend balls. But why are you doing this? Is the bowling so good? Why are you not England? Why are you not playing like England? England is dhasu. England is dhamakedar. England is a team of excellent cricketers that are fearless. Who are fearless and who know a thing about or two about attacking. Can you please subscribe to us? I mean, I would really appreciate if you could do that. I know I'm repeating it far too often. It just, hits you back of the head that if people can subscribe to you, things will get better. So please subscribe. I mean, just help me out, just support me, and just probably become my friend and speak with me on the chat. And also vote on the poll that we have begun. Will Warner score 100 in his 100th test match? What an achievement would that be? Very good achievement. Next over coming in from Marco Jansen. Oh, what a ball. It just pitched outside the off stump and left Steve Smith, who just kept hanging his bat, and he could do nothing about it. Very good ball here by Marco Jansen. And there is only 2 overs to lunch, one by Marco Jansen and another, I believe, by Lumi Ngidi. And uske baad, after that, we'll have lunch, and then we'll resume the commentary after that. Hello and welcome everybody. I hope you're doing well. I hope you're doing good. And this is exactly what I would want to see from South African bowlers. Some bit of movement, pitching the ball up, and not so of Marco, and just bowled it outside the off stump. Wide bank diya, although you are alone. But I think we must appreciate Marco Jansen's brother, Duan Jansen.
Duan Jansen has been selected to play in the IPL, which is absolutely stunning. He has now earned some money and he is being recognized around the world. Marco Jansen is already a player in the IPL. The umpire signals wide because it was too wide. In Test cricket, if you bowled a wide, just imagine that it was too wide. It was supposed to be a wide. You cannot really question it. And that's a good ball once again. Nothing really happened of this one. And we are running towards the business end of this session. This session completely belongs to Australia till now because Australia has lost only one wicket and scored a lot of runs. This session does not really belong to South Africa. But each session is very important. Watch other sessions with us as well if you really love people around watching cricket and talking about cricket. What a ball! What a ball! And that's an appeal. Did it hit the pad first? My God, we got to wait for this. This was unbelievably good. From round the wicket, Marco Jansen just hits the pads on the full, and the umpire has been asked to take a DRS. It's a DRS. Dean Engelger has taken a DRS, and let's see what's in the bank for the young Steve Smith. He's not young, but I would just want to call him young because he looks younger than David Warner. And that's a full delivery and it swung in. That's called reverse swing. Oh, it hit the bat. Or did it hit the pad first? It brushed the pad and hit the pad. First it hit the pad, I believe, and then it hit the bat. It is pad bat. First it hit the pad. Let's see what's the impact. The impact is, outside, not out. The impact is outside of stump, so the umpire has given a good decision. It's not out, but the ball has suddenly started to reverse. The ball is reverse swinging, and when the ball starts doing the reverse swing, it's very difficult to face, and the Australian players will actually face this problem. It will not be very easy to face Lungi Ngidi and Marco Jansen, both of whom who love bowling reverse swing. Hello and welcome everybody. If you really like and support us, can you please give us a subscription? If you can really do that, I'd be really appreciative because I come from Delhi, Gurgaon, and it's been extremely chilly this winter and I had to wear so much today and I'm not really happy wearing all these layers of clothing. There's a sweater inside, there's this jacket, there's this muffler, these gloves, the socks. Oh God, I'm freezing like an Eskimo, but I'm still trying to be with you and share the scores with you and share some insights into this match and the commentary, and that too in English, despite Hindi being my first tongue, my first language. So if you're watching us, I am really glad that you are doing that. And Steve Smith is playing with David Warner here, and oh God, my God, that could have been wicket once again. Duan Jansen is bowling some good balls here, right outside the off stump, but it was too pacey. And Steve Smith wanted to drive it along the ground, but he does not connect. He could not connect to this rather. What a ball once again, and I am really enjoying this contest. And this contest has brought me back to those days of good bowling, good test match bowling. Wonderful, wonderful bowling here by Marco Jansen, who has his hands on his heads. And before the lunch begins, in the next 4 minutes, I would want that you please give me 2 more subscriptions, because then I will tell you a story that I have been promising to tell you. So please listen to that. Even if there will be only 2 people who just subscribe to me, I would also speak for them. Please subscribe to me, and I would be very, very happy with that. Anyway, Australia are far ahead in this match right now. I mean, sooner or later, South Africa will have to take 2-3 quick wickets. Very, very quick wickets. But those quick wickets, where do they come from? Because these 2 players are not leaving any stone unturned to just stay there for their entirety of life. I mean, why are these players not getting out? The pitch is so easy. But reverse swing, we've just started seeing reverse swing, and it will be very, very interesting to see how do the South African bowlers bowl reverse swing. I forgot to switch on the charger to my phone, my God. Very, very well bowled. Warner is playing on 85, and yesterday only I was watching this clip where Mark Nicholas was doing commentary was with Shane Warne, and David Warner was playing on 97, and Nicholas says that Warner has never been out on 19-7, and then he gets out the very next ball. Very, very funny bit of commentary. Nice ball once again.
and Keshav Maharaj is bowling really, really well. If you could really like us, subscribe us, we'd really appreciate it. And we would just feel blessed and happy that there are people who like to listen to the match with us. ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हमारे से मैच सुनना चाहते हैं. इस बात की पुष्टि हो जाएगी और अच्छा लगेगा मुझको. अच्छी गेंद एक बार फिर स्टंप्स पर कराई हुई और डेविड वार्नर थोड़ा पेशेंस दिखा रहे हैं. डेविड वार्नर इज शोइंग सम बिट ऑफ पेशेंस हियर एंड ही वांट्स टू प्ले अ लॉन्ग बिग नॉक एंड दैट इज ओनली पॉसिबल once, only once. YouTube just stops all other channels. Anyway, please subscribe to us and I would really appreciate if you're able to do that. This is probably the last over before lunch and that is why David Warner is having this cautious approach. He's not trying to do anything extra. He's just trying to defend the ball and do nothing else. See here, he tries to drive the ball and drives it really well. One run taken too quickly. Why have you kept the fielder so far back in around the mid off area that they are able to take a single so easily? It was there to specifically save singles and also take a wicket if the catch arrives. Last 2 minutes, rather 1 minute before the lunch happens, and after that we'll have a slight bit of discussion as to how the first session has really carried forward. I'll be really looking forward to your company and your subscriptions. Please subscribe to us. We'd really be happy to see that. And it's a matter of great joy to bring you this coverage with English commentary and nicely bowled. My God, it had some bounce. This had some bounce. Nicely bowled once again. And I believe this is lunch for the day. Yes, the umpires have taken the bails out and it's lunch for the day. And the match will resume in 40 minutes. And this is the beauty of Test cricket, that a match can actually resume after some time. Because some people do not know what lunch and tea is all about. Lunch means that there's a break. You have played for 2 hours. Now there's a break. Sit in the draft room. I'm in the dressing room. Have some coffee. Have some tea. Rejuvenate yourself. Eat a little bit. All the fruits. All the protein. Come back with a plan and execute those plans. That is why it is very important to have something called a staff room or a meeting room. How are you guys? Where are you from? If you can actually tell me, then we can talk a lot. And if you can actually give me a subscription, then things will be even better, because subscription does not cost a lot, and I think I will do a very good job when you are on YouTube. I will make sure that you're happy. I'll make sure that you enjoy your stay here. Just give me 2 more subscriptions. I'll be very, very happy going into lunch. And you only have time of next 2 minutes. And after that, we'll be discussing how the first session went. The first session began 2 hours ago, and the 2 batsmen playing that session were Manas Labuschagne and David Warner. And they both were playing really, really well, except for 1, 2, 3 deliveries, if I can remember. They were bowled extremely well by Zarka Adam, because Zarka scolded some people and it was not really nice for them. And then we had other things to do, but okay. We'll come back after half an hour to restream. After half an hour, we'll come back. You can stay here. You can listen to us, talk to us if you want any answers to some of your questions. I'm ready to answer you on those. And this test match is well poised because Australia is now leading. I mean, not leading by any score, but I think they are the most rated team in this test match. South Africa will not be given a chance because Australians are ruthless. And if you can give me a few subscriptions with this ruthlessness, I'll be very, very happy if you can do that. But we do not have more subscriptions than merely 3 to 4 subscriptions before this test match. Please give me more subscriptions. I'll be very happy. And then I will also narrate you a story. The fact that all of us are together is very, very well meaning to me. I really like that, and I would want to appreciate you people for being here and supporting me and being with me for the toughest of times. It is not something that is very easy. It is something that is very beautifully difficult to deal with.
था। अभी 10 मिनट के लिए सो रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं किया जाए बाद में चाय या बाद में बना लो।
कार्ड नहीं चल रहा। अपडेट अपडेट। Hello and back. I am back again with the scorecard update, and not only just update, we'll be having match commentary also. आप लोग कैसे हैं? मुझे आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी लगता है, बहुत आवश्यक भी, क्योंकि अगर आप ना हो तो मज़ा किस बात का। तो मज़ा तो होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आगे लेके जाता है, क्योंकि अब तो सारे पत्ते ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही हैं। अगर साउथ अफ्रीका ने अच्छा मैच खेला भी, इवन इफ दे कम बैक, आई एम नॉट श्योर वो कितनी अच्छी कम बैक कर पाएंगे, because Australia is actually moving forward at a very very good pace. The scorecard behind me is not showing the right scorecard actually. The correct scorecard is going to be updated soon, because the current score is at least twice of this, and we are trying to bring in the English commentary here, although I'm not sure which commentary would you appreciate and like. If you tell me the commentary that you would like to listen to, I'll be very happy to do that kind of commentary. Please tell me in the comments section, do you want Hindi commentary or English commentary? आपको जो भी commentary चाहिए हम आपको वो देंगे। स्कोर हो चला है 136 पर 2, और डेविड वार्नर खेल रहे हैं 86 पर, और 20 पर खेल रहे हैं स्टीवन स्मिथ। How are you people? How are you? Please tell me. Good morning everybody. We are from Gurgaon, Haryana, and we are bringing this live commentary stream to you, and we are very happy to tell you that we were sitting from 5 a.m. in the morning till 7, and then we had a break of 20 minutes, had a little bit of breakfast, and the tea is just about to arrive, and then we'll begin with the tea session, the post lunch session. And it is upon you. If you want the commentary should be in English, it will be in English. If you want the commentary should be in Hindi, it will be in Hindi. Anything that you want, anything that you propose will be taken care of. And I only want one thing from you, is that you must stay with us and we must enjoy together. And if need be, the most important aspect is your subscriptions. अगर आप सब्सक्राइब कर सकें तो हमें और अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा हो भी जाए तो। खैर, आप लोगों का स्वागत है, आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड, और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आपके साथ हम बरकरार रहें और देखते रहें एक दूसरे की शक्लें, और एक दूसरे से बातें कर सकें। क्रिकेट की गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट की गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप अगर यहाँ पर हैं तो इस बात का हमें कोई मलाल नहीं है, हमें इस बात की खुशी है कि आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल गया है। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में ठंड बहुत पड़ गई है, अपने कपड़े ठीक से पहन के चलें, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि बहुत हैजार्डस ठंडा पड़ा है, और इतने ठंडे में जान भी जा सकती है। और सुबह जब मैं कमेंट्री करने बैठा, आई वाज जस्ट वेयरिंग अ स्वेटर, बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड एंड आई टुक अ 2 मिनट ब्रेक। और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं फिर अपनी जैकेट, अपना मफलर, ग्लव्स वगैरह सब लेके आया। अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, अब चाय वाय आएगी तो अच्छा लगेगा। सर्दियों के दिनों की खास बात यही है दोस्तों, सूरज तो निकलता नहीं है, और कुछ लोग तो वैसे ही ईद के चांद होते हैं, वो भी नहीं निकलते, लेकिन मैं और आप तो हर रोज निकलते हैं, रोजाना निकलेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और क्रिकेट देखेंगे साथ में। इस समय ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रगल तो नहीं कर रहा, साउथ अफ्रीका की ऐसी की तैसी कर रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, और हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और बरकरार रहें। मेरी आपसे यही दिली ख्वाहिश है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू अस, इफ़ यू आर वॉचिंग अस, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अस। वी विल रियली रियली लाइक इट, एंड देन वी विल पॉसिबली हैव मोर। क्या हुआ? मम्मी मैं बीच में होता हूँ, कैसे जवाब दूं यार?
यार सुबह होती रही है, कभी ये काम कभी वो काम, दूध लेके आने का बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। दूध ले आओ, चाय कैसे बनेगी, अब आप लोग समझ ही सकते हैं सर्दियों में घर वालों को क्या चाहिए होता है। खैर, मैच शुरू होने वाला है और 5 मिनट रह गए हैं दूसरे सेशन की शुरुआत में, और हम लोग आप लोगों के साथ बरकरार हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए लेके आ पाएँ इस मैच की अपडेट्स और मैच के स्कोर्स। कोशिश तो बरकरार है, बाकी आप अगर हमारे साथ बरकरार रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मेरी यही आपसे एक दरखास्त है कि प्लीज़ पूरे कपड़े पहनिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़ाकेदार ठंड है भाई, पूरे कपड़े पहनिए, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में आप लोग बीमार पड़ सकते हैं। दिल्ली में खास तौर पर, जहाँ से मैं आता हूँ, दिल्ली गुड़गांव से, यहाँ पर तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू करी है वार्निंग कि अगर आपने ढंग से कपड़े नहीं पहने तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और जान भी जा सकती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर एजड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, आप सबका ख्याल रखें। सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है। अभी तो खैर हम मैच की बात कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे से बातें करें। आप भी हमसे क्रिकेट की रायशुमारी, क्रिकेट की बातचीत, क्रिकेट की बहसबाजी और क्रिकेट की गुफ्तगू कर सकते हैं। हमको क्रिकेट के ऊपर बात करना बहुत पसंद है, एंड मोर देन दैट we will be happy to do commentary in any language. If you want us to speak in English, I will do it in English. If you want me to speak in Hindi, मैं आपसे हिंदी में commentary की बात करूंगा, लेकिन वो सब आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे हम वैसी बातचीत करेंगे। और इस समय आप देख रहे हैं, कोशिश यही रहेगी कि हमारे साथ जितने भी लोग बरकरार हैं उन सब का ख्याल रखा जाए, और आप भी हमारा ख्याल रख सकते हैं। आपका इजहार मोहब्बत हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैच का सूरत हाल कुछ यूं ही है, साउथ अफ्रीका ने बहुत कम रन बनाए। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी कुछ खास नहीं करके दिखाया था बल्लेबाजी में, और दूसरे टेस्ट मैच में तो आप सोचिए कि पिच बहुत अच्छी है बैटिंग करने के लिए। जब नंबर 7 का आदमी आगे 50 मार सकता है, मार्को जैनसन, जिस बेचारे ने 7-8 मैच खेले हों, जब वो भी स्टार्क, कमिंस, बोलैंड, नेथन लियोन, कैमरन ग्रीन के सामने 50 रन मार सकता है, तो जो बल्लेबाज है वो क्यों नहीं मार सकते। तो पिच तो बहुत अच्छी है, और पिच अभी भी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग देखने को मिला था पिछले सेशन में, टुवर्ड्स द एंड बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे मार्को जैनसन और लुंगी एंगीडी, और वो रिवर्स स्विंग देख के बड़ा मजा आ रहा था। उसके अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिला है, अगर आप मुझसे पूछे तो। मेरी ज्यादा सोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस पिच पे रन लगने वाले हैं, और कम से कम 350 रन मारेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, 350 तो रन बन ही जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक। And if you want commentary in English, you can tell me. If you want commentary in Hindi, you can tell me. Please tell me in the live chat section. Any 2-3 comments initially will be taken care of. I would understand what you people would require. आप लोगों को क्या चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझे तो यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मैच देखते रहें और मैच की बातें करते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी यही है कोशिश करना कि क्या हमारा यहाँ पर जो रुझान है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच का वो ठीक जाएगा या नहीं। और इस समय हम थोड़ी सी तकलीफ में ज़रूर हैं, क्योंकि हमारा एक जो बहुत ज़रूरी पुर्जा है और वो पुर्जा थोड़ा सा अलग है, वो ठीक हो जाए तो उसके बाद मसला और आसान हो जाता है। आप लोग कैसे हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, और इस समय मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकूं। और क्रिकेट की बातें बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं, और ये बहुत एक निर्णायक पल आ चुका है हमारे दिन में। और निर्णायक पल ये है कि हमें 2 मैच कौन से करने हैं यार। बिग बैश लीग भी है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी है। आप बताएं कि कौन सा टेस्ट मैच हमें कवर करना चाहिए, और उसको बताने से पहले हमको आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहेगी, और उससे ज़्यादा भी बेहतर अगर आप हमको लाइक कर दें और हमसे कमेंट्स में बात करें। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा हुआ है कि विल वार्नर हिट अ सेंचुरी इन हिज 100th टेस्ट मैच, तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या वार्नर सेंचुरी लगाने वाले हैं अपने 100th टेस्ट मैच में। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप येस लिख सकते हैं, आपको नहीं लगता आप नो लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। एंड इफ़ यू वांट मी टू डू इंग्लिश कमेंट्री यू कैन ऑफ कोर्स आस्क दैट। इफ़ यू वांट मी टू डू हिंदी कमेंट्री यू कैन आस्क दैट टू। तो आप बता सकते हैं कि मुझे क्या कमेंट्री करनी है। और अभी कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है दूसरा सेशन, और दूसरे सेशन की शुरुआत होते होते हम लोग और आप लोगों का साथ बरकरार रहेगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मुझे मलाल बस एक बात का है कि आप सब लोग 5 बजे नहीं उठते।
आप लोग 5 बजे उठेंगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं 5 बजे उठ के आप लोगों के लिए बैठा रहता हूँ कि आप लोग आएंगे और आपसे बातचीत होगी, लेकिन आप लोग काफ़ी लेट आते हैं। और दिल्ली में सर्दी का जो सूरत हाल है वो थोड़ा ठिठुरने वाला है, ठिठुर देने वाला है, सिकोड़ देने वाला है, क्योंकि मैं जब सुबह बैठा तो बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। और फिर मैं स्वेटर में था, फिर मुझे लेके आनी पड़ी जैकेट, और लेके आना पड़ा मफलर, और लेके आने पड़े ग्लव्स, और सब चीज़ों के साथ अब मैं बैठ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का साथ जब तक बरकरार है तब तक ज़िंदगी में गर्माहट भी है, और ज़िंदगी में दोस्ती भी है, याराना भी है। तो आप लोग भी हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लगातार आप लोगों से अगर बातचीत होती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और दूसरा सेशन अभी शुरू होने वाला है बस कुछ ही पलों में, और आप लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। सेशन में क्या होगा ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको देख पाएँ और हमसे जुड़ पाएँ। इससे अलग मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, हम YouTube पे शॉर्ट्स भी करते हैं, तो आपको अगर हमारे शॉर्ट्स देखने हैं आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार कंटेंट है वहाँ पर भी, आपको अच्छा लगेगा देखकर, क्योंकि उसमें थोड़ी हंसी मजाक की चीज़ें ज़्यादा हैं और वो भी मज़ेदार होती हैं देखने के लिए। तो आप हमारे स्कोर कार्ड की प्रोफाइल में जाके वहाँ पे शॉर्ट्स पे क्लिक करके आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। करीब 20-25 शॉर्ट्स हैं हमारे, छोटी छोटी वीडियोस हैं 15-15 सेकंड की। अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो भी देखिए और हमें बताइए कि हम किस तरह और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर करने में, क्योंकि आप ही हमारे लिए इस समय कंज्यूमर्स हैं। तो जो भी आप चाहेंगे वो हम करना चाहेंगे क्रिकेट से ताल्लुकात रखने वाली चीज़ों के बारे में। और इस समय हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों से मेरी एक ही दरखास्त है कि एक तो टेस्ट क्रिकेट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट देखें। बहुत कम लोग टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं आजकल, तो आप लोग उन कुछ चुनिंदा लोगों में से बनिए जिनको टेस्ट क्रिकेट समझ आता है। और उसके अलावा आप लोगों से एक ही दरखास्त है, अगर आप हमें सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैच शुरू हो चुका है, स्कोर है 136 पे 2, और पहला ओवर डालेंगे यहाँ पर ऑनरिक नॉकिया, और पहली बॉल डाल चुके हैं डेविड वार्नर ने। पहली बॉल को डिफेंड कर दिया है डेविड वार्नर, अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डेविड वार्नर इस 100वें टेस्ट मैच में अपना 100वां लगा देंगे? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि डेविड वार्नर बड़ी अच्छी फॉर्म से तो गुजर ही रहे हैं। उससे ज़्यादा बेहतर बात यह है कि पिच बहुत आसान है, पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे डेविड वार्नर थोड़ी चिंता में आ जाएंगे। लेकिन ये बॉलिंग चेंज किस तरह का है मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इस बॉलिंग चेंज में एक चीज नजर आ रही है, और वो है कि ऑनरिक नॉकिया पेस के जादूगर हैं। पेस के मतलब बहुत तेज बॉल डालते हैं, जैसे ये बॉल डाली बहुत पेस, लेकिन इसको पुल कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन मिलेगा, लेकिन उनको स्विंग नहीं मिलती है। और रिवर्स स्विंग करानी बहुत जरूरी है, रिवर्स स्विंग करानी बड़ी आवश्यक है, और अगर उनको स्विंग मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, स्विंग मिल नहीं रही है। और आप लोगों के साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और डू यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में कमेंट्री करूँ या हिंदी में कमेंट्री करूँ? वट एवर इज सूटेबल टू यू प्लीज़ लेट मी नो। मुझे दोनों में ही उतना ही कंफर्ट है और उतनी ही आसानी है, मैं दोनों में ही कमेंट्री कर सकता हूँ। आप लोगों को जहाँ ज़्यादा बेहतर लगेगा हम वो काम करेंगे। और साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर इस बार कोशिश ज़रूर करके आएंगे। लंच ब्रेक में से अपने टीम मैनेजमेंट के साथ बैठे होंगे, खाना खाते वक्त, सलाद वलाद खाते वक्त बोला होगा कि बताओ यार क्या करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे हैं। वो तो गलती से मार्नस लाबुशाने रन आउट हो गए। डेविड वार्नर 1 रन बनाने के चक्कर में अपने बेचारे छोटे से भाई मार्नस लाबुशाने को रन आउट करा गए। ओवर थ्रो पे भाग रहे थे जबरदस्ती, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ओवर थ्रो पे आउट हो गए। और ऑनरिक नॉकिया डाल रहे हैं पहली गेंद लंच के बाद स्टीव स्मिथ को, बहुत दूर है स्टंप से, स्टीव स्मिथ ने छोड़ दिया, आराम से जाने दिया उस गेंद को। और हम इस समय पी रहे हैं चाय, और चाय पीते पीते हम आपको बताएंगे कि मैच का सूरत हाल क्या है। और टेस्ट मैच की खास बात यह है कि 5 दिन तक चलता है, और उसके साथ साथ 15 सेशन होते हैं। 5 दिन में 15 सेशन। मैच की बदलती सूरत कैसे होती है, पिच के बदलते हालात कैसे होते हैं, बॉल के बदलते हालात कैसे होते हैं, मौसम का बदलता मिजाज क्या होता है, सब बताता है टेस्ट क्रिकेट में। रिजल्ट कैसे आएगा, देखो मौसम जैसे जैसे बदलता रहता है ना, बॉल में स्विंग बदलती है, और वो बहुत जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट तभी तो खूबसूरत है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और ये अच्छी गेंद एक बार फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, इसको पंच कर दिया गया स्टीव स्मिथ के द्वारा। जब बॉल की सूरत बदलती है तो बॉल की मूवमेंट बदलने लगती है, नई बॉल और मूव करती है, बल्ले से भी तेज निकलती है। जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाती है उसकी एक साइड शाइन करते जाते हैं। स्पिनर्स को पुरानी बॉल से ज्यादा मदद मिलती है। फिर जैसे ही एक साइड आप शाइन कर देंगे तो आपको रिवर्स स्विंग मिलने लगेगी। मौसम के बदलते हालातों से अगर बादल आ जाए आसमान में तो स्विंग बढ़ जाती है।
अब आप सोचिए कि ऐसा और किस खेल में हो सकता है, किसी भी खेल में नहीं हो सकता। पिच अगर बदल जाए, चौथे पांचवें दिन की पिच जब टूट के बिखर जाती है तो वहां पे बल्लेबाजी करनी मुश्किल हो जाती है। स्पिन को तो आप खेल ही नहीं सकते। अभी आप देखेंगे जो कराची में टेस्ट मैच हो रहा है ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें ऐसा ही होने वाला है। और ये बाउंसर है, उस बाउंसर पे शॉट लगाने की कोशिश की और ये कीपर के ऊपर से निकल गई। क्या बात है भाई, यहाँ तो तगड़ी क्रिकेट हो रही है। ऑनरिक नॉकिया ने ये बाउंसर करी बिल्कुल हेलमेट के ऊपर से निकलती हुई स्टीव स्मिथ की। उन्होंने उसमें बल्ला जरूर लगाया लेकिन बहुत मुश्किलात में पड़ गए थे। टॉप एज लेके कीपर के ऊपर से निकल गई ये बॉल। क्या बॉल थी, शानदार बॉल। यहाँ पर स्टीव स्मिथ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे। और मैं बात कर रहा था जब चौथे और पांचवें दिन की विकेट होती है तो वो विकेट से बिखर जाती है, और उस बिखरी हुई विकेट पे जब स्पिन गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाजी आप कर ही नहीं सकते। मजा ले किसी की पैर आगे निकाल के कुछ शॉट खेल दे, हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा हो जाए तो आप खुद सोचिए कितना कठिन भरा समय होगा। और एक और चौका लग चुका है, यहाँ पर 4 रन हासिल किए हुए हैं स्टीव स्मिथ ने। 141 हो चुका है टोटल, 141 पर 2 पर खेल रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया। और बहुत आसान पिच है, एक और सिंगल ले लिया बहुत तेजी से और धीरे धीरे। जो वैसे क्विक सिंगल्स लेती रही ऑस्ट्रेलिया तो फिर कंधे डाउन हो जाएंगे सभी क्षेत्र रक्षकों के, मतलब फील्डर्स के। सी दिस इज व्हाट हैपेंस इन हिंदी। इफ आई कंप्लीटली गो इनटू हिंदी आई विल बी वेरी वेरी हिंदी एंड देन यू विल से यार फील्डर्स को भी क्षेत्र रक्षक बोल रहा है। तो फिर तो मुझसे इंग्लिश में कमेंट्री करवा लो, तुम्हें जैसे करना है वैसे करवा लो, मुझे मजा बहुत आता है तुमसे बात करने में। और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज हम न केवल ये मैच करेंगे, इसके बाद हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच में भी कमेंट्री करना चाहते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें लाइक कर सकते हैं और आप हमारी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियोस हैं, 15-15 सेकंड की मजाक भरी वीडियोस हैं। वो भी आपको जरूर पसंद आएंगी अगर आप देखने बैठेंगे तो। और मेरी आपसे ही आशा है और मेरी आपसे ही उम्मीद है कि अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमें देखिए और इन्जॉय कीजिए हमारी कंपनी और हमारी कमेंट्री। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारी बातें सुनकर। एंड आई वुड लाइक टू डू सम बिट ऑफ इंग्लिश कमेंट्री, सम बिट ऑफ हिंदी कमेंट्री, थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत हिंदी। इस चीज़ का मेलजोल चलता रहना चाहिए। और स्टीव स्मिथ ने आगे बढ़ के छक्का लगा दिया है। केशव महाराज ने फ्लाइटेड गेंद डाली एंड स्टीव स्मिथ डांस्ड डाउन द ट्रैक एंड लॉन्च्ड इट ओवर लॉन्ग ऑन फॉर अ बिगी। दैट्स अ 6। 6 रन लगा दिए और स्कोर हो गया 148 का। प्लान्स हमें लग रहा था साउथ अफ्रीका बना के आई है, लेकिन प्लान्स तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ बना के आए हुए हैं। शानदार शॉट, व्हाट अ शॉट। Very very attacking batting here from Steve Smith and again on the next ball he just defends the ball। उन्होंने अगली बॉल पे बस डिफेंड कर दिया, कोई खास उनको नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिला। क्या बात है स्टीव स्मिथ, टेस्ट क्रिकेट के तो नामी खिलाड़ी हैं भाई, उनसे ऊपर कौन है टेस्ट क्रिकेट में। और अगली गेंद आते हुए, ये भी अच्छी गेंद, खींची हुई गेंद थी, इस पर भी डिफेंड कर दिया स्टीव स्मिथ ने। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो जरूर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपका साथ बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। तो बहुत मजा आएगा आपके साथ बैठ के मैच देखने में। और एक बार फिर आगे बढ़े स्टीव स्मिथ, लेकिन आउट हो सकते थे, बॉल मारने वाली थी नहीं, आगे बढ़ गए और उस पर शॉट लगाना चाह रहे थे, बस थोड़ा सा बच गए। वरना जो शॉर्ट लेग का फील्डर होता है ना, सिली पॉइंट का फील्डर होता है, जो बल्ले के आसपास होते हैं, वो कैच पकड़ जाते हैं। ओ नाइसली बोल्ड, एक और अच्छी गेंद, ये थोड़ी खिंची हुई गेंद थी, इसको बैकवर्ड से पंच कर दिया केवल स्टीव स्मिथ ने। बहुत कम नजर आता है कि स्टीव स्मिथ ऐसा जोखिम भरा शॉट खेलें, वो भी जब वो 19-20 रन पर ही खेल रहे हो। लेकिन अब तो 32 हो गए हैं स्टीव स्मिथ के, 32 रन हो गए स्टीव स्मिथ के और 87 पर खेल रहे हैं वार्नर। क्या वार्नर का 100 हो पाएगा? 100वां टेस्ट मैच है उनका। कितना बड़ा यहाँ पर एक मतलब वो कारनामा कर देंगे अगर अपने 100वें टेस्ट मैच में 100 रन वो लगा पाए। उनसे पहले भी कुछ बैट्समैन ने यही काम किया है। एक तो 100 मैच खेलना बड़ा डिफिकल्ट है, हर किसी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि 100 मैच खेलने के लिए जो फिटनेस चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए और जो कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्म चाहिए, अच्छी फॉर्म में आप बरकरार रहेंगे तभी तो 100 टेस्ट खेल पाएंगे। उसके अलावा आपको कब मिलेगा खेलने को। और यहाँ पे आप स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखें तो क्रीज का पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए कभी आगे आ रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, तो स्पिनर को ठीक जगह पर ना गेंद डालने नहीं दे रहे हैं। केशव महाराज वो तो खैर बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरह अपनी लेंथ को वापस बचाना है और किस तरह लगातार बॉल एक टप्पे पर डालनी है, वो उनको मालूम है। लेकिन उसके अलावा भी स्टीव स्मिथ कोशिश कर रहे हैं कि केशव महाराज को थोड़ा सा हिलाया डुलाया जाए, क्योंकि केशव महाराज अगर सेटल हो जाएंगे तो रन स्कोरिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे बॉलर हैं, कसी हुई गेंद डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है इज टाइट बॉलिंग। एंड नाउ डेविड वार्नर विल फेस ऑनरिक नोकिया। ऑनरिक नोकिया इज बॉलिंग थंडरबोल्ट्स, 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो बॉलिंग डाल रहे हैं। और अब ये वाली गेंद देखिए, ओहो बहुत तेज थी ये तो, वेरी 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 फास्ट, 148 किलोमीटर पर आवर
बिल्कुल डेविड वार्नर उस पर कट नहीं लगा पाए और यहाँ पे हाफ रहे हैं और बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं ऑनरिक नोकिया। भाई आएगा ही ना, जब आदमी इतनी तेज बॉलिंग डालेगा, इतनी दूर से भाग के आएगा और बस बल्लेबाज छू ना पाए, विकेट पे बॉल लगे ना, तो उसको कैसा लगेगा। दिस वाज वेरी क्लोज टू द स्टंप्स, ये बिल्कुल लग जाती विकेट पे तो बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। और क्या शानदार गेंद डाली है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। इट इज विंटर सीजन, बहुत जाड़ों का टाइम है, बहुत सर्दी का टाइम है, तो प्लीज अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का, अपने दादा दादी का, उनका जरूर ख्याल रखें। बहुत सिकोड़ देने वाली ठंड है, तो ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल जरूर बरकरार रखें। बहुत शानदार गेंद एक बार फिर, ओ माय गॉड व्हाट अ बॉल वंस अगेन, ही इज बॉलिंग सो फास्ट। ऑनरिक नोकिया बहुत तेज यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके थोड़ा क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनरिक नोकिया स्टंप्स के पास से नहीं, स्टंप के दूर से बॉल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, वाइड जाके बॉल डाल रहे हैं और सीधे स्टंप्स पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज बॉल्स और थोड़ी मुश्किलात यहाँ पर आ रही है डेविड वार्नर को, ऐसा तो मुझे देखने को मिल रहा है। और ऐसा लगता है आप लोगों की तरफ से अगर मुझे इजहार मोहब्बत होना चाहिए तो सब्सक्रिप्शन के तौर पर होना चाहिए, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। हम सर्दियों की बात कर रहे थे, मैं सुबह 5 बजे जब यहाँ पे आके बैठा, जब मैं कमेंट्री करने लगा, देन आई वाज फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड, आई वाज जस्ट वेयरिंग अ स्वेटर, केवल एक स्वेटर पहना हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैं जैकेट वैकेट ग्लव्स और शॉल वगैरह लेके आया तो बेहतर लगने लगा। और ये बाउंसर, ओहो, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बल्लेबाज को। इतना आसान नहीं है भैया, ऐसे कैसे 100 मार दोगे। 100 टेस्ट मैच जरूर खेल रहे हो, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। साउथ अफ्रीका पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर डेविड वार्नर को खतरे में डालने की। शानदार बॉलिंग हो रही है। बाकी हमने आपके सामने एक पोल चलाया हुआ है, आप पोल पे जरूर हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट मैच में एक शतक लगा पाएंगे। बहुत कम लोगों ने कारनामा किया है। ओहो क्या खास गेंद है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड बॉल एंड द फील्डर्स अराउंड द बैट आर आल्सो चर्पिंग, मतलब वो भी काफी बातचीत कर रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं डेविड वार्नर को थोड़ा सा यहाँ पे स्लेजिंग करने की। बोलते रहते हैं ना, हाँ कुछ नहीं आता बल्लेबाज को, गलती से बना दिए 87 रन बना दिए, गलती से बन गए, कुछ नहीं आ रहा, बॉल नहीं दिख रही, इतनी तेज बॉल आ रही है, ये सब हम भी तो बोलते हैं जब हम लोग मैच खेलते हैं, तो इसी को स्लेजिंग कहते हैं। फिर 2-4 बार और बोलेंगे ये तो मैच, इसने तो बॉल टैंपरिंग करी हुई है, अभी बैन लगा हुआ था, खेलने को मिल गया, क्या बात हो गई, मतलब ये तो चलता ही है ना क्रिकेट में। तो जब 100 के आसपास होता है खिलाड़ी तो स्लेजिंग शुरू हो जाती है और बहुत तेज गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे ऑनरिक नोकिया की। और एक और तेज बॉल उसको खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। आप सब लोग कैसे हैं, हाउ आर यू पीपल? I am telling you that it is extremely cold, it is extremely wintry in Delhi, गुड़गांव। I am from गुड़गांव एंड यहाँ पे बहुत ठंड पड़ गई है इस समय। पिछले 3-4 दिन से जो तापमान है वो काफी गिर गया है और हम सभी लोग यहाँ पे ठिठुर रहे हैं, वो जाड़ा लग रहा है भाई। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज सिटिंग आई वाज ओनली वेयरिंग अ स्वेटर, मैं बस एक स्वेटर पहन के बैठा हुआ था और फिर मुझे ना धीरे धीरे ऐसा लगने लगा यार इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है। फिर मैंने पहले सॉक्स पहनी, फिर मैंने एक जैकेट पहनी, फिर मैंने मफलर लिया और फिर मैंने ग्लव्स लिए और फिर मुझे लगा कि चलो यार मेरे पास ये सब है, मैं तो ये कर पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो ये लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा जो भी हक बने और जो भी हमारी हैसियत हो, हम ज़रूर किसी ना किसी को ठंड के कपड़े पकड़ाएं, क्योंकि दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोला है कि इतनी कड़ाके भरी ठंड है कि किसी की मौत भी हो सकती है, जानलेवा ठंड है ये। तो आप अगर किसी की मदद कर सके तो ज़रूर करिए। आज मुझे बहुत एहसास हुआ कि हम लोग कितनी एक अच्छी पोजीशन में हैं कि हम आसानी से सब कुछ अपने आसपास रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप कुछ ना कुछ दान पुण्य कर सकें तो ज़रूर कीजिए, सर्दियों का समय है और किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है आपके दान से। खैर आपका दान अगर मेरे सब्सक्रिप्शन पे भी आ जाए तो मेरी ज़िंदगी तो नहीं बचेगी, लेकिन मतलब ऐसे खुशी बच जाएगी, ऐसे मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। और देखो साल का अंत आ रहा है, तुम भी पुण्य कमाओ और मुझे भी पुण्य कमाने दो। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत से पुण्य कमाया जा सकता है, लेकिन प्लीज इफ यू कैन सब्सक्राइब टू मी आई वुड बी रियली हैप्पी because I want to bring you the best commentary both in English and in Hindi and the match is going on pretty well। और केशव महाराज यहाँ पे बॉल डाल रहे हैं डेविड वार्नर शतक के जैसे जैसे पास जाए जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़े हल्के पड़ रहे हैं, धीमे पड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आदमी शंका में आ जाता है ना, उसको लगता है कि यार 100 आने वाली है, 100 आने वाली है, 100 आने वाली, दिमाग में पड़ जाता है उसके, तो जो उसकी नेचुरल बल्लेबाजी होती है वो थोड़ी छोड़ देता है। तो अगर आप नेचुरल बल्लेबाजी अपनी करेंगे, उसी नेचुरल बल्लेबाजी के बल पर आप 90 तक पहुंचे हैं और आप वो एकदम से अगर छोड़ देंगे और एक दूसरी तरह की बल्लेबाजी पर पहुंच जाएंगे, स्विच करेंगे एकदम से दिमाग को, तो इतना आसान नहीं होगा, इट विल नॉट बी वेरी इजी। बट मोस्ट ऑफ द बैट्समैन डू दैट बिकॉज दे आर वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस व्हेनेवर देयर इज अ माइलस्टोन। जब भी उनकी माइलस्टोन की बात होती है बहुत कॉशियस हो जाते हैं।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर्स। आई डोंट नो अगर आपने इस बारे में कभी सोचा हो तो, कि जब बॉलर अपनी 4 विकेट ले ले तो वो 5वीं विकेट लेने के लिए इतना अटैक करता है जिसकी कोई हद ना हो। फील्डर अंदर बुला लेगा, स्लिप लगा लेगा, बाउंसर डालेगा, यॉर्कर डालेगा कि एक 5वीं विकेट मिल जाए मुझे, है ना। लेकिन बल्लेबाज जब 90 के आसपास पहुंचता है तो वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं अटैक करूं, वो ऐसा सोचता है कि भाई अब तो मैं बिल्कुल ही ना ऐसे मतलब ढक लूं अपने आप को, छुप जाऊं कहीं, एक एक करके कैसे मैं सब मर्जी करके रन बनाऊं। सचिन जैसे प्लेयर के साथ भी ऐसा होता था। तो आप सोचिए कि आम बल्लेबाजों के साथ क्या होता होगा। तो ये थोड़ा माइंडसेट का गेम तो जरूर है कि दोनों की माइंडसेट अलग है। माइलस्टोन के पास जब बॉलर पहुंचता है तो अग्रेसिव हो जाता है और बैट्समैन पहुंचता है तो वो ढीला पड़ जाता है। जैसे अभी वार्नर थोड़े ढीले पड़ गए हैं, अभी उनको याद दिलाया जाएगा कि भाई ऐसे मत खेल, तुमसे खेला नहीं जाएगा ऐसे, क्योंकि आपका नेचुरल गेम ही नहीं है वो। नेचुरल गेम खेलना बहुत जरूरी होता है। और आप लोग अगर हमें लाइक कर रहे हैं, हमारी कमेंट्री पसंद कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका साथ बरकरार रहेगा। और अच्छी गेंद यहाँ पर केशव महाराज की, एक बार फिर केशव महाराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको स्टीव स्मिथ ने आगे बढ़ के लगा दिया था छक्का, और उसके बाद उनको थोड़ा सा अपना मूड बदलना पड़ा, अपनी गेंदबाजी की लय बदलनी पड़ी, और अब वो वापस ठीक ठाक सी गेंद डालने लग गए हैं। लेकिन डेविड वार्नर को ये वाला ओवर जो डालने वाले हैं, ऑनरिक नॉकी, आप इसमें मेरे साथ रहिए, बरकरार रहिए, बड़ा मजा आएगा इस ओवर में। ऑनरिक नॉकी बहुत गुस्सैल आदमी है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर गुस्सा करने वाले आदमी है। यू विल फील दैट ही गेट्स एंग्री सो इजीली एंड ही बॉल्स विद अ लॉट ऑफ एंगर। और ऐसे कौन से बॉलर थे जो बहुत गुस्से में गेंदबाजी करते थे? मुझे याद है शोएब अख्तर बहुत गुस्से में गेंदबाजी करते थे, टेल स्टेन बहुत गुस्से में गेंदबाजी करते थे, और कौन ऐसे गेंदबाज थे जो गुस्से में बॉलिंग करते थे? मुझे अभी ध्यान आना तो नहीं यहाँ पे याद आ रहा है। वहाब रियाज बहुत गुस्से में बॉलिंग, बड़ा तेज बॉलर था भाई। मिचेल जॉनसन गुस्से में, और ये देखिए गुस्से में क्या बॉल डाल रहे हैं, शानदार बॉल, एक बार फिर माय गॉड बड़ा बॉल। दिस पिच इन, ये पिच करके बिल्कुल स्टंप्स की तरफ जा रहा था, डेविड वार्नर ने अंत मोमेंट में बल्ला लगा दिया। लग ही नहीं रहा डेविड वार्नर 90 पे खेल रहे हैं, ऐसा महसूस कराया जा रहा है डेविड वार्नर 8-9 रन पे खेल रहे हैं। इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे ऑनरिक नॉकिया। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों देखने में। टेस्ट क्रिकेट की यही खूबी है कि आपको तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं एक ही मैच में, और मैच भी तो बहुत लंबा है। आप खुद सोचिए, टेस्ट क्रिकेट एक उबलती चाय की तरह है, जहां पर पिच के बदलते हालात, मौसम के बदलता मिजाज और बॉल की बदलती सूरत, इस सब के चलते आपको कोई नतीजा मिलता है, और कई बार वो नतीजा भी नहीं मिलता। विश्व में ऐसा कोई खेल नहीं है जहां पे 33-34 घंटे के बाद भी पता नहीं चलता कौन जीता। और ये शानदार कट लगा दिया है पॉइंट की तरफ, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन लेते ही डेविड वार्नर अब 90 पर पहुंच गए हैं, और डेविड वार्नर थोड़े से यहाँ पर बहके जरूर नजर आ रहे हैं। जिस श्रेणी का क्रिकेट खेलते हुए वो 90 पर पहुंचे थे, वो क्रिकेट उन्होंने खेलना बंद कर दिया। वो थोड़े से ऐसा मतलब मीक क्रिकेट खेल रहे हैं, झुका हुआ क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा सहमी हुई बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है केएल राहुल आ गए बैटिंग करने? केएल राहुल से मेरी एक ही शिकायत है, वो निडर होके नहीं खेलते, साहसी होके नहीं खेलते। इसके पीछे भी एक थ्योरी है, मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगा इस बारे में, क्योंकि आप लोग भी क्रिकेट को इतने मतलब करीब से समझते हैं और जानते हैं, और भारतीय क्रिकेट को तो खास तौर पर हर कोई करीब से जानना और समझना चाहता है, क्योंकि एक तो उसमें पैसा बहुत है, एक तो उसमें रंगीन चीजें बहुत है, आईपीएल बहुत है। अभी आपने देखा नहीं 18, 17, 16, 15, 14 कितने करोड़ रुपए दे दिए सबको, और ये कितनी खराब गेंद है, बहुत ही लेग साइड में गेंद डाल दी। अब ऑनरिक नॉकी को गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है कि वाइड गेंद डाल दी, लेकिन वाइड गेंद टेस्ट मैच में तो होती नहीं है, कितनी भी दूर डालते रहो चलती रहेगी गेंद। लेकिन आप लोग अगर हमें देखें तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार? मेरा हौसला तो बढ़ाओ। ऐसा मुझे लगना तो चाहिए कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो बस एक बारी के लिए नहीं आए हैं, वो बार बार आएंगे। तो आप अगर मुझे सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हम बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजों की। अब आप खुद सोचिए, भारत में गेंदबाज होना मुश्किल है या बल्लेबाज होना मुश्किल है? अब आप बताइए। मतलब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मान लीजिए कि आपकी औलादें क्रिकेट खेल रही हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके भाई बंधु क्रिकेट खेल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको उनको क्या बल्लेबाज बनाना चाहिए या गेंदबाज बनाना चाहिए? अब ये बहुत अच्छा ही डिस्कशन है। एक लेग साइड पे 1 रन आ गया। मैं आपको बताऊं तो जहां तक मुझे समझ आता है, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, खेली है, मैं अंडर 16 खेला हुआ हूँ गुड़गांव से, और मुझे समझ आता है कि अगर आप एक अच्छे गेंदबाज हैं तो आपको हर टीम में जगह मिल जाएगी। खराब गेंदबाज कोई भी कप्तान नहीं चाहता। सिलेक्शन के लिए भी आपको अच्छे से अच्छे गेंदबाज चाहिए, और अच्छे से अच्छे गेंदबाज खेलते हैं हर मैच में। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आपको इंडिया लेवल कोई भी खिला देगा। आप खिला डालिए 140-45 की स्पीड से, आपको आईपीएल मिलेगा, रणजी ट्रॉफी तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे एक मैच मिल जाए। लेकिन अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको मौका मिल जाए, क्योंकि लोग कहेंगे कि आपके जैसे तो 10 बैठे हुए हैं, और उन 10 लोगों की अप्रोच अलग होगी, और वहां पे करप्शन शुरू होगा। आपको मौका दिया जाएगा उस पोजीशन पे नहीं दिया जाएगा जहां पे आपको पसंद है।
आप ओपनर हैं तो आपको 5 पे खिलाया जाएगा, आप अगर 5-6 पे खेलते हैं तो आपको 3 या 2 पे खिला दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये डिफिकल्टी है ना, इससे क्या होता है कि जब जब कोई प्लेयर इतनी मुश्किलात के बाद, ओ क्या बॉल है, माय गॉड, ओ गॉड क्या बॉल थी, शानदार बॉल, बिल्कुल जड़ में डाल दी गई, डेविड वार्नर बिल्कुल हक्के बक्के गिर ही गए पिच पे, क्या शानदार बॉल है, व्हाट अ बॉल, इतनी तेज 150 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो हम साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि किस तरह जो बॉलर की साइकोलॉजी है वो अलग है इंडियन क्रिकेट में और बैट्समैन की अलग है। अब जो बल्लेबाज इतने जद्दोजहद के बाद आएगा खेलने, आप मान लीजिए जिसने इतना संघर्ष किया है अपनी जगह बनाने में एक टीम में, उसको मौका मिलता है, तो जब वो उसको मौका मिलेगा तो जब वो बैटिंग करेगा तब क्या वो रिस्क लेगा? आप खुद बताइए, क्या वो रिस्क लेगा? क्योंकि उसको पता है ना कि रिस्क लेने का मतलब क्या है। ओ क्या बॉल है, शानदार बॉल, इसको स्क्वायर लेग की तरफ बड़ी मुश्किल से खेला डेविड वार्नर ने, 2 रन लेने के लिए भागे, 1 ही रन मिलेगा। तो जब वो इतनी मुश्किल से उसको वो मौका मिला है जहां पर उसको एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला है, तो क्या वहां पर वो रिस्क लेगा? अब आप मुझे बताइए, क्योंकि उसको मालूम है कि वहां तक पहुंचने में कितने लोगों का हाथ है, कितना संघर्ष किया गया है, कितनी चुनौतियां आई हैं और कितनी मुश्किल से वो वहां पहुंचा है, और उसकी जगह लेने के लिए हजारों लड़के तैयार बैठे हैं। तो आप बताइए, क्या वहां पर खेलते हुए वो रिस्क लेगा? क्या वो अटैकिंग बैटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरा दिमाग ये कहता है नहीं कर सकता। इंग्लैंड में ये बात नहीं है, तभी इंग्लैंड के लड़के अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लड़के अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है, ज्यादा ज्यादा फेल हो जाएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, क्लब क्रिकेट खेलेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप वंस यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर, यू डोंट लाइक प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे आजकल अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, रणजी ट्रॉफी में आगे बढ़ के शॉट लगाया डेविड वार्नर ने। तो आप मुझे बताइए कि जब ये सब हो रहा हो तो बल्लेबाज होना भारत में कितना कठिन है। और अगर आप भारत में बल्लेबाज हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप रिस्क लेके नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके दिमाग में बैठी हुई ये बात कि यार मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूँ, कितने बलिदानों के बाद और कितने लोगों का योगदान है इसमें, और कितने सैक्रिफाइसेस हैं, और कितने लोग मेरी जगह पर खेलना चाहेंगे। तो जो मुझे मौका मिला है, मैं रिस्क क्यों लूं? मैं तो आराम से खेलूंगा, देखूंगा जब मुझे मारना होगा, देखूंगा अगर रन लगने की कोशिश करेंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मारूंगा, फिजूल में नहीं। तो ये बात केएल राहुल के दिमाग में आज तक है। आप कभी भी देख लिया, आप उनको चाहे वाइस कैप्टन बना दो, कैप्टन बना दो, उनको लगेगा कि उनकी जगह जा सकती है। और ये डर रियल है, और ये डर इस वजह से है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में इस देश की तादाद 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें मुझे लगता है 100 करोड़ तो क्रिकेट ही खेलते हैं। मजाक कर रहा हूं, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले लड़के कम से कम 1-2 करोड़ तो होंगे ही। 80 लाख, 80-90 लाख लोगों में से आप 11 में आ गए हैं, तो क्या आप उस मौके को ऐसे ही जाने देंगे? आप नहीं जाने देंगे। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कोई गलत बात नहीं है उसमें। तो आप रिस्क कैसे लेंगे? तो जो कहते हैं ना, इंग्लैंड की तरह भारत क्यों नहीं खेल रहा, इस वजह से नहीं खेल रहा। आप रिस्क ले नहीं सकते। रिस्क लेंगे आउट हो सकते हैं, आउट हो गए तो फिर बाहर कर दिया जाएंगे, तो आपका इतने सालों का संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये चल रहा है इस समय क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में ये साइकोलॉजी है। आप खुद बताइए, आपका खुद का लड़का अगर खेल रहा हो वहां पर, तो आप कहेंगे ना भाई इतना रिस्क मत लियो कि आउट हो जाए जल्दी, क्योंकि 10 साल बाद तुमको ये मौका मिला है, और इसके बाद मौका मिले ना मिले किसी को नहीं पता। लोग तरस जाते हैं उस मौके के लिए जो एक बार भारतीय क्रिकेटर बनने का मौका होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगली गेंद आ रही है केशव महाराज की, और उन्होंने अच्छी गेंद डाली, इसको आराम से डिफेंड कर दिया यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने। अब आप सोचिए बॉलर के बारे में, अगर कोई बॉलर डेब्यू करता है भारत से, क्या वो उस डर के साथ है? नहीं, उसको अपनी नॉर्मल बॉलिंग डालनी है कि भाई ठीक है, अच्छी बॉलिंग डालते रहूं, विकेट आ गई, आगे नहीं है, तेज बॉल डालनी है तो तेज डालूंगा, अच्छी स्पिन कराता हूं स्पिन कराऊंगा। कप्तान के ऊपर है ना, कप्तान जब बॉलिंग देगा मैं बॉलिंग डाल दूंगा। उसको वो साइकोलॉजिकल डर नहीं है जो एक बल्लेबाज को है खेलते वक्त, क्योंकि आजकल बल्लेबाजी के ऊपर क्रिकेट इतना बेस्ड है कि अटैकिंग बल्लेबाजों को ज्यादा हैसियत दी जाती है, अटैकिंग बल्लेबाजों को ज्यादा इज्जत मिल रही है, और अटैकिंग बल्लेबाजों का ज्यादा रेट लगाया जा रहा है बाजारों में। तो अटैकिंग बैट्समैन भारत का होगा कहां से? अटैकिंग क्रिकेट भारत खेलेगा कहां से? क्योंकि जो बल्लेबाज इतनी मुश्किलात के बाद भारत की मतलब टी शर्ट पहनता है, जर्सी पहनता है, वो रिस्क कैसे खेलेगा? रिस्क लेगा ही नहीं वो। मेरा तो ये मानना है। बाकी आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है, दैट इज व्हाट आई फील, एंड व्हाट अ गुड बॉल वंस अगेन। और टेम्बा बवूमा यहाँ पे कवर्स पे हैं, और ऑनरिक नोकिया यहाँ पे बहुत तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले ओवर में क्या शानदार यॉर्कर डाली थी। तो हमारा डिस्कशन बीच में खत्म हो गया था क्योंकि बॉल इतनी
जबरदस्त थी कि मुझे एकदम से रुक के बताना पड़ा था कि भाई क्या बॉल डाली है। सो ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब टू मी। आप अगर चाहते हैं कि आप मुझे और सुने और मैच में मजे आए तो आप प्लीज मुझे सब्सक्रिप्शंस दे दीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और हम और क्रिकेट की डेप्थ की बातें कर सकें और क्रिकेट के बारे में बातें कर सकें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बात करने में लगती है। देखो, इस मुल्क में दो चीज़ों के बारे में हर कोई बात करता है, एक है सियासत, सरकारें, पॉलिटिक्स, और दूसरा है क्रिकेट। उनके बारे में तो हम बात कर नहीं सकते, क्रिकेट के बारे में तो करेंगे ही। और ये स्लोअर बॉल है, वो हो वेरी नाइस, ये अब तो वेरिएशन डालने लग गए हैं, क्या बात है, वेरिएशन डालने लगे हैं। ऑनरिक नोकिया विकेट चाहिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी, और विकेट बनने के अब आसार बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बनाया जा रहा है डेविड वार्नर को। ये साइकोलॉजी है। अब आप सोचिए, डेविड वार्नर जिस तरह की बल्लेबाजी करते करते 90 बना गए थे, अब उन्होंने वो बल्लेबाजी छोड़ दी, नेचुरल गेम छोड़ दिया, क्योंकि शतक आ रहे हैं ना, तो अब शतक दिख रहा है सामने की, शतक लग जाए। 100 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, 100 टेस्ट मैच में शतक लग गया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और ये सब चल रहा है, और जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे दिल बनाए जा रहे हैं, थैंक यू दिल बनाने के लिए ये ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदे हैं, नीली नीले दिल। ओहो क्या शानदार बॉल है, इतनी तेज बॉल थी कि कीपर के ऊपर से भी निकल गई, फील्डर के ऊपर से भी निकल गई, बल्लेबाज की भी ऊपर से निकल गई, 4 रन मिल गए, 22 के 4 रन यहाँ पे। लेकिन डेविड वार्नर को खतरा लगातार बनाए हुए हैं, ऑनरिक नोकिया बहुत भयंकर तरीके से अटैक कर रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, आगे पीछे हर जगह बॉल डाल रहे हैं। और आप लोग अगर हमको देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस, वी वुड लव टू ब्रिंग मोर क्रिकेट टू यू, क्रिकेट फ्रॉम इंटरनेशनल arena, cricket from domestic arena, to cricket from all the leagues possible. We would love to bring it to you. Please subscribe to us. We will do commentary in both English and Hindi if you appreciate that. And I hope आपको हमारी कमेंट्री पसंद आए और हमारा मैच को देखने का और दिखाने का नजरिया पसंद आए। और यहाँ पर थोड़ा डेविड वार्नर हक्के बक्के हो गए हैं, उनको यहाँ पे बहुत डराया धमकाया जा रहा है, बहुत तेज बॉलिंग हो रही है और बहुत तेज बॉलिंग को ढंग से तो नहीं खेल पा रहे हैं, कोई भी नहीं खेल पाएगा इतनी तेज बॉलिंग डाल रहा हो कोई गुस्सैल आदमी। और गुस्सैल आदमी है इस समय यहाँ पे ऑनरिक नोकिया, बिल्कुल मिचेल जॉनसन की याद दिला रहे हैं। मिचेल जॉनसन को भी जब गुस्सा आ जाता था तो फिर आप भूल जाइए, वह रियाज भी ऐसे ही थे, वह रियाज को गुस्सा आ गया तो फिर आप देखिए कैसे बैटिंग करते हैं, बैटिंग हो ही नहीं पाएगी और बहुत तेज मार रहे हैं, बल्ला बल्ला तोड़ देंगे। ऑनरिक नोकिया 148-50 की किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से बॉल डाल रहे हैं। और देखो मैच में तो ऑस्ट्रेलिया ही आ गए हैं, लेकिन पिछले 10 मिनट तक तो साउथ अफ्रीका आ गया क्योंकि मेहनत इतनी कर रहे हैं यार, आपको लगने लगेगा कि यार क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है, मजा आ रहा है ना उनको देख के। यही है फास्ट बॉलिंग का क्रेज, ये मजा ही है फास्ट बॉलिंग का, कि फास्ट बॉलिंग अगर अच्छी तरह होने लग जाए तो फिर बल्लेबाज उछलता कूदता नजर आता है। और उछल कूद तो रहे डेविड वार्नर, रन नहीं लग पा रहे। और ये देखिए बड़ी मुश्किल से उन्होंने लेग साइड पे बॉल खेली और 1 रन यहाँ पे हासिल किया। स्टीव स्मिथ आ गए बैटिंग करने। और आप सब लोगों का स्वागत है, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब टू अस, वी विल बी हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ योर जेस्चर। अगर आपने हमको अपना इजहार मोहब्बत करते हुए सब्सक्राइब कर दिया तो हमको बहुत अच्छा महसूस होगा, और अगर आप वो कर सकें तो प्लीज़ कर दीजिए। और मैच का सूरत हाल तो आपको मालूम ही है, उसके बगैर भी आप अगर हमारे साथ हैं तो इस बात की हमको बड़ी खुशी है। और ये हमारा दूसरा बैकग्राउंड है दोस्तों, इस बैकग्राउंड में बेसिकली जब हम टॉस और प्रीव्यू करते हैं मैच का, ये तब का बैकग्राउंड है, आप सब देख सकते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा। और स्टीव स्मिथ खेलेंगे इस समय ऑनरिक नोकिया को, स्टीव स्मिथ यहाँ पर आ गए हैं बल्लेबाजी करने। और स्टीव स्मिथ की खास बात यही है कि स्टीव स्मिथ टेक्निकली बड़े साउंड हैं, टेम्परामेंटल उनका बहुत अच्छा है, उतने गुस्से में आते नहीं हैं, काम रहते हैं। और डेविड वार्नर की तरह वो इतनी भयंकर तरीके से ढकेले नहीं जाएंगे। हालांकि उनका एक बैटल मुझे याद है जोफ्रा आर्चर के साथ, क्या बैटल था वो एशेज में, और यहाँ पर अपना लंबा सा रनअप लेके जरूर आए ऑनरिक नोकिया, लेकिन अंत मोमेंट पर पता नहीं क्यों रुक गए, पता नहीं शायद कुछ याद आ गया होगा, बीवी से कोई बात हुई होगी, वो एकदम से ध्यान में आ गई होगी। होता है भाई दोस्तों, क्या बताऊं आपको, शादीशुदा आदमी बहुत अलग आदमी हो जाता है, उसके दिमाग में कभी भी कुछ भी आ सकता है। कोई ऐसी भोली भटकी चीज जो उसको लग रहा हो, जिस चीज की शंका हो कि भाई पता लग जाएगा, और पता लग जाए बस खत्म होगी कहानी। खैर आप लोग कैसे हैं और दिल्ली की सर्दियों में आपका क्या हाल है? अगर आप दिल्ली से हैं तो हाय। ओहो क्या शानदार बॉल है, स्टीव स्मिथ को डाली ये भयंकर बाउंसर, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऑनरिक नोकिया, किसी को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है हर किसी का केस लेने बैठे हुए हैं। ऐसे मत करो यार नोकिया, थोड़ा सा ख्याल रखो सबका, मारोगे क्या, पीटोगे क्या लोगों को, थोड़ा सा सोचो सबके बारे में। और आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो खुशी कैसे होगी मुझे? सुबह सुबह थोड़ी तो खुशी दे दो दोस्तों, हर किसी से लड़ाई करके बैठा हूँ वैसे में, लेकिन आप अगर थोड़ी खुशी दे देंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे डेविड वार्नर कर रहे हैं अपने ग्लव्स की तहकीकात,
उनके ग्लव पे बहुत तेज बॉल मारी थी, तो अब वापस जा रहे हैं कि भाई चलो अपना ग्लव में ठीक कराऊँ। ग्लव ठीक करने के साथ साथ फिजियो भी आ गए हैं। बड़ी मार पड़ रही है ऑनरेट नॉक की, उनको छोड़ेंगे नहीं आज। मुझे लग रहा है कोई लड़ाई वड़ाई होगी, कंचे वंचे चुरा लिए हैं डेविड वार्नर ने ऑनरेट नॉक के कि भाई तू मेरे कंचे वापस करो ना, आज तेरी खैर नहीं है, घर आ जाऊंगा तेरे। क्या चल रहा है ये क्रिकेट में, ये कैसी बातें हो रही हैं? सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? इतना मजेदार कमेंट्री चल रही है, अब आप लोग भी मतलब बेशर्म हो जाओ सब। बॉल देखो, हो क्या बॉल थी, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉल। शॉर्ट बॉल थी और शॉर्ट बॉल को पुल तो नहीं कर पाते, इतनी तेज थी ना। डिफेंड करने गए, डिफेंड करते करते बिल्कुल ग्लव पे ही खाली, उंगली ऐसे हो चटक गई होगी। उंगली को सीधा करने आ गए हैं फिजियो अंदर से। उंगली तो सीधी हो जाएगी, लेकिन पूंछ कैसे सीधी होगी आदमी की, वो नहीं समझ आ रहा है मुझे। आप लोगों की पूंछ कैसे सीधी होगी? और अभी मैंने आपसे पूछा भी है पोल में कि विल वार्नर हिट अ सेंचुरी इन हिज 100th टेस्ट मैच, और आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स। 85% लोग कह रहे हैं ऑफ कोर्स बनाएगा ना, और मना कर रहे हैं 15% लोग कि नहीं नहीं बनाएगा। खैर जो भी है, आप लोग अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो बने रहिए, और मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ बने रहें और ये मैच देखें साथ में। मैच देखना बहुत ज़रूरी है, और मैच देखते देखते ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इस समय आ गए हैं हम एक नए ओवर में। नया ओवर कौन डालने वाला है? पेस बॉलर होना चाहिए। बस बहुत हो गया भाई, अब महाराज की बॉलिंग नहीं देखी जा रही। महाराज अब आप थोड़ा इंतजार करिए, अब किसी और को बॉलिंग दे दीजिए। अब देखते हैं कौन बॉलिंग डालने आएगा। अब नई बॉलर कौन है भाई? नए बॉलर आ गए हैं बॉल डालने, मेरे ख्याल से जैनसन आ रहे हैं। मार्को जैनसन ने अच्छी बॉल डाली थी, रिवर्स स्विंग मिल रही थी। मुझे समझ नहीं आया उनको क्यों नहीं दी गेंदबाजी, क्योंकि जब उन्होंने लंच से पहले बॉल करी थी ना, बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग डाल रहे थे। आई थिंक शायद वो खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं डाली। अब डालेंगे। मार्को जैनसन को मिलनी चाहिए बॉलिंग, आई थिंक इज अ वेरी गुड बॉलर। मार्को जैनसन शुड बी गिवन द बॉल। नहीं, केशव महाराज ही डाल रहे हैं और स्वीप कर दिया केशव महाराज को बहुत शानदार तरीके से। 4 रन तो नहीं, 2 रन तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पे 2 रन मिल गए डेविड वार्नर को, और 2 रन लेते ही डेविड वार्नर पहुंच गए हैं अब 93, 95 पर पहुंच गए हैं। 5 रन रह गए हैं। मुझे लग रहा है इस ओवर में ही वो खत्म कर देंगे। कैसे चौके छक्के लगा देंगे भाई, आगे बढ़ जाएंगे, कट मार देंगे, रिवर्स भी आता है उनको। और यहाँ पे अगर उनका सैकड़ा हो गया तो कितनी बड़ी बात होगी। 100वें टेस्ट मैच में अगर उन्होंने 100 कंप्लीट कर दी। लेकिन इस कारनामे को रोकने के लिए अपनी जान लगाए हुए हैं ऑनरेट नॉकिया, उनकी भी दाद देनी होगी। क्या बॉल डाल रहे हैं, क्या जान लगाई है, और अच्छी गेंद एक बार फिर इसको पीछे जाके खेला डेविड वार्नर ने। कुछ भी यहाँ पे नहीं नुकसान होगा, ना रन मिलेगा और ना ही विकेट आएगी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें लगातार देखते रहिए, और आपको अच्छा भी लगेगा हमारे साथ जुड़ना, ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास है। और अच्छी गेंद हो, थोड़ी हल्की गेंद कराई गई। डेविड वार्नर पहले ही स्वीप करना चाह रहे थे, लेकिन फिर रुक के डिफेंड कर दिया उन्होंने। उनको समझ आ गया कि भाई इस गेंद पे तो स्वीप नहीं लग सकता, और यहाँ पर डिफेंड कर चुके हैं डेविड वार्नर इस गेंद को। कैसे हैं आप लोग? दिल्ली की सर्दी आपको कैसे ट्रीट कर रही है? मेरे साथ तो बहुत ज्यादती कर दी है दिल्ली की सर्दी ने, और बहुत ही शानदार गेंद एक बार फिर इसको भी डिफेंड कर दिया। देखो, बल्लेबाजी करने के लिए पिच बड़ी आसान है, और साउथ अफ्रीका ने मुझे लगता है 100 रन मारे हैं कम से कम। 280-70 रन होने चाहिए थे कम से कम। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितनी आसानी से बैटिंग हो रही है, बहुत ही इजीली बैटिंग कर रहे हैं स्टीव स्मिथ। और डेविड वार्नर इस बॉल को फ्लिक कर दिया, और ये 2 रन के लिए जाएगी कम से कम, और 95-96 पहुंच गए हैं। 96 हो गया है डेविड वार्नर का स्कोर। 96 पर पहुंच गए डेविड वार्नर, और यहाँ से ज़्यादा वो स्कोर करना चाहेंगे। मुझे लगता है 100 रन बनाते ही आप एक दूसरा डेविड वार्नर देखेंगे। ये जो मानसिक तकलीफ से गुजरता है कोई भी बल्लेबाज, जैसे जैसे वो अपने सैकड़े के करीब आता है, इस बात से भारतीय लोगों से ज़्यादा कौन वाकिफ होगा। सचिन तेंदुलकर ने हमको ऐसे बड़े अजीब अजीब दिन दिखाए, हम ऐसे दिल थाम के बैठ जाते थे, अरे सचिन 100 कर ले भाई, और वो रुक जाते थे, वो रन ही नहीं मार पा रहे होते थे। जिस बैटिंग को करते करते वो 90 तक पहुंचते थे ना, उस बैटिंग को छोड़ देते थे, फिर बिल्कुल ऐसे डिफेंसिव बैटिंग पे आ जाते थे। ऐसा हमें नहीं चाहिए भाई, हमको ऐसे ही बल्लेबाज चाहिए। डेविड वार्नर, तेज खेलो। तेज क्यों नहीं खेल रहे हो तुम? जैसे खेलते आए थे वैसे खेलो। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी बताइए कि आपका दिन कैसे गुजर रहा है, कैसा दिन बीत रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, और आप अगर हमें सब्सक्राइब कर दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आई वुड रियली फील ग्रेटफुल अगर आप हमें सब्सक्राइब कर दें तो। इस समय तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, अब ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। खैर, अगर आपको जब अच्छा लगे आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई होगी, मनोबल बढ़ेगा। और किसी को भी अच्छा लगता है जब उसके साथ ऐसा हो
कि जब जो लोग उसके साथ जुड़ें और लोग जुड़ना चाहें आगे भी, क्योंकि आगे भी बहुत मैचेस हैं। इसका दूसरा मैच भी है, दूसरा दिन भी है, पाकिस्तान का मैच भी है न्यूजीलैंड के साथ। उसके बाद शुरू हो जाएगी BBL और उसके बाद शुरू हो जाएगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग और फिर श्रीलंका आ गई है भारत, तो वो वाले मैच भी, इतने सारे मैच हैं, कैसे करेंगे बिना आपके साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वी विल लव टू हैव योर कंपनी। आप लोगों के साथ हमें जुड़ना बहुत पसंद रहेगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब आ गए हैं बॉलिंग डालने बहुत ही शानदार कगिसो रबाडा, और कगिसो रबाडा ने छोटी बॉल डाली और छोटी बॉल को पुल कर दिया यहाँ पे डेविड वार्नर ने। 100 हो गया है डेविड वार्नर का, 100 हो गया है 100वें टेस्ट मैच में। कितनी बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को ये मकाम हासिल है। एक तो 100 टेस्ट मैच नहीं खेले जाते लोगों से, फिटनेस बहुत अच्छी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद 100वें टेस्ट मैच में 100 बना दो, वाह शानदार बात। 100वें टेस्ट मैच में 100 बना दिया है डेविड वार्नर ने, और वो लगातार फ्लाइंग किस दे रहे हैं अपनी फैमिली को। और मेरे ख्याल से आज इंस्टाग्राम पर पूरे हैदराबाद लोग पागल हो जाएंगे। हैदराबादी बहुत बड़े फैन हैं डेविड वार्नर के, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी करते थे डेविड वार्नर, बड़ी अच्छी कप्तानी करते थे और उनके फैन होते रहे बहुत सारे लोग भी। डेविड वार्नर ने यहाँ पे शानदार काम कर दिया है, फैन हैं उनके लगातार, सारे लोग उनके फैन हैं और ये देख के बड़ा मजा आता है। क्या बात है, पूरा ग्राउंड उनके लिए यहाँ पे नतमस्तक हो गया। आपको याद दिला दूं कि डेविड वार्नर ने अपना डेब्यू किया था T20 क्रिकेट में, पहले टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे वो, T20 क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया था और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। वो भी इसी ग्राउंड पे किया था और बॉल डाल रहे थे डेल स्टेन के साथ बॉल डाल रहे थे। मॉर्कल बड़ी पिटाई लगाई थी उनकी, आज से 13 साल पुरानी बात है, और बड़ी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने शायद 70-80 रन कर दिए थे और बहुत अच्छे रन थे। उसके बाद उनको कहा गया भाई इस लड़के को तो खिलाओ, ये इतना मार रहा है और भयंकर रन मार रहा है। फिर उनको खिलाया गया। बाकी मैचेस भी, डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ नहीं खेले थे तब तक, बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए जैसे ही सैकड़ा हो गया वैसे ही उनके दिमाग से वो शंका और डर निकल गई है। उन्होंने कितना आधा पौना घंटा लगा दिया 90 से 100 पहुंचने में। ज्यादातर खिलाड़ी यही करते हैं, जैसे जैसे वो अपने सैकड़े के पास पहुंचते हैं, जैसे जैसे वो अपने किसी मकाम के पास पहुंचते हैं, वो बिल्कुल धीरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं 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 थोड़ा हल्के से खेलो ना, इतना तेज खेलने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है, तेज क्यों नहीं खेलना, तेज खेलो भाई, जितना तेज खेलोगे उतना बेहतर होगा और खेलना भी चाहिए। अगर आप तेज खेलेंगे तो आपको बेहतर लगेगा भी, क्योंकि देखो टाइम स्पेंड करना, पिच पर टाइम स्पेंड करना अलग बात है, लेकिन रन स्कोरिंग से बेहतर चीज नहीं है बल्लेबाज के लिए। अगर बल्लेबाज के रन होते रहे ना तो वो पॉजिटिव ही रहता है और वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए पूरे ऑडियंस के सामने बिल्कुल सूरज टपकता हुआ पिच पर, पिच होगी बल्लेबाजी के लिए आसान, ऑडियंस बैठी हुई है कैप वैप लगा के, बियर वियर पी रही है आराम से, उनके सामने लगा दिया आपने 100। नशे में लोग उठ के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। डेविड वार्नर भी अब कहेंगे अब देखो मैं कैसी बैटिंग करता हूँ। और डेविड वार्नर की फैमिली कितनी खुश है, उनकी बेटी, 2-2 3-3 बेटियां और उनकी वाइफ सब बहुत खुश है, उनको उन्होंने फ्लाइंग किस दे दी है। क्या बात है, यही तो मजा आता है मैच देखने में, अगर कुछ नई चीजें आ जाए देखने के लिए। फ्लाइंग किसें मिल रही हैं भाई। उनकी बेटी सिंडी वार्नर वहां पे है, सिंडी वार्नर को तो मैं इंस्टाग्राम से जानता हूँ, बाकियों को उतना नहीं पता हो तो। और ये अच्छी गेंद एक बार फिर कगिसो रबाडा की, कगिसो रबाडा बिल्कुल थके थके नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है अभी तो थकान शुरू हुई है। अभी तो 167 ही है, 2 ही विकेट गई हैं। अभी ट्रेविस हेड को आने दो एक बार, ट्रेविस हेड आ जाएंगे तो हे भगवान क्या मारते हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड आ जाते हैं तो फिर डेविड वार्नर बहुत ऐसे एवरेज खिलाड़ी लगने लगते हैं। ट्रेविस हेड इतना भयंकर पीटते हैं ना बॉलर्स को कि आपको लगता है कि यार ये क्या बॉलर है। शानदार बॉलिंग तो नहीं हो रही है इस समय और अच्छी गेंद चल रही है, अच्छी गेंद है। गुड बॉल कगिसो रबाडा, अच्छी बॉल डाल दी आपने। गुड बॉलिंग। स्कोर मैं आपको बता दूं 167 पे 2 हो गया है, 167 पे 2 है स्कोर इस समय। और हम थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ झेल रहे हैं अपने स्कोर अपडेट में, वो अपडेट नहीं हो पा रहा है ढंग से। अपडेट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, और क्योंकि स्कोर अपडेट नहीं हो पा रहा है तो हम आपको बता देते हैं। तो स्कोर हो गया 167 पे 2, वार्नर है 101 पे और स्मिथ है 33 पे। स्मिथ को भी 33 पर खड़े 32-33 पर खड़े बड़ा समय हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाओ भाई, उनके भी रन लगवाओ। उनके रन कैसे लगवाएं, किस बॉलर को बॉल डलवाएं यहाँ पे? उमेश यादव को बुला लें क्या? नहीं, उमेश यादव रन नहीं खा रहे आजकल। कौन खाते हैं भारतीय टीम में सबसे ज्यादा रन? कौन? शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने नहीं तो बांग्लादेश की वनडे में अच्छी बॉलिंग करी है भाई, शार्दुल के बारे में नहीं बोल सकता कोई। आप बताओ किसको बुलाना चाहिए अगर रन खाने हो तो, और आप बताओ किसको बुलाना चाहिए अगर सब्सक्राइब करवाना हो तो। आप लोग तो कर नहीं रहे सब्सक्राइब यार, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो मुझे अच्छा कहाँ से लगेगा?
मुझे कौन देगा मनोबल, कौन देगा मुझको विश्वास कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। अभी दिखाई जा रही है उनकी इनिंग्स, उन्होंने कैसे कैसे शॉट खेले। तो भैया ऑफ साइड तो उन्होंने मार मार के पागल कर दिया, बहुत रन मारे ऑफ साइड के ऊपर। लेग साइड पे भी कोशिश की है, लेग साइड पे बॉलिंग भी नहीं डाली ना, बॉलिंग ऑफ साइड ही हो रही है तो ऑफ की रन जाएंगे, लेकिन लेग साइड पे मार के उन्होंने चौका लिया फाइन लेग पे और अपना शतक पूरा किया। और डेविड वार्नर की सेलिब्रेशन बड़ी आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, वही केवल ऐसे सेलिब्रेट करते हैं और अभी भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। उनकी वाइफ, उनके बच्चे उनको देख रहे हैं, बड़े खुश हैं अपने पिताजी के लिए। और ये देखिए पिताजी ने आते ही, जैसे 100 बनते ही देखो केशव महाराज को बॉल नहीं डालनी थी, आते ही चौका मार दिया है, आगे बढ़े और हट चल साइड हो, चौका मार दिया। 171 पर पहुंच गया स्कोर, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया आगे। मैंने तो बोला ही था कि 350 रन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और 350 रन बनते ही अफ्रीका हो जाएगा बाहर, उनको इतना दबाव हो जाएगा, हो सकता है 400 रन बन जाए। टाइम बहुत है ना मैच में। अब सोचो कल आज का एक सेशन और है इसके बाद, ठीक है। तो इस सेशन में अभी शुरुआत ही हुई है, कितना टाइम हो गया इस सेशन में, 40 मिनट हो गए। 40 मिनट और 80 मिनट और 2.5 घंटे, 3 घंटे का समय। ओहो, अभी तो मैच में डलने, अभी आज के दिन में डलने हैं 45 ओवर, 50 ओवर डलने हैं। 50 ओवर, आज के 50 ओवर में लग जाएंगे 200 रन, तो 372 हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, 370 हो जाएगा स्कोर ऑस्ट्रेलिया का। आगे बढ़ गए स्टीव स्मिथ आगे बढ़ के, लेकिन उनको लेंथ नहीं मिली जिस लेंथ की वो खोज कर रहे थे। 330-32 स्कोर, 370, 60-70 का स्कोर हो जाएगा दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का। 360-70 के स्कोर के बाद उनको 200 रन की तो लीड मिल गई। बस साउथ अफ्रीका के लिए बहुत कठिनाई बड़ा सबब है। मैच मैंने आपको बता दिया, अच्छी गेंद, शानदार गेंद, बिल्कुल सीधी सीधी गेंद है, इसको डिफेंड कर दिया, लेकिन अच्छी स्पिन उस पर इम्पॉर्टेंट थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत स्पिन है गेंद में, इतनी घूम के आई थी, बहुत सी गेंद। यहाँ पर केशव महाराज की कोशिश जरूर कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ करने की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम ये है। और ओहो, ये अच्छी बॉल है भाई। स्टीव स्मिथ पहले ही फ्रंट फुट पे आ गए थे और उनको बाहर की तरफ गेंद डाल दी और उन्होंने हाथों से ही खेला, मतलब पैर वहां पे गए नहीं, क्योंकि पैर पहले ही वो सामने की तरफ ला चुके थे तो बाहर की तरफ नहीं निकाल पाए। अच्छी गेंद थी, अच्छी सोच है इस गेंद के पीछे। और यहाँ पे देखना होगा कि स्टीव स्मिथ क्या करेंगे। ओहो, वेरी नाइस बॉल। केशव महाराज अच्छी बॉल तो डाल ही रहे हैं, रन भी कम खा रहे हैं, लेकिन चौका और 1 रन, 5 रन तो खा ही लिए इस ओवर में। स्टीव स्मिथ भी कोशिश यही करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहले 50 बनाए, फिर 100 बनाए। मार्नस लाबुशाने कितने डिसअपॉइंटेड होंगे, जिनका यहाँ पे पक्का बड़ा स्कोर बनता, लेकिन उनको रन आउट करा दिया गया गलती से, और वो रन आउट होके वापस जा रहे थे पवेलियन में, बहुत नाराज थे, बहुत नाखुश थे, इतने नाखुश थे च्युइंगम चबाते चबाते थूक गए ग्राउंड पे ही कि भाई मैं नहीं, ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ भी हो तो बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मेरे पास 13 लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, 13 में से यार 2-3 लोग तो कर दो सब्सक्राइब। एक दूसरे का मुंह ना ताको, मुझे ताको, मुझे ताकते हुए आप कह दो कि हाँ तनय, मैं तुमको सब्सक्राइब करता हूँ, मेरा नाम है तनय यादव और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कमेंट्री दिखाऊँ और कमेंट्री सुनाऊँ और मैच अपनी तरह बता पाऊँ। ये मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा को आप पूरा ज़रूर कर ही रहे हैं। स्कोर हो चला है 172 46 ओवर के बाद। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे डेविड वार्नर, सैकड़ा लगा चुके हैं अपना, बहुत शानदार बात है। और ये अच्छी गेंद, एक बार फिर इसको मिड विकेट की तरफ पुश कर दिया और मिनिमम मुझे लगता है यहाँ 3 रन तो मिलेंगे, हो सकता है 4 हो जाए, लेकिन 3 तो कहीं नहीं कहीं। टोपी उड़ गई है फील्डर की भाग भाग के, लेकिन उसने बॉल पकड़ के वापस फेंकी और यहाँ पर 3 रन जरूर हासिल किए डेविड वार्नर ने। देखा एकदम से बदल गए, जैसे ही 100 लग गया वैसे ही ऐसा लगे कि पुराने वाले डेविड वार्नर आ गए। उससे पहले ऐसे खेल रहे थे जैसे बॉल ना दिख रही हो। खैर बॉल तो दिख भी नहीं रही थी, ऑर्डर नोकिया इतना तेज डाल रहे थे, ऑर्डर नोकिया क्या बॉल डाल रहे थे यार, अनडाउटेडली व्हाट अ गुड बॉलर ही इज, बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे और बड़ा मजा आया उनको देखकर कि अगर वो ऐसी बॉलिंग लगातार डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो ऐसा ही देखने को आया था और रवाडा ने अच्छी गेंद डाली, लेकिन कोई खास यहाँ पे नुकसान नहीं कर पाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का। 1 रन और मिल गया स्टीव स्मिथ को, जिन्होंने इस गेंद को खेला साइड में। एंड इफ यू वांट मी टू डू इंग्लिश कमेंट्री और हिंदी कमेंट्री, यू कैन लेट मी नो राइट नाउ। आई थिंक साउथ अफ्रीका इज इन ट्रबल। साउथ अफ्रीका ने बनाए 190 रन और फर्स्ट इनिंग्स में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 176 बना दिए यहाँ पे। और अभी तो आज के दिन में 42, 43, 44 ओवर का खेल बाकी है, 44-45 ओवर का खेल बाकी है। तो मुझे लगता है 50 ओवर का खेल बाकी है शायद। 50 ओवर के खेल में आज के दिन 200 रन और बना देगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाएगा 370। 370 होने के बाद उनकी लीड हो जाएगी
करीब करीब 200 की लीड हो जाएगी। 200 की लीड होने के बाद आप सोचिए क्या बच जाएगा साउथ अफ्रीका के पास। बहुत बुरे हाल हो जाएंगे साउथ अफ्रीका के। और ये अच्छी गेंद एक बार फिर रबाडा भी कोशिश कर रहे हैं नौकिया की तरह बहुत कठिन गेंदें डालें यहाँ पर, और कठिन गेंदें डालते डालते बहुत कठिनाई में भर दें डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर इस समय जंप लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपना एजिलिटी और फिटनेस वापस लाने की और मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस वापस लाने की। लेकिन फोकस वापस कैसे आएगा जब इतनी तेज तेज बॉल डल रही होगी। थोड़े तो शांति मिलनी चाहिए बल्लेबाज को। 100 रन बनाने के बाद फ्रूटी व्रूटी पिलाओ, आराम से बैठाओ, चल भाई चाप वाप खा तू 100 बना के। ये सब कुछ नहीं, रबाडा को लगा दिया खेलने के लिए। ये क्या बात हुई? ये कोई तोहफा है? तभी टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। और ये अच्छी गेंद है, शॉर्ट गेंद है, उसको पुल करने की कोशिश की लेकिन अंडर एज लगते ही कीपर के हाथ में पहुंच गई है गेंद। और आप सब लोगों का स्वागत है जो भी हमको देख रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों से हम जुड़ रहे हैं और आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई कैन डू कमेंट्री इन इंग्लिश ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो, वट एवर यू लाइक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट यू शो योर लव एंड सपोर्ट फॉर अस। आप अपना इजहार मोहब्बत हमारे लिए सब्सक्रिप्शन के तौर पर ज़रूर कर सकते हैं। और पोल मैंने चलाया हुआ था कि क्या डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में अपना शतक लगाएंगे। उन्होंने लगा दिया। 84% लोगों ने कहा था लगाएंगे, उन्होंने लगा दिया है। और अगला पोल बहुत मज़ेदार है। अगला पोल है ये, विल ऑस्ट्रेलिया स्कोर 400? क्या ऑस्ट्रेलिया 400 स्कोर करेगी फर्स्ट इनिंग में? व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया स्कोर 400? मुझे तो लगता है कि वो स्कोर कर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है आप बताइए। अच्छी गेंद एक बार फिर यहाँ पे रबाडा की, और ये 47 ओवर खत्म हो गया 176 पर। 2 विकेट जा चुकी हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। अभी तो काफ़ी बल्लेबाज बाकी हैं। कैमरून ग्रीन बाकी हैं, हेड बाकी हैं, केरी बाकी हैं, कमिंस बाकी हैं, स्टार्क बाकी हैं, नीदरलैंड बाकी हैं, बोलैंड बाकी हैं। खैर बाकी वो तो मैं उतना बल्लेबाज नहीं समझता, लेकिन केरी, ग्रीन, हेड, ये तीनों लड़के सैकड़ा बनाने योग्य हैं। आधी सेंचुरी तो 3 में से 2 लोग बनाएंगे, बाकियों का मुझे पता नहीं है। लेकिन भाई बहुत स्ट्रेंथ है इस ऑस्ट्रेलियन टीम में। अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं है तो आप भूल जाओ। और ये अच्छा बॉलिंग अटैक है इनफैक्ट, मतलब साउथ अफ्रीका का तो शानदार बॉलिंग अटैक है, लेकिन पिच में कुछ है ही नहीं। ऐसी पिच पे अपनी ऐसी की तैसी करा के आगे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज आउट नहीं होना चाहिए था। पेस ही तो डाल रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, और क्या कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है एक ट्रिक मिस हो गई कि भाई इतनी जल्दी आउट हो गई कैसे आ गए आप सब। आउट नहीं होना चाहिए था। और 1 घंटा होने वाला है इस सेशन का कुछ ही समय में। 13 मिनट में इस सेशन में 47 मिनट हो चुके हैं और 10 एक ओवर डल चुके हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि अभी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ में से किसी एक को आउट कर दो यार। ये दोनों टिके रहे। डेविड वार्नर तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इस सेशन खत्म होने से पहले 140 पर पहुंच जाएंगे। और फिर कब उनकी 200 हो जाएगी और कब फिर मतलब मैच सब कुछ निकल जाएगा आपके हाथों से। साउथ अफ्रीका प्लीज ध्यान दो, क्या कर रहे हो दोस्तों। तुम भी हमारे तरह तुम्हारे ऊपर भी कब्जा किया था अंग्रेजों ने। कॉलोनियल पार्टनर्स हैं हम, समझ रहे हो। अफ्रीका, हेलो अफ्रीका, दिख क्यों नहीं रहे हो तुम। एमसीजी में मैच हो रहा है जी, मेलबर्न में मैच हो रहा है। मेलबर्न सिटी है ऑस्ट्रेलिया स्टेट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी स्टेट है, उसके नीचे एक सिटी आती है मतलब विक्टोरिया एक बड़ी स्टेट है, उसमें आती है मेलबर्न, और मेलबर्न में आता है एमसीजी जो कि सबसे बड़ा ग्राउंड है। और ये देखिए क्या बॉल डाली है, इसको ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ के दरमियान। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर स्टीव स्मिथ को। लेकिन देखने योग्य बात ये होगी कि क्या यहाँ पर कोशिश की जाएगी देखने की एक बड़ा शॉट। और बड़ा शॉट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं इस समय डेविड वार्नर। 100 रन तो वो कर चुके हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैंने आपसे बोल में पूछा है कि विल ऑस्ट्रेलिया स्कोर 400, उसका जवाब दे सकते हो नहीं दे सकते। थोड़ी बहुत दोस्ती निभा दो दोस्तों, क्या कर रहे हो ये।
करे, सहज महसूस नहीं करे, उन्होंने स्टंप से पीछे हट गए और वहां पर बॉलर को रुकना पड़ा। तो देखते हैं अगला दोबारा गेंद लेकर आने वाले हैं लुंगी अंगीड़ी। तो लुंगी अंगीड़ी ने अभी तक 8 ओवर की गेंदबाजी की है और अभी 19 रन लिए हैं। सहज महसूस नहीं करे, उन्होंने स्टंप से पीछे हट गए और वहां पर बॉलर को रुकना पड़ा। तो देखते हैं अगला
अरे मैं तो नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर करना चाहिए शायद. It's better now. Maybe, yes. How are you, all of you? We are back with the commentary, live commentary of this test match between Australia and South Africa. Till now we have seen David Warner score 100 और केशव महाराज ने बहुत अच्छी गेंद डाली और अभी मेरे ख्याल से दूसरा सेशन भी खत्म होने वाला है. और मैंने जैसे कि कहा था, आप अगर मेरे साथ मौजूद रहे होंगे
कि यहाँ पर तो 400 रन आसानी से बन जाएंगे। हमने इनफैक्ट पोल भी चलाया हुआ है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि 400 रन बनने वाले हैं या नहीं। मेरे ख्याल से तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। और इस समय हमारी पोल पर तो कोई खास वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन जितने भी वोट्स डले हैं सभी ने यस बोला है, जी हाँ बन जाएंगे इतने रन। हाउ और यू, आप लोग कैसे हैं, इस बात का अगर आप जवाब दे दें तो और हम आगे श्रृंखला बढ़ाएंगे अपनी बातों की। और मेरे साथ मेरे पीछे यहाँ पे इधर उधर सारे प्लेयर्स हैं, और आप उन प्लेयरों की तस्वीरें देख सकते हैं, आप स्कोर्स देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों के साथ हमारा साथ बना रहेगा, और हम कोशिश यही करेंगे कि मैच में दोनों तरह से कमेंट्री की जाए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आई लव डूइंग कमेंट्री इन इंग्लिश, और मुझे हिंदी में भी कमेंट्री करने में उतना ही सुख आता है। और यहाँ पर स्टीव स्मिथ की 50 होने में भी 5 रन रह गए हैं, और 5 रन जब तक हो जाए उससे पहले मेरा और आपका आमना सामना हो जाए। इससे और अच्छी बेहतर बात क्या हो सकती है। साउथ अफ्रीका ने कोई बहुत खास बल्लेबाजी नहीं करी, और बहुत आसान पिच थी बल्लेबाजी के लिए। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि मार्को जैनसन, जो कि साउथ अफ्रीकन नंबर 6 खिलाड़ी है, नंबर 7, उन्होंने भी यहाँ पे 55 रन मार दिए थे, और अब वो उनका नाम लिया और वो हाजिर बॉलिंग करने आ गए हैं। और मार्को जैनसन रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी कराते हैं, तो क्या उनको वही रिवर्स स्विंग मिलेगी। और अगर मैं बताऊं तो लंच से पहले वाला जो ओवर था वो इन्होंने डाला था, और बहुत शानदार ओवर डाला था। स्टीव स्मिथ को बहुत परेशान करके रखा था उनको, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जैसे ही टी के बाद जो लंच के बाद वाला जो सेशन शुरू हुआ उसमें इनको ओवर ही नहीं दिया। अब इनको जाके ओवर मिला है, मुझे लगता है इनको ज़रूर कोई ना कोई हरकत मिलेगी गेम में, और हरकत मिलेगी तो उसके बाद नतीजा अच्छा ही आएगा। आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर। हम हैं स्कोर कार्ड, हम आपके लिए आए हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये मैच। और ये शानदार बॉल जरूर थी, लेकिन उसको ड्राइव करा एक्स्ट्रा कवर के दरमियान। द बॉल हैज बीन ड्रिवन स्ट्रेट टू एक्स्ट्रा कवर, नो रन्स टू स्टीव स्मिथ। And we would love to do commentary both in English and in Hindi. You tell me which type of commentary do you like, and I think you are hearing more sound here, so I'll just reduce the sound volume so that my voice is more audible. अब मुझे लगता है मेरी आवाज़ ज़्यादा आपको सुनाई देगी, and you would enjoy the commentary even more. And मेरी ये black and white फोटो क्यों आ रही है भाई, मैं भूत जैसा क्यों लग रहा हूँ। मैं ज़रा यहाँ पे लाइट बढ़ा के आता हूँ आपके लिए। Here you go, लाइट बढ़ गई है, और अब शायद बेहतर मैं आपको नजर आ पाऊँ। और आपका और हमारा साथ सुबह 5 बजे से बना हुआ है, और फिर बीच में हम गायब हो गए थे क्योंकि खाना था, नाश्ता करना था, और हम फिर वापस आ गए हैं क्योंकि अब हमारे पास आ गई बहुत सारी एनर्जी। और हमारी एनर्जी के कारण आप भी बनिए, आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच भी कवर। उसमें तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें आप देखें ना, पाकिस्तान जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ हमारी शिरकत हो या ना हो, मज़ा तो आना ही आना है। और इस समय आ गए हैं मार्को जैनसन बॉल डालने स्टीवन स्मिथ को, जिन्होंने एक और सिंगल यहाँ पे दर्ज करा और स्कोर में इजाफा कर लिया है। स्कोर हो चला है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का 204। 204 तो बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया भाई। मतलब मुझे अब धीरे धीरे लगने लगा है कि 400 क्या, ये तो मैंने ये सोचा था कि अभी कितने और बचे हैं। अभी बचे हैं मेरे ख्याल करीब करीब 40 ओवर का खेल बचा है आज के दिन में। 42 ओवर का 42 ओवर का खेल अभी बचा है आज के दिन में। तो 42 ओवर 45 ओवर में आप लगा लो 160 रन और बना देगी, 70 रन और बना देगी ऑस्ट्रेलिया। 160 रन बनाने के बाद तो पहुंच जाएंगे 365 पे। 365 पर पहुंचने के बाद 180 की लीड हो जाएगी। 180 की लीड उनकी हासिल हो जाएगी 2 ही दिन में। उसके बाद आप देखें वो एक सेशन और, मतलब थोड़ा सा और खेल के 220 की लीड कर लेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका को खेलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे खेलेगी साउथ अफ्रीका। और ये शॉट देखिए, ओहो, डेविड वार्नर बिल्कुल T20 स्टाइल में मारना चाह रहे थे, ये स्कूप करना चाह रहे थे बिल्कुल फाइन लेग के ऊपर से। हालांकि आपको लगेगा नहीं कि उन्होंने स्कूप की कोशिश की थी, कितना तेज घुमाया था बल्ला कि वो कुछ और यहाँ पे हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को। उन्होंने बहुत नुकसान अभी झेल ही लिया है। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरी आपसे यही ख्वाहिश है और यही उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप हमारी कमेंट्री पसंद कीजिए। My name is Tanay and I am supported, very well supported by Anshul, and both of us bring to you Scorecard. Scorecard हमारा चैनल है। हम कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस और टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट आपको लेके दिखाएं मैच की कहानी अपनी ज़बानी। और ख़ासतौर पर जो दर्शक और जो प्रशंसक और जो श्रोता टेस्ट क्रिकेट के हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हर किसी को देखना
मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है ना टेस्ट क्रिकेट समझना। टेस्ट क्रिकेट समझने के लिए अलग परिपक्वता चाहिए, अलग मैच्योरिटी चाहिए और मानसिक संतुलन चाहिए, विजन चाहिए, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का तरीका, पेशेंस समझने का तरीका चाहिए। और यहाँ पे कट लगा दिया स्टीव स्मिथ ने 4 रन के लिए और यहाँ पे 50 हो गई है स्टीव स्मिथ की। ऑडियंस गड़गड़ाते हुए उनका स्वागत कर रही है और कह रही है कि बस स्टीव स्मिथ तुमने अपना रिडेम्पशन हासिल कर लिया। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है अब तुम सुख चैन से मर सकते हो, जी सकते हो, क्योंकि यही वो साउथ अफ्रीका की टीम है जिसके खिलाफ वार्नर और स्मिथ के खिलाफ वो केस चला था कि भाई इन्होंने बॉल टैंपरिंग की है। 1 साल के लिए दोनों को बाहर निकाल दिया गया था। उस 1 साल बाहर रहने की वजह से इनको इतनी कठिनाइयों से जूझना पड़ा। स्टीव स्मिथ कप्तान थे, डेविड वार्नर वाइस कप्तान थे और उस सब के बावजूद इन्होंने इतनी मेहनत करते हुए वापसी की है और 4 साल बाद उनको वो मौका मिला है जहां पर वो साबित कर पाए कि हम किस श्रेणी के, किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने साबित किया। शतक लगा चुके हैं डेविड वार्नर और बहुत बुरी मार लगा रहे हैं यहाँ पे डेविड वार्नर। स्टीव स्मिथ ने भी शतक लगा लिया है, लेकिन काबिल तारीफ बात है ये। फिर मतलब इंसानी रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और ये स्लॉग स्वीप कर दिया है 4 रन के लिए। मुश्किल से पहुंची गेंद चौके पर, लेकिन पहुंच गई। 4 रन के लिए स्लॉग स्वीप कर दिया है यहाँ पर डेविड वार्नर। ना आप देख रहे हैं ना ताब, उन्होंने सोच लिया है कि अब तो भाई साउथ अफ्रीका के अंतिम क्षणों का हमको इंतजार है। साउथ अफ्रीका की मार लगाएंगे और इस तरह लगाएंगे कि वो याद रखेंगे कि क्या मार लगाई गई है। एंड ऑफ कोर्स दे आर हिटिंग 6s and 4s. Steve Smith has also achieved his half century, and slowly and steadily we would see both the batsmen accelerating, playing more aggressive cricket. And this is the change of color in Test cricket. जैसे जैसे टेस्ट क्रिकेट आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका रंग बदलता है मैच का। बॉल की सूरत, पिच के हालात और मौसम का मिजाज, ये तीनों मिल जाएं तो भी टेस्ट क्रिकेट में नतीजा आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट एक लौता खेल है जिसमें आप सोचिए 5 दिन 15 सेशन खेल चलता है और अच्छी गेंद इसको डिफेंड कर दिया। उसके बावजूद भी कई बार आपको लगता है कि यार अभी तक तो ड्रॉ ही जा रहा है, मैच ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। तो आप सोचिए विश्व में ऐसा कोई खेल नहीं है जो 33-34 घंटे चले और उसके बाद भी ड्रॉ हो जाए। टेस्ट क्रिकेट वैसा खेल है। तो मजा तो बहुत आ रहा है देखने में। एक और अच्छी गेंद इसको भी डिफेंड कर दिया। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अपना सूरत हाल बताएं और बताएं कि मौसम आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। भाई मुझे तो बहुत जाड़ा लग रहा है। हमारे हरियाणा दिल्ली में सर्दी को जाड़ा बोलते हैं और वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि भाई इतनी भयंकर ठंड हो गई है और सुबह सुबह उठना पड़ा इस मैच के लिए। अच्छा सिग्नल मिल गया है, आउटसाइड दी ऑस्टम गेंद थी, उसको डिफेंड करना चाह रहे थे लेकिन बाहरी किनारा लग के थर्ड मैन की तरफ बॉल गई और 1 रन यहाँ पे हासिल हो गया। सर्दी इस वजह से लग रही है यार, क्योंकि मुझे शुरू में लगा कि मैंने कपड़े ठीक ठाक पहने हुए, स्वेटर वेटर पहना हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जैकेट भी पहन के आइए, मफलर भी पहन के आइए, ग्लव्स भी पहन लीजिए, सॉक्स भी पहन लीजिए, तब आपको ठीक लगेगा। लेकिन इससे मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई कि हमारे पास ये सब सुख संसाधन है तो हम ये कर पा रहे हैं, कईयों के पास नहीं है। तो आप ओहो ये तो पैडल स्वीप लगा दिया फाइनल लेग के दरमियान, 1 रन के लिए इतना ज़्यादा कष्ट उठाया, लेकिन ठीक है, अच्छा शॉट था। जब हमारे पास इतना सब कुछ मौजूद है, हम उसके बावजूद इतने ठंड में ठिठुर रहे हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है। अगर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो आप उनके लिए दे सकते हैं तो कृपया करके प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जानलेवा ठंड है। दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोला है कि जानलेवा ठंड है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम अपने जीवन में किसी का भला कर सकें, और साल का अंत तो होने ही वाला है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे किसी का बदन ढक सकें, किसी को थोड़ी गर्माहट दे सकें। खैर, मैच की तरफ आए तो 216 पर 2 हो गया स्कोर, और 216 पर 2 होने के बाद अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड सेशन। दूसरा सेशन खत्म होने वाला है, बस 10-15 मिनट में 4-5 ओवर की बात रह गई है। एंड देन वी विल वॉच द थर्ड सेशन आफ्टर द लंच, सॉरी टी ब्रेक। और थर्ड सेशन के चलते चलते इतने में मैच शुरू हो जाएगा पाकिस्तान वाला। देखो वो तो और मजेदार मैच है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच है। बाबर आजम 160-62 बना के खेल रहे हैं। बाबर आजम भी ना मतलब कई बार हद ही कर देते हैं, इतना रन मारने की जरूरत है भाई, थोड़ा आराम से खेल लो। बहुत रन मारते हैं बाबर आजम भी, बस T20 में नहीं मार पाते। अच्छी गेंद एक बार फिर यहाँ पे मार्को यानसन की। और अगर मैं आपको थोड़े तकनीकी रूप से बात बताऊं तो मार्को यानसन बहुत लंबे कद के गेंदबाज हैं। उनकी 6 फुट 6-7 इंच हाइट है, पतले लंबे गेंदबाज है, बाउंस अच्छा मिलता है। और इस समय वो राउंड द विकेट से आ रहे हैं। राउंड द विकेट का क्या मतलब है कि वो लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर राउंड द विकेट से आएगा, मतलब राइट हैंडर का ओवर द विकेट, वहां से वो बॉल डाल रहे हैं और वहां से बॉल डाल रहे हैं। वो थोड़ी टप्पा खा के बाहर निकलने वाली, जो राइट हैंडर अगर खेले तो उसके एज लग के स्लिप में बॉल चली जाए। 3 स्लिप रखी हुई है उन्होंने स्टीव स्मिथ के लिए। क्या उनको वो हासिल होगा जो वो चाह रहे हैं? अभी हम देखेंगे। अगली गेंद तो छोटी गेंद थी, इसको पुल मार दिया है
स्क्वायर लेग की तरफ और एक ही रन हासिल होगा। आप सब लोगों का स्वागत है। आई एम तनय, मैं करता हूँ इंग्लिश और हिंदी में कमेंट्री एंड आई लव डूइंग कमेंट्री बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई पैशंस। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा जुड़ूँ। क्रिकेट की गुफ्तगू, क्रिकेट की रायशुमारी, क्रिकेट पर बहस और क्रिकेट पर डिस्कशन चलते रहना चाहिए और आप कीजिए हमारे साथ डिस्कशंस और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्कोर हो चला है इस समय 217 पर 2 और इस समय तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा है बस गर्म ही हुआ है। अभी तो इनको एक्शन करना बाकी है, अभी तो आगे देखिए होता है क्या। मुझे लगता है स्कोर पहुंचने वाला है 450 तक, क्योंकि अभी तो आए ही नहीं है ट्राइवल सेट खेलने। ट्राइवल सेट खेलने आएंगे तो आपको ये दोनों बल्लेबाज फीके लगने लगेंगे, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग ट्राइवल सेट करते हैं आपको याद दिलाती है वो बैटिंग एडम गिलक्रिस्ट की, क्विंटन डिकॉक की। क्विंटन डिकॉक तो खैर अभी भी खेल रहे हैं लेकिन टेस्ट छोड़ दिया उन्होंने खेलना। अच्छी गेंद एक बार फिर उसको डिफेंड कर दिया बहुत आसानी से यहाँ पे डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर बहुत ही इस समय मतलब खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, जब ये 88 से 100 के बीच का जो सफर था इनका, उसमें आधा घंटा लग गया था इनको। इनसे एक रन नहीं लग रहा था, बॉल नहीं छिड़ रही थी, एंड्रिक नोकिया की वो इतनी तेज बॉल डाल रहा था, दिख नहीं रही थी इनको। और ये जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है बल्लेबाज का जब वो अपने माइलस्टोन के करीब पहुंचता है, जैसे 50 के करीब पहुंचेगा ना तो एकदम गेम स्लो कर देगा, है ना। गैप्स नहीं मिल रहे होंगे, हल्का हल्का खेलेगा, चौके मारने की कोशिश नहीं करेगा। सिमिलरली जब बल्लेबाज पहुंच जाता है 90 के आसपास, तब उसको लगता है हे भगवान 100 हो जाए किसी तरह, 100 हो जाए किसी तरह। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो हमेशा रहती है। और आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वी डू कॉमेंट्री ऑन मोस्ट ऑफ द क्रिकेट मैचेस, मोस्टली टेस्ट मैचेस, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट एंड लीग क्रिकेट। वी आर द स्कोर कार्ड। और ये अच्छा शॉट लगाने की कोशिश जरूर की लेकिन नहीं लग पाया। यहाँ पे फील्डर मौजूद था थर्ड स्लिप पे, उन्होंने गाइड करने की कोशिश की थी, वहाँ पे फील्डर मौजूद तो कोई खास रन नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर हमें यहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और आपका इजहार मोहब्बत भी हो जाएगा हमारे लिए। तो अपना इजहार मोहब्बत देखो, अपने आप आशिकों से तो कर नहीं पा रहे हैं जिनसे आपको इश्क मोहब्बत है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हमको चाहिए आप लोगों का साथ। अब आप लोग साथ देने को राजी हैं या नहीं है वो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की इच्छाएं हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छा मसला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड किस तरह खेल रही है। और ये सामने का शॉट लगा दिया है बहुत तेजी से, लेकिन एक ही रन मिलेगा। जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है बहुत आक्रामक क्रिकेट है, आकर्षक तो है ही, आपको देख के बड़ा मजा आता है। अरे यार सब लोग ऐसे मार धाड़ वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, आते हैं जाते हैं, बल्लेबाज मारे जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा खेल क्यों पा रहे हैं? वो खेल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो दिमागी रूप से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी टीम में जगह है या नहीं। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, लेकिन अफसोस ये है कि टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं होती फ्री हिट जिसमें आपको अंधाधुंध शॉट लगाने का मौका मिल जाए। तो इंग्लैंड का जो ये सोचने का तरीका है, जो ये आज़ादी से खेलते हैं, जब उनको लगता है कि वो कहीं भी मार सकते हैं, मतलब फेल भी हो गए तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, काउंटी क्रिकेट खेल लेंगे, क्लब क्रिकेट खेल लेंगे। तो ये जो दिमागी रूप से आज़ादी है ये ऑस्ट्रेलिया और आप देखिए इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है। ये क्यों नहीं है इंडिया में? सोच के देखिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्रिकेट खेला हूँ अंडर 16 तक गुड़गांव से, मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं उतना आपसे साझा कर लेता हूँ। मैं गेंदबाज था। अगर आप गेंदबाज हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेल सकते हैं इंडिया में। गेंदबाजी बहुत आसान है इंडिया में। अगर आप 140-45 की स्पीड फेंकते हैं ना तो आपको रणजी ट्रॉफी तो खिलाई जाएगी, बिल्कुल खिलाई जाएगी, क्योंकि 140-45 अच्छी स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन आप अगर बल्लेबाज हैं तो बल्लेबाज आपकी तरह आपके साथ बैठे होंगे 40-50 बल्लेबाज, और ये पुल कर दिया है मिड विकेट के दरमियान, 2 रन यहाँ पे हासिल होंगे। 40-50 बल्लेबाज आपकी तरह ही वहां पे बैठे होंगे। अब उन सब के बीच आप अपना नाम कैसे कमाएंगे? बहुत वक्त लग जाता है। जब आपको मौका मिलेगा, मान लीजिए आपको इतनी बड़ी तादाद में से मौका मिला है भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलने का, अब आपको जनता कहने लगे यार अटैक करो, रिस्क लो, छक्के लगाओ, कैसे लगाओगे आप बताओ? आपने वो संघर्ष देखा है, वो चुनौतियां देखी हैं, वो कठिनाइयां देखी हैं, वो मुश्किलात देखे हैं, जितने इतने जूझते हुए आप पहुंचे हो उस लेवल पर, और वहां पे कोई आपसे कहे कि यार ये छक्का क्यों नहीं मार रहा, रिस्क क्यों नहीं ले रहा। रिस्क लेंगे, रिस्क लेके आउट भी तो हो जाएंगे, और आउट होके फिर बाहर बिठा दिया तो फिर कहां जाएंगे? ये सोचने पर मजबूर हो जाता है भारतीय बल्लेबाज। आप केएल राहुल को देखिए, केएल राहुल को देख के तो मुझे तरस आ जाता है। इतना शानदार बैट्समैन है वो, इतना मजेदार बैट्समैन है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों नहीं रन बना पाता? वो इसलिए रन नहीं बना पाता क्योंकि अगर उसको आप कप्तान भी बना दोगे ना, उसको लगा रहेगा मैं टीम से निकल जाऊंगा। और उसको वाइस कप्तान तक बना दो, उसको अपनी जगह की परवाह लगी रहेगी। भारत में इस बहुत बड़ी बात है जगह की परवाह, तभी बल्लेबाज कभी फ्रीली नहीं खेल सकते। बहुत अच्छी बॉल कराई, इसको डिफेंड कर दिया, यहाँ पे डेविड वार्नर ने, केशव महाराज कोशिश कर रहे हैं। आप फिर सोचिए कि वीरेंद्र सहवाग इतने फ्रीडम से कैसे खेल पाते हैं।
वीरेंद्र सहवाग इतनी फ्रीडम से इस वजह से खेल पाते थे क्योंकि उनके पास सौरव गांगुली जैसा कप्तान था। बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन इसको पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इन सबको खुली छूट दे रखी थी कि तुमको मैं 20 मैच दे रहा हूं, खेलो। 20 मैच बहुत ज्यादा मैच होते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए, 1 मैच मिलता है संजू सैमसन को, ऋतुराज गायकवाड़ को 1 मैच मिलता है, शुभमन गिल को 100 करके आए थे पिछली सीरीज में, अगले सीरीज में नाम नहीं आया उनका। तो ये जो तरीका है ना ट्रीट करने का हमारे खिलाड़ियों को, कि भाई आपको 1-1, 2-2 मैच के बाद ना अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है, हे भगवान 2 मैचों में रन नहीं लगे, अब तो बाहर हो जाओगे, कहाँ जाएंगे। और भारतीय खिलाड़ियों के साथ कमी क्या है कि अगर आप एक बार इंडिया खेल गए, उसके बाद आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही नहीं पसंद, ये भी बहुत खराब बात है। अच्छी गेंद एक बार फिर बिल्कुल सामने कराई गई, इसको आसानी से डिफेंड कर दिया, लेकिन देखो गेंदबाजी कैसी हो रही है इस मैच में। इस मैच में पिच इतनी आसान है, मुझे लग रहा था 100 रन कम बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, अब लग रहा है 150 पौने 200 रन कम बनाए हैं। 300 साढ़े 300 तो मजाक में बनना चाहिए इस पिच पर। अच्छी पिच है, अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद भी रन खा सकता है प्लेयर, और अच्छा सामने का एक सिंगल लिया गया। तो मैंने जो आपको ये मानसिक संतुलन की बात बताई है, अब गेंदबाजों पे उतना दबाव नहीं है, समझ रहे हैं, गेंदबाजों पे उतना दबाव नहीं, जितना बल्लेबाजों पे दबाव है। केएल राहुल पूरे टाइम दबाव में रहते हैं, उनको लगता है उनकी जगह चली जाएगी। कैसे चली जाएगी जगह, आपको कप्तान बनाया हुआ है, आप उसके बावजूद अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप आक्रामक क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है हमारे सिलेक्शन पैनल में, जो कि फ्रीडम नहीं देता बल्लेबाज को कि कोई नहीं, आप रिस्क लो ना, आप रिस्क लो। तो हम रिस्क लेने का उनको वो दायरा ही नहीं देते, वो फ्रीडम नहीं देते, वो आज़ादी नहीं देते, क्योंकि बल्लेबाज इतना डर के तो पहुंचता है वहां पे, बचपन से मेहनत कर करके लाखों बच्चों में से आगे निकल करके वो अगर इंडिया की टीम से खेलने पहुंचा है, काबिलियत तो है उसमें, लेकिन वो डर भी तो है ना कि यार जो मैंने इतना संघर्ष देखा है, जो मेरे माता पिता ने इतनी चुनौतियां सही हैं और इतने लोगों का हमने एहसान लिया हुआ है, उसके बावजूद अब मुझे यहाँ पे खेलने को मिल रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर आउट हो जाऊं रिस्क लेके? तो भारतीय बल्लेबाज रिस्क ले ही नहीं पाएगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और इस बारे में हमको सोचना चाहिए, वरना हमारे प्लेयर्स फ्रीडम से खेल ही नहीं सकते। वीरेंद्र सहवाग इसलिए खेलते थे फ्रीडम से, युवराज सिंह इसलिए खेलते थे क्योंकि सौरव गांगुली खड़े थे पीछे, वो कहते थे तुम फेल हो जाओ, मैं तुम्हें टीम से निकलने नहीं दूंगा। अगर आपके पास ऐसा कप्तान खड़ा हो तो आप अलग तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, आई समझ। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है खेलने में, वो जरूर है। बाकी आप लोग अगर हमें देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। मैं दोनों में आपके साथ कमेंट्री करना चाहता हूं, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बना रहूं। और मैं आपको बता दूं, मैंने कमेंट्री करी हुई है बिशन सिंह बेदी सर, सुरेश रैना और ब्रेटली के साथ भी, और ये था डेफ लोगों का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, डेफ जो बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते, उनका भी वर्ल्ड कप होता है, वहां पे मैंने कमेंट्री करी थी, और आप मेरी तस्वीरें भी देख सकते हैं युवराज सिंह, ब्रेटली, इन सब के साथ। लेकिन मेरा मन यही है कि मैं अपना खुद का कुछ शुरू करूं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों में हम कितना बैठ सकते हैं। तो जब तक आप लोगों का मेरे साथ समर्थन होगा तब मैं बहुत आगे जाऊंगा, और आप लोगों को अपने साथ लेके चलूंगा। और हम क्रिकेट देखेंगे, सुबह शाम देखेंगे, सुबह 5 बजे शुरू करते हैं, उसके बाद रात तक चलता है हमारा खिलौना, लेकिन वो आपके साथ ही चलेगा। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर, लेकिन इसको छोड़ दिया आसानी से। पिच बहुत आसान है, इसमें बहुत रन लगने वाले हैं, 400 साढ़े 400 कहीं नहीं गए। और अभी तो एलेक्स केरी, कैमरन ग्रीन और ट्रेविस हेड ने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है बैटिंग करने में। वो जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप पूरे दिन यही करते हैं तो आप काम धंधा क्या करते हैं? यार ऐसा नहीं है कि पूरे दिन यही करता हूँ, हाँ 5-6 घंटे में दिन में ज़रूर निकालता हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरी जो नौकरी है वो ज़रूर अलाउ करती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। I am a professor of English literature and I teach English at the university. I also like to do commentary in English, but most of the people do not like it. ज़्यादातर लोगों को हिंदी बहुत पसंद है, तो हम हिंदी की कोशिश करते हैं। और इस समय पहुंच गया है टोटल 223 पर 2 विकेट जा चुकी हैं। आप सब लोग हमें सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी, रोज़ पूछती हैं यार 6 घंटे बैठे रहे कितने लोग बढ़े, मैं बता देता हूँ 4 लोग बढ़ गए, 5 लोग बढ़ गए। तो वो मतलब अभी पिछले 1.5 महीने से तो यही सुन रही है, 4 लोग बढ़ गए, 3 लोग बढ़ गए। आप लोग प्लीज उनको थोड़ी और खुशी दे सके तो जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर अगर मैं आपको बताऊं तो मार्को यानसन का ये ओवर चल रहा है, स्टीव स्मिथ उनको खेल रहे हैं। अच्छी गेंद थी, इसको ड्राइव कर दिया कवर्स के दरमियान, लेकिन 1 ही रन यहाँ पर हासिल होना था और 1 ही रन मिल गया। और मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किलात हुई थी साउथ अफ्रीका को दिन शुरुआत करने में भी, क्योंकि मार्लस लाबुशाने आउट नहीं होते। मार्लस लाबुशाने बड़ा अच्छा खेलते थे, सेट हो जाते हैं वो 40-50 बॉल पे, तो वो 10-15 रन नहीं करते हैं, उसके बाद वो रन स्कोरिंग तेज करते हैं। और कब उनकी 100 हो जाती है आपको पता नहीं चलता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 पारी खेली, तीनों में 100 लगा दिया, एक में तो शायद 200 लगा दिया उन्होंने।
तो मार्नस लाबुशाने तो गलती से आउट हो गए। भाई हुआ क्या कि साइड पे बॉल खेली गई मिड विकेट की तरफ कोने में, और वहां से एक रन बहुत तेजी से भागा, फील्डर ने थ्रो कर दी, ओवर थ्रो हो गई, दूर चली गई बॉल। फाइनल का फील्डर भाग के आया, उसने बॉल पकड़ी और उसने फेंक दी नॉन स्ट्राइकर की तरफ। मार्नस लाबुशाने तैयार नहीं थे दूसरा रन भागने के लिए ओवर थ्रो पे, और डेविड वार्नर आपको पता ही है बुलेट की तरह मशीन है, वो तो पहुंच गए धड़ धड़, और अपने मार्नस लाबुशाने रह गए, और वो आउट होके बेचारे वापस जा रहे थे, बड़े दुखी थे, च्युइंगम चबाते रहते च्युइंगम, उन्होंने गेंद मतलब ग्राउंड पर ही थूक दी कि जा खत्म हो गई, अब कोई मन नहीं कर रहा है। खैर कैसे हैं आप लोग, आप बताइए आप लोग कहाँ से आते हैं, तो बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों से बात करने में। और इस समय शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मैं शायद पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है इस मैच में अगर आप सूरत हाल देखें तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम 450 रन यहाँ पर ज़रूर बना के खड़ा होगा, और 450 बना देगा तो 250 पौने 300 की लीड हो जाएगी, और वो फिर साउथ अफ्रीका निकाल नहीं पाएगा। और ये पुल कर दिया है, पुल करते ही 1 रन मिलेगा क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। ये जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है और जो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम है, अब दोनों के बारे में आपको बता ही देता हूँ कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ये कुछ इस तरह के बना हुआ है कि जो उसकी साइडों की बाउंड्री है, जैसे ऑफ साइड होती है, लेग साइड होती है, वो बहुत बढ़िया विशाल का है, 80-80 मीटर, और जो सामने की बाउंड्री है वो है 60-60 मीटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना जब वनडे क्रिकेट होता है तो कोई भी ना पूरी गेंद नहीं डालता, क्योंकि अगर आप पूरी गेंद डालेंगे तो आपको भी पता ही है इतनी क्रिकेट सबने के लिए, अगर बल्ले के नीचे वाली गेंद आती है ना उसमें भड़ाक करके सामने शॉट लग जाता है। तो यहाँ पे ना कोई पूरी गेंद नहीं डालता, यहाँ पे छोटी गेंदें डाल दी जाती हैं। छोटी गेंद पे ना आप साइडों पे शॉट मारेंगे, और साइड बहुत लंबी लंबी है, बहुत आसानी से वो डिफेंड हो जाती है, बहुत आसानी से वहाँ फील्डर बॉल पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये स्ट्रैटेजी होती है इस ग्राउंड पे, इस पे पर्थ पे। तो यहाँ पर वही आपको याद होगा ना, विराट कोहली ने हारिस रॉफ को 2 क्या शानदार छक्के लगाए थे, कहाँ लगाए थे ध्यान कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जो पहला छक्का, जो सबसे खूबसूरत छक्का है, जो शायद विश्व क्रिकेट में कुछ ही लोग कर सकते हैं वो कारनामा, वो उन्होंने करके दिखाया था। वो कैसे लगाया था, स्लोअर गेंद थी, विराट कोहली थोड़े से हटे और उन्होंने एल्बो सीधा किया हुआ था और वहीं से पंच कर दिया गेंद को सामने की तरफ। उन्होंने साइडों की तरफ देखा भी नहीं, वो बॉल आप साइडों की तरफ भी खेल सकते हो। उस शॉट की खास बात क्या है, लोग पागल क्यों हो गए उस शॉट को देख के, क्योंकि ये साइड पे खेलने वाली बॉल को उसने सामने खेल दिया। ये है विराट कोहली, मतलब वो जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। ये बॉल खेलने वाली थी साइडों पे, उन्होंने उस बॉल को, गुड लेंथ की बॉल को जो ऑलमोस्ट छाती पर चढ़ने वाली थी, उसने उस बॉल को सामने मार दिया। क्या बात है, शानदार बात। और वो और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई खिलाड़ी ये सब कर पाए तो आपको समझ आ जाता है कि क्या शानदार खिलाड़ी होगा वो। और ये करके मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे उन्होंने छक्का लगा दिया, क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की सामने की बाउंड्री छोटी, तो उनको पता था, दिमागी रूप से पता था ना कि भाई छोटी बाउंड्री ये है, यहां मारूंगा तो ज्यादा सफलता मिलेगी, बॉल चाहे कहीं पे भी आए शॉट मुझे वहीं लगाना है। और वो उन्होंने वहां से लगा दिया शॉट। ये विराट कोहली की खास बात है। अब आपको एक और छक्का याद दिलाता हूं, जो उन्होंने मोहम्मद नवाज को मारा आखिरी ओवर में, जब हमको चाहिए थे शायद 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, तब उन्होंने जो छक्का लगाया, जो नो बॉल की गई, वो उन्होंने लगाया लेग साइड पे। इतना लंबा शॉट है, आप रिप्ले देखें, वो इतना बड़ा शॉट है, 80-85 मीटर का शॉट, और वो भी जस्ट बाय चांस वो छक्का चला गया कि भाई फील्डर के ऊपर से निकल गई हल्की सी बॉल। क्यों? क्योंकि साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी थी, एक्सट्रीम बड़ी बाउंड्री थी। तो ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की खास बात यही है कि उसके जो दायरे हैं वो बहुत अलग है, साइडों से बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा, और सामने से थोड़ा थोड़ा छोटा। और आप लोग कैसे हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज पीपल लेट मी नो हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं दिल्ली गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव अगर आपने सुना हो तो दिल्ली के बिल्कुल लगता हुआ शहर है, और आजकल बहुत प्रगतिशील इलाका हो चुका है। लेकिन हम जब से रह रहे हैं तब तक तो यहाँ पे कुछ खास था नहीं, लेकिन पिछले 10-15 साल में यहाँ की काया बदल गई है। आप भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, और हम दोस्ती आपसे जरूर करेंगे। हमारे काफी दोस्त वैसे आते रहते हैं, जैसे ही सुबह होगी, सूरज निकलेगा और वो अपनी नींद से उठेंगे और काम धंधे पर सेटल हो जाएंगे, तब वो जरूर यहाँ पर आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे। और मेरा कॉलेज थोड़ा शाम का होता है, मैं 3-3:30 बजे कॉलेज जाता हूँ और 2 क्लासेस लेके वापस आ जाता हूँ। उससे पहले तक तो मैं आप लोगों के साथ ही बरकरार रहूँगा। और आप अगर यहाँ पर हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर लाइक कीजिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप तक मैं ज़्यादातर मैचेस पहुँचा सकूँ और आप लोगों से जुड़ता रहूँ। एंड आई वुड लाइक टू नो, डू यू वांट टू सी कमेंट्री इन इंग्लिश और डू यू वांट टू सी कमेंट्री इन हिंदी? और क्रिकेट की गुफ्तगू, क्रिकेट की रायशुमारी, क्रिकेट की बहस और क्रिकेट पे वार्ता चलती रहनी चाहिए। और मैं उस वार्ता को चलाने योग्य इंसान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोग ना हो मेरे साथ। और आप लोग होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर, इस समय रबाडा की जगह आ गए हैं गेंदबाजी करने लुंगी अंगीडी। लुंगी अंगीडी इस समय देखो बहुत पतले नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने वेट लूज किया है। मतलब ये चाहते हैं कि भैया मैं थोड़ा और फिट नजर आऊँ, और बहुत वेट लूज कर लिया भाई, काफी वेट लूज करके आ गए यहाँ पर लुंगी अंगीडी। लुंगी अंगीडी की खास बात क्या है कि उनको रिवर्स स्विंग करानी आती है।
रिवर्स स्विंग रबाडा को नहीं डालनी आती। अब आप पूछेंगे रिवर्स स्विंग क्या होती है? रिवर्स स्विंग बहुत एक शानदार कला है जिसको पाकिस्तान के खिलाड़ी इमरान खान ने शुरू किया, फिर वसीम अकरम को सिखाया, फिर वकार यूनिस को, शोएब अख्तर को, मोहम्मद आसिफ, इन सबको सिखा दिया। फिर भारत के भी खिलाड़ियों को आ गई, बहुत सी रिवर्स स्विंग करते थे, जहीर खान भी, और आरपी सिंह बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग करते थे। आजकल मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह भी अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं। रिवर्स स्विंग की कला बहुत आसान है। अगर मैं आपको समझाऊं तो जो लाल बॉल होती है, लाल बॉल से रिवर्स स्विंग ज़्यादा अच्छी हो पाती है। लाल बॉल जो होती है तो उसकी जब बॉल थोड़ा पुराना होने लगता है, 15, 18, 20 ओवर हो जाते हैं, जब बॉल पुराना होने लगेगा, 80 ओवर तक लाल बॉल जो है, 80 ओवर तक तो चलानी है आपने, उसके बाद आपको नई बॉल मिलती है। अंपायर आपको नई बॉल ऑफर करता है कि 80 ओवर हो गए, इसके बाद आप नई बॉल ले सकते हैं। तो जब लाल बॉल जो है उसके दो हिस्से होते हैं, सीम होता है, सीम समझते हैं, जिससे बॉल पकड़ी जाती है, या तो उसको आप सिल के बनाते हैं या मशीन से बनाते हैं। भारत में सिल के बनाई जाती है, एसजी की बॉल होती है, अच्छी बॉल यहाँ पे कराई लुंगी अंगीडी ने, इसको डिफेंड कर दिया। तो जो सीम वाली बॉल होती है ना, तो जो सीम से आप पकड़ते हैं उसकी एक तरफ हिस्सा होता है, दूसरी तरफ हिस्सा होता है। तो जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाती है तो फील्डर्स क्या करते हैं कि एक तरफ वाले हिस्से को ना शाइन करते रहते हैं अपनी पैंट से, शर्ट से। पहले सलाइवा लगा लेते थे, मतलब थूक लगा लेते थे, और पसीने से, अब थूक मना कर दिया है कोरोना के बाद से, तो अब सिर्फ पसीने से आप कर सकते हैं, और पैंट से, शर्ट से रगड़ रगड़ के उसको एक साइड शाइन कर लेते हैं। अब वो क्यों करते हैं एक साइड शाइन? एक साइड शाइन इसलिए करते हैं कि अगर आप सीम से बॉल पकड़ के बॉल डालेंगे तो जिस तरफ शाइन होगी उस तरफ बॉल मूव करेगा, और इसको कहते हैं रिवर्स स्विंग। और ये साइंटिफिक मेथड है, और ये साइंस कैसे है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, और अच्छी गेंद है, इसको भी आसानी से खेला और ये डॉट बॉल हो गई। और ये साइंटिफिक मेथड इस वजह से है क्योंकि जैसे जैसे आप बॉल को सीन करते हो, मतलब शाइन करते हो जैसे जैसे बॉल को, तो जो शाइन वाला हिस्सा है वो भारी हो जाता है। तो जब आप बॉल को फेंकोगे तो वो भारी वाले हिस्से की तरफ मूव कर जाती है। और ऐसा ही हमको देखने को मिलता है जब गेंदबाजी करते हैं। ईशांत शर्मा बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं। मोहम्मद आसिफ तो मतलब जानदार आदमी थे रिवर्स स्विंग के, और आजकल मिचेल स्टार्क बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं। हसन अली आपको याद हो, मोहम्मद शामी बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं, और इस समय खेल रहे हैं लुंगी अंगीडी को, जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं, उनको खेल रहे हैं यहाँ पर स्टीव स्मिथ। और बॉल पुरानी हो गई है क्योंकि भाई बड़ी मार लग गई है बॉल को, और ये देखिए लेग साइड में बॉल निकल गई है। अब रिवर्स स्विंग की खास बात ये है कि आपको कंट्रोल बहुत अच्छा आना चाहिए। हर कोई नहीं डाल सकता रिवर्स स्विंग, जिसको कंट्रोल अच्छा होगा वो रिवर्स स्विंग अच्छी डाल पाएगा, बाकी उनका उतना कह नहीं सकते। और आप लोग हमारे साथ बरकरार हैं, इस बात की हमको बेहद खुशी है, गर्व है, गुरूर भी है। लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप हर रोज़ हमारे साथ जुड़ेंगे, और हर रोज़ आपको जुड़ने के लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको ज़रूर लगेगा कि बार बार सब्सक्रिप्शन का बोल रहा है, लेकिन यार देखो, मेरा जो हौसला है वो उसी से बढ़ता है कि मुझे लगता है कि लोग पसंद करने लगे हैं, और अगर आप वो करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी और आपकी इच्छा है, आपको जो स्वीकृत हो आप वो कीजिए। Whatever suits you, you are free to do that, but I will only request you to subscribe to me so that I feel good about what I'm doing after rising at 5 AM in the morning। 5 बजे उठ के मैं आपके पास आता हूँ और क्रिकेट की बातें करना चाहता हूँ। वो इसीलिए आता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद आप लोग मुझे सुनना चाहें। खैर, अब ज़रूरी तो नहीं है हर कोई मुझे उतना ही सुनना चाहेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग ज़रूर सुने हमें भी, और आप और हम इसी तरह साथ में जुड़े रहें, इस बात का एहसास मुझे ज़रूर है, और हम कोशिश करेंगे ऐसे जुड़ने की। 229 पर 2 हो चुका है यहाँ पर स्कोर, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्कोर कार्ड पर भी। हमारा स्कोर कार्ड आपके पीछे ज़रूर आपको नज़र आ जाएगा, मतलब मेरे पीछे, आपके पीछे नहीं, स्क्रीन पर। और बैट्समैन खेल रहे हैं स्टीव स्मिथ, 58 पर हैं 126 गेंदों पे, और 135 पर खेल रहे हो 135 पर खेल रहे हैं डेविड वार्नर, और यहाँ पर क्या शॉट लगाया है, और 1-2 रन मिल गए बहुत तेजी से। ये भगवान, 63 ओवर चल रहा है। 63वें ओवर में आप सोचिए पार्टनरशिप कितनी बड़ी हो चुकी है, उसके बाद भी इन लोगों के पास इतना स्टैमिना है कि ये 2-2 रन भाग सकें। जिसका मतलब क्या है कि फिटनेस पे बड़ा काम करते हैं। एक हमारी टीम की फिटनेस है दोस्तों, मतलब विराट कोहली को छोड़ दीजिए तो बाकी सबने तो जैसे छोड़ ही दिया है फिटनेस वगैरह करना। ऋषभ पंत को देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक बार इतना टैलेंटेड आदमी है, थोड़ा और फिटनेस पे काम करेगा तो कितनी बेहतरी हो जाएगी, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है। रोहित शर्मा को फिटनेस पे काम करना चाहिए। पहले ही यूज्ड टू बी वेरी फिट, रोहित शर्मा वाज अ वेरी वेरी फिट क्रिकेटर। और ये सब हम बात करते करते ये भूल ही गए कि टी हो गई है भाई, और टी की आखिरी बॉल पे 2 रन ले लिए थे यहाँ पे, और टी होते होते यहाँ पर स्कोर पहुंच गया है बहुत ज्यादा, 229-30 का स्कोर हो चुका है। और 230 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हाँ, साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं कैसे थकान से भरपूर, थके हारे पहुंच रहे हैं डगआउट में, और थके हार के जब वो डगआउट में पहुंचेंगे तो थोड़ी बहुत आपस में मतलब बातचीत भी होगी कि ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे कैसे होगा कि हम इनको आउट कर दें, क्योंकि तो आउट होते नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट नहीं होगी,
जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और जितनी आसान ये पिच है, ऑस्ट्रेलिया का आउट होना बहुत कठिन है। अगर आउट नहीं होगी तो फिर डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करेंगे 500 पे, और 500 रन बना देंगे अगले 60-70 ओवर में। 60-70 ओवर में कितने रन बनाने हैं? 280 रन बना देंगे, और 70 ओवर में 280 रन बना के इनको कहेंगे आओ तुम बैटिंग कर लो, लीड है हमारी 300 की, बनाओ जितने रन बनाने हैं। साउथ अफ्रीका आउट हो जाएगा पहले ही, मैच खत्म हो जाएगा चौथे दिन मैच खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आज तो दूसरा ही दिन है, दूसरे ही दिन पे आप सोचिए कि कितना आगे निकल गया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अभी अभी के समय में 30-40 रन आ गए, और आप देखिए 30-40 रन में अभी आप 35 ओवर और जोड़ लीजिए, 35 ओवर के मतलब 210 गेंदों में कम से कम 110-15 रन, 110-15, 150 रन आगे निकल जाएगा ऑस्ट्रेलिया आज का दिन खत्म होते होते। 150 रन अहेड, 150 रन आगे निकल जाएगा ऑस्ट्रेलिया आज का दिन खत्म होते होते, कम से कम, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद फिर वो अगला एक सेशन और बैटिंग करेंगे, मतलब तीसरे दिन का एक सेशन बैटिंग करेंगे, उसमें बना देंगे 100 रन और 250 रन आगे निकल जाएंगे। 250 रन आगे निकल के कहेंगे साउथ अफ्रीका अब तुम बैटिंग करो बच्चों, आओ तुम आओ खेलने, तुम भी तो खेलने ही आए हो घर पे कह के कि हम खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो तुम भी खेलो। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आएगी, साउथ अफ्रीका की सूरत हाल बदल जाएंगे। 250 रन की लीड जब आपके सामने खड़ी हो और फिर वो लीड उतारनी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देना है, और ये भी उस टीम के लिए जिसने 250 रन अभी तक बनाए नहीं है। 3 इनिंग्स हो गई हैं यहाँ पे, पहला टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरे टेस्ट मैच भी अब खत्म ही है, क्या बचा है इस टेस्ट मैच में? हाँ मतलब ऐसा कुछ चमत्कारी ना हो जाए, कहीं साउथ अफ्रीका आउट ही ना हो। पिच तो देखो बहुत अच्छी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, पिच बहुत अच्छी है, और पिच पे बल्लेबाजी करना बेहद आसान भी है। तो आप अगर सोचें कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जल्दी रन बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया जल्दी से जल्दी रन इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो अपने गेंदबाजों को समय ज्यादा देना चाहता है विकेटें लेने के लिए। जैसे आपको याद है अभी आखिरी टेस्ट मैच में क्या हुआ था, जब भारत ने डिक्लेयर कर दिया था, दूसरे टेस्ट मैच की बात है शायद, हाँ दूसरे या पहले टेस्ट मैच की बात है, जब भारत ने जल्दी डिक्लेयर कर दिया था, जब शुभमन गिल और क्या कहते हैं चेतेश्वर पुजारा ने 100 रन मार दिए थे, दोनों ने सैकड़ा लगा दिया था, 250 रन बना के भारत ने डिक्लेयर कर दिया था, और अपने गेंदबाजों को दिया था पूरा 1 दिन 30 ओवर कि आपके पास 120 ओवर है, विकेट ले लो। और विकेटें नहीं मिल रही थी, पहली पार्टनरशिप हो गई थी 150 रन की, नाजम हसन शांतो की और जाकिर हसन की। जाकिर हसन ने डेब्यू पे 100 मार दिया था, अभी पिछले हफ्ते की तो बात है, 2 हफ्ते हुए होंगे। तो इसी वजह से मुझे लगता है पिच इतनी आसान है, इस पिच पे विकेट लेने के लिए कम से कम गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा ओवर देने हैं, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया देगा अपने गेंदबाजों के काफी ओवर, और उसको देने के लिए उनको स्कोर तेजी से करना पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई इंग्लैंड इतनी तेज खेलती है, इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अब आप खुद सोचिए कि जो रन इंग्लैंड बनाता 60 ओवर में, नहीं 100 ओवर में, 100 ओवर में जैसे इंग्लैंड पहले बनाता था 300, अब वो वही 100 रन बना देता है 60 ओवर में। अभी जो 40 ओवर बच गए, ये फायदा किसको हुआ? ये इंग्लैंड को फायदा हुआ कि उनके गेंदबाजों को एक्स्ट्रा 40 ओवर मिलते हैं विकेट लेने के लिए। ये कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये जो परिवर्तन है, जहां पे उन्होंने अपने गेंदबाजों को इतना ज्यादा टाइम दे दिया है कि तुम अपना वक्त लो और विकेट लेके दिखाओ, क्योंकि मैच तभी जीता जाएगा जब 20 विकेट ली जाएंगी, और 20 विकेट लेने के लिए ओवर्स तो ज्यादा चाहिए ही ना, बॉलर्स को टाइम लगता है ना सेटल होने में, और जब वो बैट्समैन को सेट करते हैं मतलब सेटअप करते हैं, एक बाउंसर डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे, बाहर निकालेंगे 3 गेंदें, एक अंदर लेके आएंगे, तो उसमें वक्त लगता है। तो फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज कोशिश करते हैं अपने गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा समय देने की, कि आपको विकेट लेनी है ना, हम आपको समय देते हैं, आप विकेट लीजिए। और ये कितनी शानदार सोच है, कितनी बेहतरीन सोच है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर कोई ऐसा भी टीम कर जाए कि मान लीजिए आप पहले बनाते थे 400 रन बनाने, चलो फर्स्ट इनिंग में 400 रन अच्छे रन माने जाते हैं ना, चलो 350 रन माने जाते हैं, 350 बनाने के लिए इंग्लैंड पहले ले लेता था 110 ओवर के करीब, है ना, 110 ओवर में भी आप 350 रन बना दो। आज वही 350 रन वो बना देते हैं 60-70 ओवर में, तो ये जो बचे 40-45 ओवर बच गए, है ना, ये किसको फायदा हुआ? ये फायदा हुआ इंग्लैंड के गेंदबाजों को, क्योंकि अब उनको ज्यादा टाइम मिलेगा विकेट लेने के लिए। और ये तो मतलब 2 तरफा वार हो गया, एक तो आपने रन भी बड़ी तेजी से कर दिए, सामने वाली टीम को दबाव में डाल दिया, तनाव में डाल दिया, और उनको बहुत परेशानी में डाल दिया, क्या चल रहा है हमारे साथ, कोई चौके मार रहा है, कोई छक्के मार रहा है, हैरी ब्रूक जैसा बैट्समैन आके अपनी पहली ही सीरीज में 2-2 शतक जड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतने आसान तो नहीं होना चाहिए खेलना, लेकिन इतना ही आसान कर दिया है इंग्लैंड ने खेलना। उनकी सोच बहुत आगे हो गई ना, डर खत्म हो गया। डर भारत से कभी खत्म नहीं हो सकता, इसकी वजह मैंने आपको बताई थी, शायद आप लोग जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, मैंने वजह इसकी यह बताई थी कि डर इस वजह से खत्म हो जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों का, क्योंकि उनको पता है कि अगर ठीक है नहीं भी चले, आउट हो गए, तो क्या होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, काउंटी क्रिकेट खेल लेंगे, ये सब चक्कर लेंगे। भारत में ये सब नहीं हो सकता। भारत का एक एक बल्लेबाज जो इस
स्तर पर पहुंचा है, जो आज के वक्त पे इंडियन क्रिकेट खेल रहा है, उसने पिछले 10 साल इतनी मेहनत लगाई है छोटे क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, एज ग्रुप क्रिकेट में, और आप सोच के देखिए कितना दबाव के साथ वो खेला है, उसके बाद वो वहां पर पहुंचा है। और जब वो वहां पे पहुंचे, उसको फिर वहां पे वो जाके कहे अब तो इसको ना अटैक करना है, शॉट लगाने हैं। अब अटैक तो वो कर लेगा, शॉट तो वो लगा लेगा, लेकिन फिर वो अगर वो आउट हो जाए, फिर उसको जब टीम से निकाला जाएगा, क्या वो सहन कर पाएगा? क्या वो भूल जाएगा अपनी चुनौतियां, अपने संघर्ष जो इतने सालों से उसने देखे हैं? नहीं भूल पाएगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि केएल राहुल, उनकी शक्ल पर लिखा हुआ है तनाव, स्ट्रेस, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है। उनको आप कप्तान भी बना दोगे ना, उनको तब भी अपनी जगह की परवाह होगी कि यार मेरी जगह में कैसे, मतलब कैसे, बिल्कुल ऐसे लगा रहेगा उनको, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है कि वो हमेशा ही प्रेशर में रहते हैं। सौरव गांगुली ने सिस्टम को सुधारा था, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इन सब खिलाड़ियों को कहा था कि तुम्हें जितना फेल होना है फेल हो जाओ, 20 मैच दूंगा ही दूंगा तुमको। अब जब आपने खिलाड़ियों को इतना ज्यादा क्वेश्चन दे दिया कि अरे यार 20 मैच तो मिलने ही है ना, 20 में 4-5 में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो बस बन गई बात। और वीरेंद्र सहवाग के साथ यही हुआ, जब उनको आजादी दी गई कि भाई तुमको जैसे खेलना है, जैसे मर्जी खेलना है वैसे खेल, और वो खेलने लगे। और खेल के फिर वो जो खेल दिखाते थे, फिर लोगों के छक्के छूट जाते थे। वीरेंद्र सहवाग की खास बात यही थी। और इस समय हम देख लेते हैं कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने जरूर सब्सक्राइब किया है, लेकिन अगर थोड़े लोग और सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हौसला और बढ़ जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर, अभी टी हो चुकी है जी, चाय वाय पीने चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। मुझे लग रहा है चाय तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पी रहे हैं, यहाँ पर बाकी खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उनको तो ग्लूकोज या फिर WHO ORS ऐसे कोई ट्रिप व्रिप चढ़ाई जाएगी। इतनी फील्डिंग कर करके, रन खा खा के, मार खा खा के वापस आए हैं, उनको 20 मिनट का रेस्ट मिला है, लोटपोट हो गए होंगे, ड्रेसिंग रूम में कमर वमर सीधी करवा रहे होंगे। उसके बाद वापस भी तो आना है भाई, फिर से फील्डिंग करनी है, क्योंकि आउट तो होने से रहे। पिच इतनी आसान है, आउट कैसे होंगे? रावलपिंडी की पिच याद है, जहाँ पे बेन स्टोक्स ने वो डिक्लेरेशन की थी, जल्दी डिक्लेरेशन कर दी थी, लोग कह रहे थे हे भगवान कैसे डिक्लेरेशन करती, इसलिए करी थी ना जल्दी डिक्लेरेशन, क्योंकि पिच इतनी आसान थी। आसान पिच पे बॉलर आउट कैसे करेगा जब तक उसको आप ज्यादा टाइम नहीं दोगे? आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है बॉलर को, और बॉलर को टाइम कैसे मिलेगा जब आप तेज खेलोगे। अब ये कॉन्सेप्ट भी तो कितना सिंपल है ना, कि वही ये जो आप 300-400 रन बना रहे हो फर्स्ट इनिंग्स में, आप जनरली लोगे 120 ओवर, 120 ओवर की जगह 400 रन बना दो 70 ओवर में, आपको मिल गए फालतू के 50 ओवर मिल गए फालतू के। ये 50 ओवर जो बीच का गैप क्रिएट हो गया ना, ये बॉलर्स के लिए फायदा देगा। बॉलर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा विकेट लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब सफलता हासिल करेंगे। और जब तक 20 विकेट नहीं ली जाती, टेस्ट मैच नहीं जीता जाता। टेस्ट मैच तो 20 विकेट लेने के बाद ही जीता जाएगा। और ये आपको जितनी जल्दी समझ जाए उतना जल्दी बेहतर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की जो जनता होती है, टेस्ट क्रिकेट के जो श्रोता होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हर कोई टेस्ट क्रिकेट को नहीं देख सकता, हर कोई टेस्ट क्रिकेट समझ नहीं सकता। टेस्ट क्रिकेट समझने में परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, और मेरे ख्याल से एक अलग एहसास है टेस्ट क्रिकेट। आप खुद सोचिए, 5 दिन 15 सेशन, बॉल की बदलती सूरत, पिच के बदलते हालात और मौसम का बदलता मिजाज भी कई बार टेस्ट क्रिकेट में नतीजा आपको लाके नहीं देता। अब आप पूछेंगे बॉल की बदलती सूरत, ये क्या बात की है? जी हाँ, 80 ओवर तक आपको एक बॉल चलानी होती है, कम से कम, उससे ज्यादा भी चला सकते हैं। 80 ओवर में बॉल की सूरत कितनी बार बदलेगी सोचिए। कभी वो नहीं होगी, कभी उसको शाइन किया जाएगा, कभी शाइन नहीं किया जाएगा। स्पिनर्स के लिए अच्छी बॉल बनाई जाएगी। कौन बॉल बना कौन रहा है? प्लेयर बना रहे हैं। आपने देखा नहीं, बॉल को अपने वो ट्राउजर से लगड़ते रहते हैं, पसीना लगाते रहते हैं उस पर। वो किस लिए लगाते हैं? शाइन करने के लिए, जिससे बॉल में स्विंग आए, स्पिन आए, बाउंस आए, ये इस वजह से करते हैं। दूसरी चीज, पिच के बदलते हालात। हर दिन पिच अलग होती है कि भाई आखिरी के टाइम में जब पिच टूट बिखर जाती है, उस समय स्पिनर्स को खेलना आसान है क्या? नहीं है आसान। तो जो आखिरी बैटिंग करने वाली टीम है, मतलब जो 4 इनिंग्स होंगी ना टेस्ट मैच में, जो चौथी इनिंग्स खेलेगी, उसके लिए कितनी कठिनाई होगी। और ये बात है टेस्ट क्रिकेट की जो हर किसी को समझनी चाहिए। जो मजा आएगा देखने में टेस्ट क्रिकेट को, वो वहां से मजा आएगा, और वहीं से अच्छा लगेगा टेस्ट क्रिकेट देखने में, जब लोग समझ पाएंगे हाँ यार इसमें तो बड़ी बारीकियां हैं, और हर कोई इस बारीकी को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। टेस्ट क्रिकेट एक उबलती चाय की तरह है। 5 दिन 15 सेशन, लंबा समय, कम से कम हर दिन 6.5-7 घंटे का खेल होता है। तो आप सोच लीजिए कि 7 घंटे का खेल अगर हर दिन हो रहा है तो 5 दिन में 35 घंटे का खेल है। 35 घंटे के खेल के बाद भी विश्व में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें नतीजा ना आए। ये एक लौता टेस्ट क्रिकेट है जिसमें आप 35 घंटे मेहनत, मशक्कत, संघर्ष करने के बावजूद, जरूरी नहीं है कि कोई टीम जीते कोई हारे, हो सकता है मैच ड्रॉ हो जाए। ये खास बात है, ये है टेस्ट क्रिकेट। और ये आपको देखने में मजा इस वजह से आएगा क्योंकि हर कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कुछ जगहों पर टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेला जाता है, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया में ठीक, इंडिया में तो मजा नहीं आता आजकल यार, इतनी स्पिनर विकेट बना देते हैं, 2-2 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। मतलब चौथे पांचवें दिन जाने वाले मैच में मजा अलग है ना। आपको याद होगा ऋषभ पंत ने जब हमें जिताया था ऑस्ट्रेलिया में गाबा में, आखिरी दिन पे वो चौका लगाया था उन्होंने नेथन लायन को, वो जो मैच जीतने मजा था कि 5 दिन तक मैच गया, संघर्ष पूरा हुआ है, लड़े हैं दोनों खिलाड़ी। और इस लड़ाई में आप देखेंगे सबसे भयंकर स्लेजिंग होती है, क्योंकि आप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज को, तो आउट आप उसको केवल बॉल डाल के नहीं करते, आप उसको मानसिक रूप से भी आउट करेंगे ना। तो आसपास के फील्डर बार बार बोलते रहेंगे उसको, इसको खेलना नहीं आता, अरे गलती से वो खेल रहा है, अगले मैच में चांस नहीं मिलेगा। वो जो दबाव क्रिएट करने का तरीका होता है वो टेस्ट क्रिकेट में घंटों तक चलता है, और कई बार तो इतना ज्यादा चल जाता है कि प्लेयरों को रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ आपको, जॉनथन ट्रॉट बहुत अच्छे बैट्समैन थे, नंबर 3 पर खेलते थे इंग्लैंड से, एलिस्टर कुक, इयन बेल, इन ये वाली टीम जो थी उसमें जॉनथन ट्रॉट होते थे। जॉनथन ट्रॉट मेंटली वो हो गए थे, अनस्टेबल हो गए थे। जब वो ऑस्ट्रेलिया में टूर करने गए, उनको मिचेल जॉनसन ने 4 पारियों में लगातार आउट कर दिया था, 10 रन 12 रन बनाने देते थे बस, और बोल बोल के आउट करते थे, आसपास के खिलाड़ी बोल बोल के आउट होते थे, इतना कि जॉनथन ट्रॉट ने ब्रेक ले लिया, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं खेल सकता कुछ टाइम तक। इतना दबाव बना देते हैं। टेस्ट क्रिकेट तो बहुत मतलब रफ टफ क्रिकेट है, हर कोई क्रिकेट थोड़ी खेल सकता है टेस्ट क्रिकेट। आपको क्रिकेट देखने के लिए भी कोई एक श्रेणी के क्रिकेटर चाहिए, मतलब ऐसी आप T20 क्रिकेट तो बहुत मामूली क्रिकेट है भाई, 4 ओवर डालने में किसी का क्या जाता है, 4 ओवर कोई बहुत मतलब भयंकर बड़ी चीज तो है नहीं, कोई भी डाल सकता है, 4 ओवर ही तो डालने। लेकिन अगर आपको एक एक दिन में 15-15 ओवर डालने हो, वो आसान बात है क्या। और सौरव गांगुली तो ये भी बताते थे कि अनिल कुंबले से बॉल छीनना मतलब आपको ना धमका देंगे, वो आंखों से ऐसे नजरों में दिख जाता था उनके कि बॉल किसे ले ली मुझसे। कहते थे अनिल को आपने एक बार बॉल दे दी तो कहेगा बस अब भूल जाओ, मैं तो बॉल दे नहीं रहा। अनिल कुंबले एक एक दिन में 35 ओवर डाल देते थे, 35 ओवर। और आज के टाइम पे हम कहते हैं कि भाई वर्कलोड ज्यादा हो गया, वो 2 T20 लगातार खेल लिए। अरे 2 T20 का मतलब है 4-4 ओवर डाले बॉलर ने, क्या है 4-4 ओवर। टेस्ट क्रिकेट में देखो आप क्या बॉलिंग होती है। अब आप जेम्स एंडरसन की बात कीजिए, जेम्स एंडरसन पाकिस्तान में 2005 में भी खेलने आए थे जब वो महज 20-22 साल के थे, और अब भी खेलने आए जब वो 40 साल के। फिटनेस देख रहे हो उनकी, हर साल 10 टेस्ट मैच खेलता है वो आदमी, 150 से ज्यादा टेस्ट मैच हो चुके हैं, 550 से ज्यादा विकेट हो चुके हैं। आप अपना एक पेसर बता दो जो इस लेवल की फिटनेस लेके पैदा हुआ हो। हाँ, ईशांत शर्मा बड़ी मेहनत करते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, वो अलग बात है, उनके अलावा बता दो आप। जहीर खान को याद किया है आपने, जहीर खान क्या शानदार बॉलर थे, मतलब मैं बहुत बहुत बड़ा फैन उनका, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना इंजर्ड रहते थे भाई, बहुत इंजर्ड रहते थे। उनको अपनी पेस कितनी गिरानी पड़ी, 140-45 डालते थे जहीर खान, फिर 130-32 पे आना पड़ा, 34 पे आना पड़ा, बस इतना। क्यों? क्योंकि वो इंजर्ड रहते थे, उनका बिल्कुल भी इंजरी मैनेजमेंट ठीक नहीं था। भुवनेश्वर कुमार को देख लीजिए, इतनी अच्छी शानदार स्विंग कराते हैं वो, कब खेले हैं वो आखिरी बार टेस्ट मैच इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, फिट ही नहीं होते। बुमराह को देख लीजिए, पिछले 2 साल से तो नजर ही नहीं आए, देखा ही नहीं, मुझे लग रहा है मैंने उनको देखा नहीं है कुछ समय से। हाँ, मतलब ऐसे बीच में 1-2 मैच खेलने आते हैं, फिर कुछ ट्रेन हो गया या मसल पुल हो गया, फिर वापस बैठ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? और बाहर के खिलाड़ी इतना लंबा लंबा करियर रखते हैं बॉलर्स का भी, वो कैसे हो पा रहे हैं? और फिर वो कहते हैं कि जी T20 ज्यादा खेले। T20 कोई मैच है? मैं खेल लेता हूँ एक दिन में 2 T20, मेरी तो क्या पुअर फिटनेस है भाई, मैं दिन में 4 किलोमीटर से ज्यादा भाग नहीं सकता, मैं दिन में T20 2 खेल रहा हूँ, हमारे खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है। आप इसको देखिए, मिचेल स्टार्क को, जॉश हेजलवुड को, पैट कमिंस को, ये नजर आते हैं आपको इंजर्ड? ये तो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देखते हुए, सारे फॉर्मेट खेलने को तैयार है। हमारे वाले फॉर्मेट ये बॉलर बन गए। दीपक चहर को देख लो आप, दीपक चहर 4 ओवर का बॉलर है, 4 ओवर ढंग से फेंके नहीं जा रहे, क्या चल रहा है ये? और जो हमारे फिट लोग हैं उनको हम खिला नहीं रहे। मोहम्मद सिराज बड़े फिट आदमी है, उनको हर मैच खिलाओ, उनको हर बार फिट तो है ना आपके लिए, खड़े तो हैं, और बहुत अच्छी बॉल डालता है वो आजकल, कोई आम मामूली बॉलर नहीं है अगर आप समझे तो। उनकी जो पेस है, जो बाउंसर डाल सकते हैं, और जो उनके पास स्विंग है, सीम मूवमेंट है, टप्पा खिला के बॉल अंदर लेके, उनसे ज्यादा तेजी से कोई नहीं आ सकता इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में। समझ आ रहा है आपको? खिलाना चाहिए उनको, अब उनको खिलाते नहीं है। आप और किनको नहीं खिला रहे हैं? जयदेव उनटकट को खिलाया, कितना अच्छा लगा। जयदेव उनटकट ने बेचारे ने 12 साल मेहनत करी, संन्यास पे चले गए थे, मतलब मुझे लग रहा है संन्यास उन्होंने जिंदगी से ले लिया था क्रिकेट खेलने के लिए, कि भाई अब सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। 19-20 वर्ष के थे जब पहला टेस्ट मैच खिला दिया गया, उसके बाद मेजोरिटी थी नहीं उनको, फिर 12 साल बाद अब मौका मिला।
अब जिस टेस्ट टीम में वो सबसे पहली बार खेले थे, उस टेस्ट टीम का एक भी लड़का यहाँ पे नहीं खेल रहा था। सबसे बड़े एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेटर है वो। एक्सपीरियंस कैसे? रणजी ट्रॉफी खेलते हैं हर साल विकेट लेते हैं 20-20, 25-25, 250 से ज्यादा विकेट है डोमेस्टिक क्रिकेट में जयदेव उनडकट की। तो आप सोच के देखिए, प्लेयर बनता है ज्यादा खेलने से। वसीम अकरम ने एक बात कही थी कि जिम में आप जितना मर्जी मतलब कसरत कर लो, जो मर्जी कर लो, जो आपके बॉलिंग मसल्स होते हैं ना वो अलग होते हैं। शोल्डर मसल, जो बॉलिंग मसल है वो अलग है, जो साइड में बॉलिंग मसल है वो अलग है। बॉलिंग करके ही बॉलिंग तेज होती है, जिमिंग करके बॉलिंग तेज नहीं होती। और उन्होंने तो यही बताया था। बाकी भाई अगर किसी को हमसे ज्यादा पता हो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब विश्व स्तरीय आदमी है ना व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। बाकी आप लोग कैसे हैं? मुझसे प्लीज बातचीत करिए, गुफ्तगू करिए, और आप गुफ्तगू कर सकते हैं मुझसे सीधा यहाँ पे लाइव चैट में आके। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा हमें रोजाना देख के, हमसे रोजाना बात करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट पर बातचीत होनी चाहिए और एक अच्छे दर्जे की बातचीत होनी चाहिए। और अच्छे दर्जे की बातचीत हम जरूर करेंगे और हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। और बहुत जरूरी है कि क्रिकेट पर बहस हो। आपकी पसंद और मेरी पसंद में अगर अंतर है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विचार तो ऐसे ही होते हैं ना, बिखरे बिखरे से। किसी का कुछ विचार है, किसी का कुछ विचार है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज और, हम लोग क्रिकेट के शॉर्ट्स भी बनाते हैं, और अगर आपको देखना है तो वो बहुत मजेदार शॉर्ट्स होते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है, हंसी मजाक होती है। तो आप हमारे प्रोफाइल स्कोर कार्ड पर भी जाकर वहां पर देख सकते हैं कि हमारे कैसे शॉर्ट्स हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर उनको लाइक और व्यू करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी कमेंट्री पसंद आई हो, एंड इफ यू वांट मी टू डू कमेंट्री इन इंग्लिश, आई एम रेडी टू डू दैट, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू मी, एंड आई वुड लव टू हैव यू इन ऑल द मैचेस दैट आई कवर। और अब मुझे आपसे इजाजत लेने का वक्त समय आ गया है, क्योंकि अब मैं करूंगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बातचीत। पाकिस्तान और इंग्लैंड की मैच की बातचीत करनी बहुत जरूरी है भाई, इंग्लैंड का थोड़ी, न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड ने तो भाई बहुत ही मतलब बहुत बुरी मार लगा दी पाकिस्तान को। इतनी बुरी मार लगा दी है कि उनके सिलेक्टरों को बाहर कर दिया, उनके पीसीबी चेयरमैन को बाहर कर दिया। शाहिद खान अफरीदी, शायद पठान अफरीदी आ गए हैं अब सिलेक्टर बन के आ गए पाकिस्तान के। अब शायद अफरीदी सिलेक्टर है तो मजा अलग ही है। मैं तो कह रहा हूँ शोएब अख्तर भी कुछ ना कुछ बना ही दो भाई, उसको छुटकारा दिलाओ यार यूट्यूब से। 2-3 साल बर्बाद कर दिए उसने अपनी जिंदगी के यूट्यूब कर करके। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं कह रहा हूँ कि पर खर्चे उतार देना चाहिए, मतलब दलेरी से वोट डालनी चाहिए और बताना चाहिए दुनिया को किस तरह मेरे अगर घुटने ठीक होते तो मैं चांद को उतार लाता धरती पे। दोस्तों मैं पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत शोएब अख्तर पूरे टाइम ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ रोल दे दो यार, वरना वो आदमी यूट्यूब से मतलब मुझे लगता है बीमार हो जाएगा। और इस समय कप्तान बाबर आजम ने 160-62 रन कर दिए। देखो प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन T20 से लोग उसको जज करने लगे थे। T20 में उनका बन नहीं पा रहा उतना, क्योंकि यार वही है, वो इनिंग्स बिल्ड करने की जो बकवास है वो उनके दिमाग में भी बैठी हुई है। एक और बहुत बड़ी बीमारी है ना क्रिकेट में आजकल कि इनिंग्स बिल्ड करो भाई, इनिंग्स बिल्ड करो। T20 क्रिकेट में क्यों इनिंग्स बिल्ड करनी है, क्यों फ्रीली नहीं खेलना? अब इंडिया तो बहुत पुरानी बीमारी है इनिंग्स बिल्ड करने की, बुरा मत मानना, लेकिन ये बीमारी मतलब केएल राहुल को तो बहुत ज्यादा है भाई। अगर फर्स्ट इनिंग्स में केएल राहुल की बैटिंग आ गई और वो ओपन करने आ गए, बस मेरा भूल जाइए कि वो शॉट नहीं लगाएंगे, वो नहीं मारेंगे शॉट। वो कहेंगे भाई मैं तो 20 ओवर खेल के जाऊंगा। अब 20 ओवर क्यों खेल के जाओगे भाई? अगर आपको पूरे टाइम टिकना ही है, पावर प्ले में भी बस आराम से खेलना है, तो रन कौन मारेगा, रिस्क कौन लेगा? तो ये थोड़ा खराब है मेरे ख्याल से। तो ये इम्प्रूव हो सकता है, बेहतरी हो सकती है इस सोच में। और वो कब होगी? वो तब होगी जब आप थोड़ा सा दबाव एज एन ऑडियंस भी डालोगे। आपको भी समझ आएगा ना कि भाई हम भी देखने वाली ऑडियंस है, पागल ऑडियंस नहीं है चौके छक्के पे ऐसे चिल्ला देने वाली। तो ये आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा एज एन ऑडियंस कि भाई आप भी सोचने समझने वाली ऑडियंस है। और आप सोचने समझने वाली ऑडियंस है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम नेक्स्ट बिग थिंग है क्रिकेट में। आप लोगों के साथ हम बहुत बड़े बनेंगे, और आप लोगों का साथ रहा तो साथ में जरूर आगे जाएंगे। और मेरी आपसे बस यही दरखास्त है कि अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे और हौसला अफजाई होगी। और हौसला अफजाई होती है तो बेहतर लगता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। और मैच शुरू होने वाला है। देखो फील्डर वापस आ गए, कगीसो रबाड़ा सब आ गए हैं, देखो खड़े हो गए हैं, हडल बना लिया है। हडल तो बनाना ही है क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है अब इनको। अब साथ में बैठ के पंचायत करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए? विकेटें लेनी है, विकेट ले नहीं पा रहे हो क्योंकि पिच में कुछ है ही नहीं, विकेटें मिलेंगी कैसे? मिल ही नहीं सकती। तो विकेटें मिल नहीं सकती, रन मारे जा रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है भाई। बैटर हो तमाशा देखो, कीर्तन चलेगा। रन मारे जा रहे हैं। 450 तो बनाएगी ऑस्ट्रेलिया। हमने तो 400 लिख दिया था, हमें 450 लिखना चाहिए था। हमने पोल कराया ना, आप पोल में अगर आपने देखा हो तो हमने पहले ही लिखा हुआ है
कि क्या ऑस्ट्रेलिया 400 रन बना देगी, तब लिख दिया था मैंने जब 110-12 रन थे कि 400 तो बनने ही वाले। अब तो देखो क्या हाल हो गया है, 450 से कम पे रुकेगी नहीं ऑस्ट्रेलिया, और रोक भी मत देना, सुनना नहीं चाहेगी ऑस्ट्रेलिया। खैर कैसे हैं आप, और आप लोग प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आप जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम देख पा रहे हैं द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इज वॉकिंग ऑन टू द ग्राउंड एंड दिस इज द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, द माइटी एमसीजी। इतना बड़ा ग्राउंड, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड, क्योंकि पहला सबसे बड़ा ग्राउंड तो अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बना दिया था भाई 2 साल पहले, बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, बहुत पैसा लगा दिया था उस पर, और इतना बड़ा स्टेडियम है कि अभी तक तो भरा नहीं है वो, क्योंकि उसमें मैच ही नहीं हो रहे हैं ना, मैच होंगे तो भर जाएगा। पहले एमसीजी होता था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और एक बड़ा मजेदार स्टैट आया था कि अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप की बड़ी चैंचे पे हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, बड़ी अच्छा स्पोर्ट है, मुझे भी बड़ा पसंद है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जो ग्राउंड में दर्शक थे वो थे 88,000, और जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो दर्शक थे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वो थे 91,000। फर्क समझ रहे हैं आप, कितना बड़ा मैच होता है वो, इतना बड़ा मैच होता है। आप सोचो ना, मतलब पूरे विश्व में कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से 400-500 करोड़ लोग होंगे। 500 करोड़ में से 180 करोड़ तो इन्हीं 2 देशों में है, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब 600 करोड़ लोग होंगे पूरे विश्व में, उसमें से 180 करोड़ तो 2 देश में ही है। अब ये 2 देश अगर आपस में खेलेंगे तो दुनिया तो देखेगी ना, तो ऐसा ही होता है। भारत पाकिस्तान खेलते हैं, दुनिया बैठ के देखती है। तो आप भी देखिए, अभी तो क्या ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। मैं तो ये भी चाहता हूँ भारत पाकिस्तान के मैच होते रहे, मजा तो है। जनता को थोड़ा तो मतलब चाहिए ना, वो जाम है जनता के लिए, और वो जाम चलता रहना चाहिए। और अच्छी गेंद आई, इसको फ्लिक कर दिया मिड विकेट के दरमियान, 1 रन जरूर लेने में कामयाब होंगे यहाँ पे बल्लेबाज। और अभी मैच शुरू होने वाला है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का भी दूसरा दिन का खेल शुरू होगा। पहले दिन के खेल में एजाज अहमद ने तो पहले ही ओवर में विकेट चटका दिया था अपना, लेकिन उसके बाद क्या पार्टनरशिप हुई वहां पर हमने देखी, जब 4 विकेट आउट हो गई थी 65-70 रन पे। तो फिर आए सरफराज अहमद, जिनको वापसी करवाई गई, शाहिद अफरीदी ने उनको वापसी कराई है भाई। शाहिद अफरीदी सेलेक्टर बन गए पाकिस्तान के, उन्होंने वापसी करवा दी है कि भाई रिजवान को बिठाओ, इसको खिलाओ। कितना बड़ा डिसीजन है। रिजवान तो जैसे सबके आंखों का तारा बन गए थे, और उनको निकालना कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि रिजवान भी ठीक प्लेयर है, सरफराज भी अच्छे प्लेयर है। सरफराज से वाइट बॉल क्रिकेट उतना अच्छा नहीं खेला जाता, वो अलग मसला है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के तो अच्छे ही प्लेयर है। और वहां पे खिलाया गया उनको, अच्छी उन्होंने बैटिंग करी, 86 रन बनाए कप्तान के साथ मिलके, पहले वही कप्तान हुआ करते थे। और लेट्स कंटिन्यू दिस स्ट्रीम ओनली। Okay, then we'll continue with the stream. I don't have a problem, man. So, don't you want to change to the other stream? I think that would be better also, because this would only go for another hour or so. I mean, anything that you feel right will be okay. David Warner is playing on 136 रन पर खेल रहे हैं डेविड वार्नर, और उनके साथ खेल रहे हैं स्मिथ। उनकी भी 50 हो गई, अब तो 61 पर आ गए हैं, 161 पर आ गए हैं वो, और 136 पर खेल रहे हैं यहाँ पर वार्नर ने मारा शॉट लगातार। क्या आउट हो गए? नहीं यार, वार्नर अभी भी खेले जा रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहे। साउथ अफ्रीका को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पिच बड़ी फ्लैट है, और पिच फ्लैट होने के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या और क्या हो सकता है। पिच फ्लैट हो गई है, और एक और बार सिंगल लेने की कोशिश नहीं लिया गया है। यहाँ पे सिंगल बहुत बुरी मार लगाई जा रही है साउथ अफ्रीका को, कोई भी यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा उनको विकेट का, और मुझे बहुत निराशा है साउथ अफ्रीका की। देखो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है, लेकिन इस बॉलिंग अटैक ने भी इस बल्लेबाजी खेला कुछ खास करके नहीं दिखाया। स्टीव स्मिथ आउट होके नहीं दे रहे हैं, डेविड वार्नर चांस ही नहीं दे रहे हैं, और मार्को येंसन, रबाडा कबाडा, उलुंगी इंगीडी पेंगीडी, नौकी वॉकी, सब का मतलब यहाँ पे बिल्कुल पर्चा फाड़ दिया है। और 234 पर 2 हो गई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहे हैं डेविड वार्नर। और आप लोग अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी कितने 679 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। डू यू थिंक वी जस्ट डिजर्व 679? प्लीज पुश दैट, बैंग दैट, आई मीन किल दैट सब्सक्रिप्शन बटन, दबाओ उसको एंड यू विल प्रॉब्ली एंजॉय। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप प्लीज, आप में से जो भी लोग देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। और इस समय स्कोर हो गया है 234 पर 2, 234 पर 2। आप लोगों से बात करना, गुफ्तगू करना, रायशुमारी करना, बहस करना बहुत पसंद है। विचारों का आदान प्रदान चलता रहना चाहिए, और जब तक क्रिकेट के ऊपर बहस नहीं होगी तो क्या हम सियासत के ऊपर करेंगे? सियासत के ऊपर बहस तो दुनिया कर रही है, संसद कर रहा है, सड़कें कर रही हैं, मोहल्ले कर रही हैं। क्रिकेट की बहस होती है इंटरनेट पे और मैदानों में, तो हम हैं इंटरनेट पे। मैदान में आना तो कभी याद है ना, देखो मैं बहुत तेज बॉल डालता हूँ,
मैं बॉलर बड़ा अच्छा हूँ। तो आप लोगों से मेरी अगर मुलाकात हुई मैदान में तो मज़ा और आएगा। खैर अभी आ गए हैं लुंगी अंगीडी बॉल डालने। लुंगी अंगीडी खड़े हो गए हैं वही सामने, और उनके सामने है स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। लुंगी अंगीडी को कोई विकेट नहीं मिला है अभी तक। गेंदबाजी उन्होंने अच्छी करी है, ज़्यादा तेज़ी से रन नहीं खाए, औसत बहुत कम है इनका, तो ठीक बॉलिंग डाल रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ही ख़राब बॉल है। आउट हो गए क्या? नहीं, बच गए। फुल टॉस बॉल थी, फुल टॉस बॉल डाल दी है भाई। तंग आ गए हैं बॉलर ना, थक चुके हैं। लुंगी अंगीडी भी हंस रहे हैं, कहते क्या करूँ, कितनी मार लगा दी, अब कहाँ जाऊँ, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ही बताइए। पूरी गेंद थी, इसमें तो बहुत लाजवाब तेज शॉट लगा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाया, मुझे तो समझ नहीं आया। पहली गेंद हो चुकी है दोस्तों, स्कोर हो गया 234 और वार्नर खेल रहे हैं 137 पर। इतने रन मार दिए वार्नर ने, 137 मारे हैं जी 234 में से, और ये मार दिया लेग साइड में शॉट, 1 रन मिलेगा। वहां पे खड़े हैं कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने 1 रन निकाल दिया, और 1 रन निकालते ही यहाँ पे बढ़ रहा है स्कोर धीरे धीरे। आप लोग कैसे हैं आप जरूर बताइए। क्रिकेट का विचार विमर्श चलता रहना चाहिए, क्रिकेट में गुफ्तगू चलती रहनी चाहिए, रायशुमारी चलती रहनी चाहिए, और बहसबाजी चलती रहनी चाहिए। और आप भी हमको बताइए आपको क्या लग रहा है इस समय मैच के बारे में, और अगर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका इज़हार मोहब्बत सब्सक्राइब के द्वारा हो जाएगा, और आपकी जानिब से ज़रूर ये मोहब्बतें आनी चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला बॉल आने वाला है लुंगी अंगीडी का स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को उन्होंने बॉल डाली और स्टीव स्मिथ ने पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए। 4 रन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। 4 रन के लिए पुल कर दिया है, और स्टीव स्मिथ ने भी यहाँ पर 65, 66, 67 रन बना लिए हैं, और ये भी 100 की तरफ भाग रहे हैं। मैं तो कह ही रहा था आखिरी सेशन में 120 रन बनेंगे, और यहाँ से 120 रन बन जाएंगे तो 370, 350, 55 रन बन जाएंगे, 180 लीड हो जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा लीड होगी, कैसे बचेंगे भाई? खत्म हो गया, कहानी खत्म है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की हो गया, खत्म हो गया खेल तमाशा, कुछ नहीं बचा। स्टीव स्मिथ रुक ही नहीं रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 160-65 रन की लीड दे देंगे दिन के अंत तक। दोस्तों आप जरूर अपना परिचय हमको देते रहिए, आप बताते रहिए किस किस इलाके से हैं। मैं दिल्ली गुड़गांव से हूँ, अगर आपने सुना हो। भारत की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गुड़गांव है, साइड में लगा हुआ, वहां से मैं आता हूँ। एंड आई डू क्रिकेट कमेंट्री इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड ओ व्हाट अ बॉल! अभी अभी हमने इतनी तारीफ की थी स्टीव स्मिथ की, लेकिन यहाँ पे लुंगी अंगीडी ने उनके ग्लव पे बॉल मार दी, और स्टीव स्मिथ कह रहे हैं कि देखा कितना अजीब सा बाउंस आया, और बिल्कुल ऐसे हाथ पे बॉल लग गई है, बहुत तेजी से लग गई है उनके हाथ पे बॉल। और यहाँ पर ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बॉल थी, तारीफ करनी होगी। और आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतना बोल दिया मैंने, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कर दोगे तो। 679 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे यार। 679 सब्सक्राइबर्स से तो ज्यादा डिजर्व करते हैं हम, और आपको पता ही है। I mean, आप लोगों ने भी बहुत कमेंट्री सुनी होगी, लेकिन शायद I am one of the better commentators that you've heard। और अगर मेरी कमेंट्री अच्छी नहीं है तो मुझे सुझाव दीजिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छी गेंद, इसको कट कर दिया है, ओहो बदला ले लिया ग्लव पे बॉल मारने का, 4 रन फिर से मिल गए हैं। अब तो मजाक बना दिया है, यूं ही मारे जा रहे हैं भाई, सोच ही नहीं रहे कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। यहाँ पे लगातार शॉट लगाए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्टीव स्मिथ, और स्टीव स्मिथ के साथ अच्छी बल्लेबाजी हो रही है डेविड वार्नर की भी। स्टीव स्मिथ 70 पर पहुंच गए हैं मेरे ख्याल। कितने रन मारोगे स्टीव स्मिथ, कुछ तो बख्श दो। इतने खराब लोग भी नहीं है, अफ्रीकाई खिलाड़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। स्टीव स्मिथ भी बिल्कुल ही मतलब निर्दयी हो गए हैं, निर्बल। साउथ अफ्रीका को निर्मम तरीके से मार रहे हैं, बहुत ही भयंकर मौत है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम की। क्यों आउट हो गए इतनी जल्दी? पिछले मैच में भी 2 दिन में खत्म कर दिया मैच, 200 रन बन नहीं रहे हैं। कैसी टेस्ट टीम है ये? मैं इस टेस्ट टीम के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बहुत बेहतर होनी चाहिए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम। कीगन पैटरसन का है, मार्करम का है, वैंडरसन का है, इतने बड़े बड़े प्लेयर तो आप खिला नहीं रहे, अच्छे बैट्समैनों को आप खिला नहीं रहे। आप कैसे हैं दोस्तों, आप ही बताएं आप कहाँ से हैं, आप इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं। इतने में मैं आपको बता दूं स्टीवन स्मिथ के हो गए 69 रन, और वार्नर के हो गए 168 रन। ओह 138 138 और 243 इज द स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग बाय एटलीस्ट 58-9 रन्स। 58-9 रन से ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है, और इस सेशन की खत्म होते होते मतलब 30 ओवर में 120-30 रन और बन जाएंगे। 180 की लीड में खत्म कर देगी ऑस्ट्रेलिया ये दिन। कितनी ज्यादा लीड हो जाएगी दोस्तों,
और अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बार बार हमसे मिल सकते हैं, बहुत मजा आएगा. आई लव टू डू क्रिकेट कमेंट्री इन इंग्लिश एंड आई लव टू डू क्रिकेट कमेंट्री इन हिंदी. एंड इफ यू कैन सपोर्ट मी, इफ यू कैन शो योर लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स अस, माई सेल्फ तनय यादव एंड अंशुल यादव, देन आई थिंक यू विल रियली लाइक अस. और एक और रन यहाँ पे ले लिया गया, गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे केशव महाराज. केशव महाराज भी अच्छी गेंदबाजी तो करते ही हैं और शायद वही बॉल डाल रहे हैं, स्पिनर एक ही है इस टीम में. परेशान हो गए सारे खिलाड़ी. काइल वरेन खड़े हुए हैं कीपर की भेस में, कीपर की भेस में वरेन खड़े हुए हैं. वरेन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 जरूर कर दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका. और ये अच्छी गेंद है, इसको भी मार दिया है कवर के दरमियान, एक भी रन नहीं मिलेगा. स्पिनर्स के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ खास चीज मौजूद है ही नहीं. थोड़ी बहुत स्पिन है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ हो. टर्न तो है ही नहीं. बिना टर्न के कैसे चलेगा यहाँ पे काम. और स्टीव स्मिथ खेलते हुए इस समय केशव महाराज को, और ये अच्छी गेंद को डिफेंड कर दिया उन्होंने. कब तक डिफेंड करोगे स्मिथ, अब तुम मारते रहो यार. 70 पर पहुंच गए हो तुम, 70 रन हो गए हैं तुम्हारे. शुड बी स्कोरिंग मोर रन्स. और स्टीव स्मिथ आए और स्टीव स्मिथ आगे बढ़ने चाहिए इस बॉल पे, आगे नहीं बढ़े, फिर से डिफेंस कर दिया. और बहुत तेजी से गेंद डाल रहे हैं और बहुत स्टंप्स की तरफ गेंद डाल रहे हैं यहाँ पर जो गेंदबाज है हमारे केशव महाराज. आप सब लोगों का स्वागत है. आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड. मैं हूं तनय यादव और मेरे साथ होते हैं खास तौर पर अंशुल यादव, लेकिन आज वो यहाँ पे है नहीं. तो इस बात का हमको दुख जरूर है, लेकिन हम गमज़दा लोग नहीं हैं, हम गम नहीं मनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त जहाँ भी हैं खुश रहें और जिसके साथ भी हैं आबाद रहें. तो इस समय अच्छी गेंद थी ये, तो भाई बल्लेबाज ने आगे आके अपने बल्ले से ही कुछ करके एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, लेकिन कुछ हो नहीं पाया. मैं खुश जरूर था उनके अटेम्प्ट से, उनके शॉट से, लेकिन यहाँ पे कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है. आप लोग अगर हमें पसंद कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपको मज़ा ही आएगा. मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे. और इस मैच का तो सूरत हाल कुछ ऐसा ही है. अफ्रीका आउट हो गई थी 190 के आसपास, फिर 244 बना दिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने. ऑस्ट्रेलिया तो 450 बनाने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता. अब हम आपसे मिलेंगे अगली स्ट्रीम में. हमारी अगली स्ट्रीम होने वाली है अगले 10 मिनट में. अगले 10 मिनट में अगली स्ट्रीम होने वाली है पाकिस्तान और इंग्लैंड की. पाकिस्तान और इंग्लैंड की स्ट्रीम में और भी मजा आएगा. आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मिलकर. काफी लोगों से हमारी पहली बार बात हुई और आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी किया. बस जाते जाते जो भी लोग सब्सक्राइब करना चाहें जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई वुड लव टू सी यू अगेन. और मैं आपसे लगातार बातें करता रहूंगा और मुझे मजा भी बहुत ज्यादा आया, इस बात में कोई दो राहें नहीं है. बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा. और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, लगातार बने रहें और हमें लगातार ऐसे ही मोहब्बतों से नवाजते रहें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. और ये शानदार शॉट लगा दिया है 4 रन के लिए, क्या बात है. और बहुत खूबसूरत डाइव भी लगाई, लेकिन कुछ खास यहाँ पर डाइव से हो नहीं पाया दोस्तों. डाइव से अगर कुछ होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे लग गया है शानदार चौका और पहुंच गया है स्कोर 248 के पार और 142 पर पहुंच गए हैं. डेविड वार्नर कट लगाया था, ये छोटी गेंद थी वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, उस पर लगातार तेज मारते हुए और ये पहुंच गया है चौका. और सब लोग हम लोगों से मिल रहे हैं, इस बात की हमें बेहद खुशी है. बाय बाय.